2. That's the match, important match for Multan region to come up in the points table if they win 78. Earlier in the day, it was Ali Yunus down there having a word with Hasibullah. Earlier in the day, it was Ali Yunus down there having a word with Hasibullah. कोच से भी मेरी बात हुई थी, वो भी यही कह रहा था कि एज ए ओपनर आपकी रिकॉर्ड अच्छा है, तो यही कि टीम प्लान है जो भी वो बताते, तो वैसे तो मुझे ओपनिंग सूट करती है, लेकिन जिस तरह प्लान हो तो मैं उसी हिसाब से जाऊंगा। हसीब, आपने देखा कि आप बहुत नेचुरल फ्री फ्लुएंट प्लेयर आप मिले। चलिए, बुरा वक्त आपका टल गया और अब इंशाल्लाह हम दुआ गो कि आप रन्स पे रन्स करते जाएं। मिले। चलिए, बुरा वक्त आपका टल गया और अब इंशाल्लाह हम दुआ गो कि आप रन्स पे रन्स करते जाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू हसीब। Have a quick look at the bowling card from yesterday. Lahore Blues, but a bit wayward, couldn't use that new ball to perfection. Later on, after quite a few drops, they managed to get 3 wickets. And time for us to head down and join Marina. She's got the pitch and the closer look to it. Another gorgeous morning here in Lahore. The temperatures are going down, but right now sun is up and shining. Well, no surprises. We saw Run Fest on day 1 with Hasibullah and Zainabah scoring their centuries respectively. Chances were created, 2 genuine edges from this pavilion end, but were put down by Lahore Blues. Well, no apparent wear and tear, and I don't expect much because of the amount of the grass this surface has. But the ball might skid on with flatter trajectory. Still got a good bounce on it. Lahore Blues, they have semi-new ball to work with, but they need to remember to be consistent. And remember, as the ball gets older, they need to get closer to the stumps. And batters, you guys, Worry out there, and we've seen how the things have gone by in the Quaid-e-Azam trophy. These are the points at the moment, as of now, after 5 rounds, and Lahore Blues, as I mentioned, are right on top. Saman but alongside me, Multan. We'll discuss it in detail how they approached the last session yesterday, but Multan has an opportunity to come up with another round to go after this. Thank you, Sikandar. Yes, they are on 51 at the moment, and I believe they get 16 points for winning the game, plus their batting and bowling points, which makes it very much possible to get to the top, but they will have to see what other teams do, how many they get. And it will be important that Multan make full use of these 2 games. And at the moment, they are at a place where no match has been decided as yet. On your screen, Sharoon Siraj, who's been very impressive with the 66 not out of just 71. Now, he's played a different ball game, 92 strike rate, and has quite a few boundaries, 12 of them. He started to press on that pedal. First ball of day 2. And I was just mentioning about it, that the way they progress, the average first inning score over here is 299 if you talk about 80 overs. I'm talking about this season, because 2 of the games couldn't complete. I'm talking about day 1 again. 345 is quite ahead. And the approach of Sharoon Siraj, or is it the approach of Multan region, the way they accelerated in that last session, does it give you a hint that they're looking to get something out of this match? They must, and they have to, if they want to qualify. If they want to get to the top of the table, they need to do much more. And it's 88 overs bowled so far. So 8 overs have been bowled with the second new ball. Lahore Blues also have the option. They are at the top at the moment. And this one has been steered down to third man. Will be 2 runs as the fielder cuts it off. We can see the urgency in the running. Both the batters were looking for a third, which wasn't there, and they settled for 2. Multan get to 345. They have scored 40+ runs in the 8 overs that have been bowled with the second new ball. 47 runs to be exact. And this means that the urgency has been there. And why not? Because if there's any chance for them to qualify, they need to make full use of this game, win it, and win it with maximum points. And that's above 5 runs and over. The 47 of 8 that you mentioned clearly shows the intent that they want to head somewhere, and
and be in some position. Have a look at the pitch. It's the start of day 2. It won't create any demons for the batters, but a quick look at it would be nice. And just get Salman to tell us a little more about the characteristics and what you see here on the screen. Well, not much has changed. It has a grass covering on it, but that mostly keeps it compact, doesn't let it break, and so less variations because of this grass covering. But we haven't seen an express bowler operate in this inning so far because they don't have any. Otherwise, the express bowlers who have come here, Sirajuddin from Multan, Ahmed Danial, and people like them who bowl close to 140, they have been dangerous. They have created chances. But also we have seen that the fielders, they haven't been up to the mark. They've let their bowlers down. On this track, where batting is so easy, the fielders need to back up their bowlers. Speaking of bowlers, the second new ball into the 9th over. We haven't seen the fast bowlers getting any wickets or creating any problems with that new ball, whether it was the first one or the second. In fact, they've gone for runs with the second one. There's one more thing. If we were to see pitch maps, bowlers, they haven't been consistent. And as a result, when the batters, they keep getting runs of loose stuff, the good stuff, they are able to leave easily. And they don't think about doing something special because they've been offered so many loose balls. The pressure hasn't been created on them. So you just cannot take wickets on a good track unless you bowl in partnerships, you build up dot balls, and then you can expect the batter to make some sort of mistakes. But not the case here in this game so far. And that's the end of the first over today. 349 for 3. This is another game that's simultaneously going on, match 22, and this is taking place at the Pindi Cricket Stadium, where Faisalabad won the toss and they put Peshawar into bat, 216. That's a bit it's a bit strange. You get one batting point there, and Faisalabad region 8 for 1 at the end of the day's play. You're talking about quick bowlers. I think the only quick in terms of what's available to Lahore Blues is Hunain Shah. That's not Hunain Shah, by the way. Hunain Shah is much younger, but Hunain Shah will operate, and that's the only face of pace in the Lahore Blues. Yes, first one struck on the pads. Just a little tentative, Basit. He looked very confident against spinners last night. And now he has to start the day with a semi-new cherry and against a bowler who is quicker. He got some movement going there off the pitch. And if he can bowl the right areas, maybe he can get the ball to do something special. 15 overs he's bowled so far, an economy of 3.13. Just the one maiden. This is the major concern. They haven't built up that pressure that maidens can. Well, the highlight of the Lahore Blues whole session yesterday, or in fact the across the three sessions, didn't seem like the captain and the bowlers are on the same page. They've lacked communication between field positions and the strategies that the bowlers have adopted, which is why the runs have easily come about. And we discussed that. We're not trying to dissect it again and again, but it's just the fact that if the captain has decided a particular strategy in terms of field positions, the bowler hasn't really come to the party, or vice versa. Inside edge. Now you see the bowler from this end had around 3 slips, the ball being just 8 overs old. Over here, Hunain has only 1 and a gully.
So it is very much the fact which relates to what kind of bowling they have done. When you say the fielding has been somewhere else and the bowler have been somewhere bowling on other different lines, and the captain and they do not look on the same page, that is why they've only been able to bowl 6 maiden overs out of 88 on the first day. And that does not create any pressure on the batters to do something extravagant. Even now we saw in this over, everything has been within the stumps, whereas all the fielders are packed on the offside. Just one fine leg and one deep square leg over here. So particularly for the bouncer, but all the balls have gone either to square leg or mid-on. So he has been bowling on middle and leg, but the field has been set to bowl outside off stump. So it just, it shows what you just said. Absolutely correct. And if you can not be that consistent, you're not going to create any chances on pitch as good as this one. This reminds me of yesterday's match where when Pakistan was bowling, it seemed like nobody was on the same page. Where runs were just, it's good to know, yes, runs will be scored. I think when you speak of India and the pitches out there, you bound to get scores around 300 and that can be chased as well. But on bad deliveries, conceding runs, that was a bit shocker. Yes, I think the difference between Pakistan and Sri Lanka bowlers were that we bowled poorly and they are not a good bowling side. So we were able to capitalize through some very good batting. Sri Lanka got a lot of poor stuff to score on. Meanwhile, there's a single in this game on the onside once again. So the bowlers and the captain, they have not agreed to be on the same page so far. As in Abbottabad, Fata region versus Lahore Whites. Lahore played quite a bit of cricket here on this ground. 6 for 21 for Ahmed Bashir. It's a huge change for Ahmed Bashir, who has played his first 5 games over here and he's hardly taken 6 wickets, and now it's 6 in 1 innings. That's what you get once you cross from Gaddafi Stadium and go to a place where bowlers are getting enough happening from the track. And the same must be being felt by Lahore Blues bowlers, who have won 2 games outside and now they've come back to Lahore and they have bowled almost a day, and now they're in the second day and just only taken 3 wickets. 6 catches by Omar Akmal as wicketkeeper. 5. But isn't that good in a way, where you get various different conditions from ground to ground? Because if you at the end of Quaid-e-Azam Trophy are to pick players and say, okay, across this whole season, I'm going to pick XYZ bowlers and batters because they have consistently performed in various conditions instead of having similar conditions, because then how will you pick a batter on basis of his 200s, but then you would say what kind of bowling attack was there, what kind of challenge was there on the pitch? Fully agreed to this. I think it has to be different conditions and the batter's adaptability has to keep progressing. And same goes for the bowlers. And that's why you feel baffled when you see why Lahore Whites played 5 games in this very same venue. And when the other teams were going around all over Pakistan, why Lahore Whites were playing 5 games here at the GSL. And now this is their first game outside GSL.
So coming back to your point, it is very, very important. When you select teams, you have to see who scored, against whom, in what conditions, under what circumstances, what kind of pressures he dealt before you pick up someone, and then you check the suitability in different conditions, who did what. Yeah, that brings a question to my mind. So we'll ask Farhan, our statistician, to tell us out of those 14 or 1600s this season, how many are here on this ground? And if I'm not wrong, would be 80-85% of them being here. Absolutely. Nearly every game has seen double hundreds over here. And I think this is the first game that we are not witnessing a double hundred, and 2 games have been washed out. So having said that, when 2 matches are not played because of rain, the amount of runs that have been scored over here have been huge. Yeah, that takes me back again to that game which was played yesterday in the World Cup. If Abdullah Shafiq didn't even score that 100, if you were the selector, looking at his confidence, the temperament, absorbing the atmosphere, even he had scored 30 odd runs, the way he was scoring, the shot selection, the way he basically went on with that innings, where he had to accelerate, where he took the pressure off Rizwan. So many things was ticked over there in that innings of Abdullah Shafiq that probably I wasn't out there, but could be a decision that Rizwan plays all the way till the end, and he will take the chances wherever possible. And those are the qualities I guess you're looking for in a batter, even at this stage, because this is where you will get that graduation and you get that ticket to join the team. We'll come back to that. 355 for 3. This is the venue aggregates, and after the 5th round of the Quaid-e-Azam Trophy 2023, Gaddafi Stadium in 1328 overs, 4750 runs, and runs per over has been 3.58. So per wicket have been 60 runs per wicket. So it's been tough time for the bowlers and the batters. Compared to other venues, it is 200%. So that's a lot. So talking about hundreds, this season so far, with 2 games being washed out, 18 hundreds have been scored at the Gaddafi Stadium, Lahore, whereas all the other venues combined have 15 hundreds. So this tells you volumes about what kind of a batting track this has been. Abbottabad has 2, Pindi has 8, and Shoaib Akhtar Stadium, Rawalpindi has 5. That's a short one and will be a wide for sure. Coming back to the point regarding the chase that we saw last night, it was like a chase should be done. It was an absolutely a perfect example of how you approach a big chase. And that is, firstly, you don't panic. Proper batting has no substitute. And we saw the example of that in last evening, where the batters, they had 1 boundary and over, then they did not take another risk, then they were singles, and they just kept going. And what happens is, when you start to develop a partnership and you cross the halfway mark, the pressure shifts to the opposition. And then you can see the bowlers panicking, then you can see the fielders panicking, doing things they were not doing in the first half. And in India, there we see a late cut this time, surely will cross the ropes. Short and wide, inconsistent bowling that we have been talking about in the previous over. And now we are seeing short and wide outside off stump, full deliveries on the leg stump. And the page, I think, is just not similar for the captain and the bowlers. There we see easy pickings for the batter. You know, we noticed, I don't know if it's about the conditions in India or something, we're talking about the World Cup, that new phase in ODIs now we see in terms of scoring. You were talking about how they went on with the chase. Now over number 11 to 41 has become not the graveyard slot, but it's one of the important ones. The game Bangladesh versus England, similar, where the acceleration actually happened. You talk about New Zealand, Netherlands, you talk about Pakistan and Sri Lanka yesterday. Apart, the Sri Lanka attacked Pakistan in the first end. The chase
had more concentration in overs number 20 to 30 and 30 to 40, where they tried to get to 7 and over. Sikandar, if you go back to Champions Trophy that Pakistan won in 2017, this is the exact region of overs where Pakistan won that tournament. They were picking up wickets from over number 11 till 40. Hassan Ali and Junaid Khan were special in Champions Trophy. The ball was reversing. We were towards the end of the season in England, where the surfaces on the side of the pitch were bare and the ball was getting scuffed up much quicker. But in India, not much reverse is happening. And there we see this time a good ball. Takes the edge, but goes through the gap. Another boundary. So at this time, we don't see many bowlers in getting that reverse swing going. And the spinners, I think, too much shorter format. That has played its part. This one just pitching and moving away. Sharoon, although he's set, but it was such a good delivery that he struggled on this one, was lucky, went through slip and gully region. And we're just having a discussion, if you've just joined us, about how the conditions have been during the World Cup in terms of batting. Apart from that pitch which played that game where spinners had a lot of say, Australia versus India. Otherwise, we've seen that even if you lose quick wickets in the first 10 overs and survive another 5 after that, conditions almost neutralize things for batting. I mean, you just can bat along unless you play a very rash shot. Partnerships are the key. And in India, I remember going there in 2004, playing a series, and then in 2007, and the aggregates were above 300. Nearly 2 decades back, the aggregates just differ by 20-odd runs. With the new rules, there was no free hit. They were just using one ball, which used to get discolored. We'll come back to that. 92 gone, 366 Multan region. So I remember playing a game where we chased 318 in Mohali. Then in Ahmedabad, we chased 317, where Inzi Bhai scored that last boundary of Sachin Tendulkar's over. And then in Kanpur, when India got out early on 214, 40 something, Shahid Afridi scored that quick 100. And in Jamshedpur, myself and Shoaib Malik, we put on a partnership, and there also we got 320 odd, and we won that game. Another brand new over starts with some runs being added to the total by Multan region. Yeah, so it won't be wrong to say that when Pakistan was leaving for this event, you don't need to worry if 300 is being scored against you, because that will be a norm. Got to believe that you can chase that, and for that, you need to clearly say it probably as a statement that this tournament will be won with batting. And of course, some quality spin, because in the middle overs, when you're trying to score, you need those guys to grab those wickets, because fast bowlers, as we're expecting Shaheen and everyone to break through and get 3-4 wickets, that might not happen every game with the conditions around. A quick single this time, and they're showing the urgency. Sikandar, coming back to the run aggregates, I think in this World Cup where batting plays such a huge part, the most important part of the bowling time is the last 10 overs, where Pakistan actually came back into this game. They took 5 wickets of 61 runs in the last 10 overs. And Haris Rauf, he bowled brilliantly. Last over, he just gave away 1 run. He took 2 wickets. And Pakistan got the momentum back in those last 10 overs. And the new norm is 340 and above. And with this set of rules where 5 fielders are in the circle till the 40th over, it's huge for the batters. They have big gaps. 2 new balls, free hits are there. The rules have made it much easier for the batters. And 2 new balls, they do not reverse. The umpire takes the ball, he puts it in his pocket. So there's 1 ball can be maximum hold for 25 overs, nothing more than that. It did take quite a bit of beating yesterday
scuffed up. We saw the ball, how it was. Of course, Dew also came and played a bit of a role. I'm liking what I'm seeing out here. Using soft hands and Multan region just tapping the ball and taking those quick singles. Keeping the fielders awake around them. There's a sense of purpose here. Just throwing his hands at it. Width was available. Good fielding there. But we're hardly seeing any dot balls around here. Yes, I mean, you have people in the circle, but still ones are being taken easily. So that means maybe they are too far back. So they're neither there to stop one, neither for four. This is something the captain needs to address. This was well fielded by Qasim Akram. Wonderful. He's a good athlete, young Qasim. Had to go on his wrong side, collected it beautifully. But he's so far back, he cannot stop the single. So anything the batter blocks is an easy single. That's exactly the point, because this is the third time in the over. They've just used soft hands, dropping the ball in front of them and going for a single. Is no one in front of the square on the onside. It's just a mid-on, which is, again, not there to save one. Yes, and I think Multan need to get to the full points, which is 400 runs inside 100 overs, and then try to get maximum till the 100 overs and then put them in. Because Multan are the team who need to win this game in order to win, in order to take maximum points and have a chance of qualifying further in the competition. This time again, flicked, not very well timed, will be another easy single. 93 gone, 373 Multan for 3. There's the match summary, and Sri Lanka were one time looking as if they would cross 380. And in those last 10 overs, Pakistan took 5 wickets and only gave away 61 runs. And there's where Pakistan started to believe that they could achieve these runs. And then Mohammad Rizwan and Abdullah Shafiq, they were special last night. Very methodical and less risk. So there is no substitute to proper batting. We're just looking at the very brief bowling analysis. 4 for 71 Hassan Ali and 2 for 60 odd. When if we're saying the 300 is a norm, then you're talking about 7 and over. Somebody's being hit, of course. That is why every team is going to get 300. So one shouldn't be surprised that why is a bowler having an economy rate of 7 in his 10 over spell. Well, then there are two different aspects. One is the quality of batting, and one is you get hit, or either you present those opportunities to the batter which make it too easy or risk-free for them to execute those strokes. For example, let's talk about Shadab's spell. I think he was so predictable, bowling outside the off stump. And if he had a problem, you know, trying to bowl a different line, then the captain could have given him the cover on G point and maybe ask him to keep bowling there. But we didn't see any of that. So if he just brings his line within the stumps and just slows down his pace a little bit, I think he can be a real handful, even in India. I guess different strokes for different folks. I mean, different captaincies. I remember Misbah, I'm talking about test matches or one day as captain. He's almost had symptomatic treatment to every single stroke that was played against his bowler. He would immediately block that scoring area, which I didn't find very impressive. Because if somebody's trying to hit you in a particular region, let him do that. Sometimes you bowl at a batter's strength because you know he's going to go for it. And that might create a chance. But yes, yesterday I say that it was more than on 5 occasions that he was being hit in that region. There's somewhere you got to plug that gap. You're talking about the singles over here. 139 of running between the wickets have been scored out of 374 by Multan region, which shows that run scoring has not been difficult at all. I'm not talking about getting wickets. It's about strike rotation. You've got to bring people closer to the bat so that the batters out there who already have a pretty
ball over time in terms of the surface available. They're not being challenged at all. Hunain is into his third over, I believe, today. And those three fielders in front of the bat have not had anything to do so far. Either it's been point and the ball has been going on both sides of the deep point fielder or on the leg side. So the fielder is there for the fuller length, but the bowler has been shorter or he has been on the leg side. This endorses what you're saying. Maybe on that occasion he was trying to get the deep square leg or deep fine leg into play. But again, even if you're looking to bowl a shorter ball, it has to be well targeted. Have a look at this. Had he got bat onto it, there's no way fine leg would have cut off. It would have gone very, very fine. It has to be somewhere on the badge, so that is on the helmet, somewhere around the visor. Yes, the accuracy would come. I think this is a long season, and after a break of 4 years, we are back to this kind of a season where there will be regional cricket, the departmental cricket, and this one, the odd ball that he bowls in the right area definitely surprises the batters. Another over gone, 94, bowled 375 for 3 Multan. Now I'm going to correct myself. I was saying if the shorter ball has to be well targeted, has to be on the badge, which is on the helmet. Once it goes above the eye line, then more or less the batter won't be in control of that pull shot. If it's in front of the visor that's sitting in front of your eye line, you can easily hit it away at will. So it's very important. If you've got pace, Hunain has pace, if he can target it well. Yes, and as a bowler, you need to realize what pace are you. If you are express, then that's fine. This one we saw, pitches in the right region, swings away. So you can't say that there's nothing in the pitch for the bowlers. It's just that they haven't been consistent enough in the right areas. They have been all over the place. And if you are all over the place and also your fielders do not accept the chances offered, then I'm sorry, you cannot complain about the pitch that much. Bowling change here, Kashif Bhatti coming in, so spin into operation. I totally agree with the fact that you said that we're talking just off air that don't even play 50 over games. The whole concept of more T20 cricket has created that urgency of getting a wicket. So when you're playing a longer format as a bowler, you keep poking in that outside the off-stump region and wait for the batter to make that mistake. But over here, even if the bowler is beating anybody outside the off-stump and not getting a wicket, he tries something else. So your over of 6 deliveries is a mixed bag. You're trying to get a wicket. The patience is not there. Sikandar, this is a game of muscle memory. So what you keep downloading into yourself, in your mind and your muscles, it's going to take over automatically. So all their practice around the year is variations in T20 format, in the shorter format. So that patience isn't there. It does not exist all around the year. And when you come to the time the season arrives, then you just want to switch to something which you haven't practiced in the whole year. And it's not easy to get that adaptability going suddenly. So this is where this length of the season is so important, because you play Quaid-e-Azam trophy now. In December, you play another first-class competition. So that means more game time in the longer format gives them consistency in what they do, which was missing in the previous years. And also, we had limited the sides to number 6. And now there are about 18 teams playing grade 1 and 2, both competitions 4-day. So now it's a chance for them to develop the right muscle memory. And this one pitched in the stumps, and the batter takes full advantage. He hits it over mid-on and just bounces away for another boundary. Basit has been swear on the spinners especially. And Kashif Bhatti, whatever he bowled yesterday in this region also went away to the boundary. And today again, this is his first over, and the batter starts from where he left yesterday. Yeah, this shot, that slog sweep just now reminds me of a similar shot Rizwan played yesterday. He just goes and tells you that the ball was not holding up in the surface, just skidding through because of dew, and you clearly playing those big shots. We'll talk more about how the transformation from T20 to the red ball format has been for the youngsters, but time for us to change in the commentary.
अच्छा पुल शॉट है ये, शानदार तरीके से प्लेस किया हुआ शॉट, ये 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग जारी है मोहम्मद बासित की जानिब से, जिन्होंने अपने 50 रन इस बेहतरीन पुल शॉट के साथ मुकम्मल किए, दूसरी निफ्ट सेंचुरी इस सीजन की। शानदार पार्टनरशिप, शानदार बैटिंग, 384 रन पर पहुंचा दिया है। अब 16 रन दूर है मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट से मुल्तान रीजन। कमेंट्री बॉक्स में कुनुमल आसिफ मेरे साथ आ गए हैं। अच्छी पार्टनरशिप, एक खुशाइन चीज़ है ये मुल्तान रीजन के लिए। कुनुमल, सुबह बखैर, शुक्रिया अली, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। दोनों ही बल्लेबाजों का एतमाद जो है बहुत अच्छा लग रहा है, आते ही अच्छे हमलावर हुए हैं बॉलर्स पर। लेंथ बॉलिंग देखने को मिली हमें ज़्यादातर, और यही शायद एक खामी रही है बॉलर्स में इस पूरे सीज़न में कदाफी स्टेडियम में, कि ज़्यादा बॉल को आगे पिच करने में नाकाम रहे हैं। यहाँ पे भी हुनैन शाह से भी हमने एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग आगे पिच करेंगे, लेकिन लेंथ थोड़ी पीछे है, जो कि इजीली निगोशिएट हो जाती है ऐसी स्लो पिच पे। जी बिल्कुल, ये जो पुल किया था, बैलेंस बहुत अच्छा, पिछले कदम पर गए और मिड विकेट के ऊपर जाकर ये बाउंड्री हासिल कर ली। ये बेहतर है, थोड़ी लाइन लेग साइडिश है, लेकिन लेंथ ये बेहतर है। ज़्यादा कंसिस्टेंटली हुनैन शाह को इस लेंथ पे बॉलिंग करनी होगी। यूजुअली हमने देखा है कि इस स्पेस के साथ बॉलर्स ने मुश्किल में डाला है बैटर्स को, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी मिसिंग है, जिसकी वजह से वो जो विकेट कॉलम आप देख रहे हैं वो खाली है। अगर आप थोड़ा आगे डालेंगे, चांस देंगे बॉल को, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अभी यंग है हुनैन शाह, जितनी इस लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे मजीद बेहतर होते चले जाएंगे, निखार आता जाएगा, समझ आती जाएगी गेम की। लेकिन क्रेडिट जो है वो इस पार्टनरशिप को जाता है, जो कि 140 रन की है। दो यंग बैटर्स शहरून सिराज और मोहम्मद बासित। याद रहे कि मोहम्मद बासित अपने डेब्यू में 150 रन की इनिंग खेल चुके हैं, और शहरून सिराज ने वाइट बॉल में अपने आप को मनवाया है, और यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 100 रन बनाएं, बड़ी इनिंग खेलें, अपनी टीम के लिए फ़ायदा करें, अपने लिए फ़ायदा करें। ये बेहतर बॉलिंग है, लेकिन सामा गुनमन मुझे लगता है कि ये रन सेविंग लेंथ है। अटैकिंग लेंथ को आपको थोड़ा चांस देना होगा, थोड़ा बैटर को भी दिखाना होगा कि आप ड्राइव मारिए। क्या आपको क्या लगता है अली, जब आपके पास विकेट्स आपको नहीं मिल रही तो कोशिश ये कीजिए कि आप बल्लेबाज को इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो रन्स भी ना बना पाए। जहाँ पर रन्स रुकेंगे, बल्लेबाज पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, फिर वो जब इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेगा, शॉट बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ पर आप फिर विकेट ले सकते हैं। बेहतर बॉलिंग है ये, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं है। और रन सेविंग का आप जिक्र कर रहे थे, जैसे फील्ड स्कैटर्ड है, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर लेग पे खाली है, फाइन लेग पे फील्डर है, डीप पॉइंट है, तो इस लेंथ पे आप थोड़े से भी स्किलफुल हैं तो आप टाइम कर सकते हैं, आप प्लेस कर सकते हैं अपने एंगल ऑफ द बैट से। तो इसलिए वो जो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक वो नहीं रुकी है। सुबह से ही आप देखें पहले सेशन में भी बहुत ज़्यादा सिंगल्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे थे वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, जिसको लेके अगर कोई गलती करे बैटर, उसकी वजह ये फील्ड पोजीशनिंग है। देखिए एक बार फिर आराम से गाइड कर दिया पॉइंट की जानिब, क्योंकि फील्डर थर्ड डीप है, तो 7 रन एक बाउंड्री के साथ आसानी से हासिल किए इस ओवर बेस पार्टनरशिप ने, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। 387 पर 3। एक और बहुत टैलेंटेड ऑलराउंड क्रिकेटर इमरान रंधावा आमिर यामीन की जगह टीम में शामिल हुए। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर इनको कंसिडर करूंगा मैं, क्योंकि इनका जो मेन पॉइंट है वो बॉलिंग है। पेशावर ज़ालमी से भी खेलते हुए नजर आए हमें पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन मुश्किल फैसला होगा आमिर यामीन और इनमें से किसी एक को खिलाना, ठीक है। हम आमिर यामीन का भी टैलेंट और स्किल जानते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग एक मैसेज अभी रिसीव हुआ मुझे कबीर वाला से। मुल्तान के साथ ही एक इलाका है जहाँ से जैन अब्बास जो कि कप्तान है मुल्तान के, वहाँ से आए हैं। तो उन्होंने, एक हमारे भाई हैं मोहम्मद मोहसिन भाई, उन्होंने हमसे गिला किया कि आप जैन अब्बास के इंटरव्यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि हम जब जब मौका मिलता है जैन अब्बास का हम इंटरव्यू करते हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन अच्छा ये लगा, इसमें पॉइंट ये था कि कहाँ ये जो प्रोडक्शन है ये पाकिस्तान के कितने हर इलाके में जा रही है, लोगों कहाँ कहाँ। कबीर वाला में आज से पहले हमने नहीं देखा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट कबीर वाला में देखी जाएगी। तो हम उन्हें तसल्ली दिलाते हैं कि जैन अब्बास का बिल्कुल इंटरव्यू होगा, आप मैच देखते रहिए लेफ्ट साइड पे। तो गिला शायद जायज़ हो क्योंकि जैन अब्बास ने डेफिनेटली बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत रन्स किए हैं। तो हम वादा करते हैं कबीर वाला के लोगों से कि हम बहुत जल्द जैन अब्बास का इंटरव्यू करेंगे क्योंकि बैटिंग शानदार रही है, कप्तानी भी बहुत कमाल की है। इम्प्रेसिव सीजन रहा है जैन अब्बास के लिए। इस खेल की खूबसूरती ये है अली कि आप गिले भी जो है वो मुस्कुरा कर कबूल करते हैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जाहिर है उनके जो आबाई इलाका है वहाँ पर लोग खुश होंगे। और मैं आपसे, ओवर का खात्मा हुआ है, अगले ओवर में इस पर बात करेंगे। 388 पर 3। तो मैं तस्करा कर रहा था कि जो क्रिकेट है इसकी खूबसूरती ये है अली कि आप गिले शिकवे भी मुस्कुरा कर कबूल करते हैं। जिस तरह आपने इसको मुस्कुराते हुए ये बयान कर दिया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये क्रिकेट है जो आपको जोड़ती है, ये क्रिकेट है जो आपको नज़दीक लाती है। या मैं एग्जैक्टली इसको गिला नहीं कहूँगा, मैं इसको मोहब्बत ही कहूँगा कि लाहौर में रहते हुए कबीर वाला से मैसेज कर रहे हैं। और मेरा इलाका भी है, बिहाड़ी से ताल्लुक़ है मेरा, तो मेरे लिए साउथ पंजाब के लोग बहुत बहुत करीब हैं मेरे। कबीर वाला ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। बुरे वाला में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन आई होप कि हम इनका गिला दूर जल्दी करेंगे। कासिम अकरम बॉलिंग में आ गए हैं और शॉट वन से स्टार्ट किया, जिसे कट किया एक रन के लिए। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक को नहीं रोक पाए हैं लाहौर ब्लूज के बॉलर, और 60% जो रन्स हैं इस इनिंग में वो सिंगल्स में आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से सिंगल्स दिए गए हैं। ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि जो कप्तान हैं वो दिफाई हिकमत अमली पर मजबूर हैं, जिन्होंने सिंगल्स रोकने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, बाउंड्री रोकने की ज़रूर कोशिश की, उसमें बल्लेबाज आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल्स लेते रहे, और रन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शरून सिराज की बल्लेबाजी की एक अहम चीज़ ये है कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, और 83 ही इनका इससे पहले करियर का बेस्ट स्कोर है। तो इसके साथ ही ये अपने करियर के बेस्ट स्कोर पर भी पहुंच गए हैं। 2 रन्स आसानी से ले लेंगे यहाँ पर। या इस पे रुकना नहीं है, यहाँ से बड़ा स्कोर करना है, सेंचुरी स्कोर करनी है, बड़ी सेंचुरी स्कोर करनी है, जहाँ से अपने करियर को भी बूस्ट मिले, आपकी अपनी टीम को भी एक बूस्ट मिले, क्योंकि आपकी टीम को एक जीत की अशद ज़रूरत है। और शायद जब 100 रन कर लेंगे तो हमें और मज़ीद स्ट्रोक मेकिंग देखने को मिलेगी। ये जो मौके मिलते हैं इनको अपने लिए मुफीद बनाना, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल कल अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी नज़र आई। उनको फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया गया, उनको ओपनिंग का मौका दिया गया, तो उन्होंने एक लंबी इनिंग्स खेली, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। या सारी बातें सलमान और सिकंदर कर गए उस मैच की, हमारे पास कुछ बचा नहीं बात करने को। ओवर का हुआ इख्तिताम 392 पर 3। जैन अब्बास लीड कर रहे हैं, तो आई होप कबीर वाला के लोगों को इस स्टार्ट को देख के बहुत खुशी हुई होगी कि 8 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज के साथ 665 रन बनाकर टॉप पे है। 83 रन की एवरेज है,
साहिबजादा फरहान नंबर 2 पे हैं, अली ज़रियाब लाहौर वाइट्स के नंबर 3 पे हैं। लेकिन तमाम तर फोकस जो है वो ज़ैन अब्बास पे है आज के दिन का। तो मैं बताना चाहता हूँ कबीर वाला के लोगों को कि आज हम ज़ैन अब्बास की बात बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ताकि हम आपके शिकवे दूर कर सकें। आठ इनिंग्स में एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, 83 की एवरेज से अब तक इस सीज़न में उन्होंने रन्स किए हैं और 2 सेंचुरी स्कोर किए हैं। कल की जो सेंचुरी थी उससे भी उनको मज़ीद एतमाद मिला होगा। जब स्किपर परफॉर्म करता है, कप्तान परफॉर्म करता है, तो फिर पूरी टीम के हौसले बढ़ जाते हैं। यहाँ रन्स करना एक तरफ और किस तरीके से रन्स किए गए वो एक तरफ। और ज़ैन अब्बास जब रन्स करते हैं तो वो अथॉरिटी से रन्स करते हैं, डोमिनेट करते हैं, चढ़ के खेलते हैं अगली टीम के ऊपर, तो जिससे बॉलिंग साइड के हौसले बहुत पस्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। आप स्लो 100 करेंगे उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, लेकिन आप अथॉरिटी वाला 100 करेंगे उससे अगली टीम को पे बहुत डेंट पड़ता है। और ऐसे ही कुछ ज़ैन अब्बास करते हैं जब भी वो रन्स करते हैं। फ्री फ्लुएंट प्लेयर हैं, रिस्टी भी हैं, रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा है, दलेर भी हैं, तो यही इंग्रेडिएंट्स आपको एक ओपनर में चाहिए होते हैं। दूसरे रन की कोशिश होगी यहाँ पे। अच्छे फिट क्रिकेटर हैं शहरुन अब्बास, आसानी से दूसरा रन मुकम्मल कर लिया। अगर माजी के औराक पलटिए तो आपको फिर ये तमाम जो सलाहियतें हैं, एक ऐसे ओपनर का नाम लूँगा जो आज तक उनको हम याद करते हैं, सईद अनवर। स्टाइलिश बल्लेबाज और पाकिस्तान की फतुहात में अहम किरदार अदा करते थे, और वो इन तमाम नौजवानों के लिए यकीनी तौर पर मेंटोर हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा नाम ले दिया। सईद भाई की तो क्या ही बात थी। और क्यों हमें याद है, क्यों आपके जहन में सईद भाई याद हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो रन्स करते थे, डोमिनेट करते थे, और एक ऐसे एरा में जहाँ पे बैटर्स उस तरीके से खेलते नहीं थे, इतना तेज़ नहीं खेलते थे, स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता था। उस ज़माने में उस तरीके से पॉजिटिव खेलना, वो आज तक हमारे जहनों में, उनकी इनिंग्स, उनका रेस्ट वर्क आज तक हमारे जहनों में है, क्योंकि वो डोमिनेट करते थे गेम को। जी, जब आपने इस चीज़ का जिक्र किया कि एक ओपनिंग बल्लेबाज किस तरह से रन्स करता है, ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर मेरा ख़्याल है सईद भाई से बड़ा नाम इस वक्त नहीं हो सकता पाकिस्तान में। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। फिर 194 की जो इनिंग्स थी, ख़ास तौर पर मुझे इसलिए याद रहती है कि वो चेन्नई में उन्होंने किया, उस वक्त उसका नाम मद्रास था, और मेरे आबा अजदाद का ताल्लुक़ भी वहीं से है, तो मुझे हमेशा याद रहेगा। 99 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 395 पर 3 मुल्तान रीजन। हल्की सी एक्साइटमेंट है इस ओवर में, क्योंकि एक ओवर में 5 रन बनाने हैं मुल्तान रीजन को, अगर मैक्सिमम बैटिंग बोनस पॉइंट्स हासिल करने हैं। क्योंकि याद रहे कि 100 ओवर्स में अगर आप 400 रन बनाते हैं तो आपको 5 बैटिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ होगी आई एम श्योर मोहम्मद बासित के जहन में, जिसका हमने देखा है ये चीज़ कि उठा के खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, और इसके साथ ही वो जो बैटिंग बोनस पॉइंट है वो भी हासिल किया और अपनी टीम को 402 तक पहुंचा दिया इस शानदार शॉट से मोहम्मद बासित ने। 5 बैटिंग बोनस पॉइंट्स हासिल कर लिए मुल्तान रीजन इस छक्के के साथ। बहुत ही अच्छी मस्बत अप्रोच, ये स्लॉक स्वीप किया कासिम अकरम को पहली गेंद पर, ये मिड विकेट के ऊपर से, पहले से तैयार थे इस गेंद के लिए, और टाइमिंग लाजवाब, पुरएतमाद बैटिंग का मुजाहरा। डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बासित, अच्छा साइन है ये। पिछले हम 3 से 4 सालों से कोनोमल देख रहे हैं कि आप साउथ पंजाब के
डिफरेंट इलाकों से बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी हमने जिक्र किया मोहम्मद बासित का, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। एक और क्रिकेटर भी आए, वो भी लिया से, डेरा गाजी खान के आगे पीछे ही है इलाका। हसन नवाज, वो नॉर्दर्न से क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है। शहरून सिराज साहिवाल से। और जल्लाद खान अभी हमने देखा था लाहौर कलंदर्स के लिए आए थे, लिया से उनका भी ताल्लुक है, फास्ट बॉलर्स। ये तो ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से, क्योंकि आज से पहले जब हम अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, लेट 80s की बात करते हैं, तो इन इलाकों से प्लेयर्स आते थे। जैसे हम एक जो बंच तैयार हुआ था 90s का, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो छोटे इलाकों से आए थे, छोटे शहरों से आए थे। वकार भाई, इंजी भाई, मुशी भाई, इवन ये सब साउथ पंजाब से आए थे। तो अब एक बार दोबारा मुझे वही फील आई है कि जो क्रिकेट है वो उस इलाके में जा रही है। इसमें और बात करेंगे क्योंकि 100 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया। 403 रन्स, 3 विकेट गवाकर मुल्तान रीजन। जी, और यहाँ पर जब छक्का लगा तो ये 5 पॉइंट्स जो है वो मुल्तान ने अपने नाम कर लिए। 400 रन पर 5 पॉइंट्स हैं बैटिंग। पहले 200 रन से लेकर ये कार्ड अगर आप देखें, और इसके साथ साथ जो बॉलिंग पॉइंट्स हैं, 3 विकेट्स के साथ 1 पॉइंट्स, 6 विकेट्स के साथ 2 पॉइंट्स और 8 विकेट्स के साथ 3 पॉइंट्स हैं। और कुनुमल, क्या किस्मत बदली है लाहौर वाइट्स की। गद्दाफी स्टेडियम से जाते ही वारे न्यारे हो गए। 97 रन पर ढेर कर दिया फाटा को। और वो सोचते होंगे लाहौर वाइट्स के बॉलर भी कि हम पहले क्यों नहीं यहाँ पे आ गए। अहमद बशीर ने 6 विकेट हासिल की, जो फास्ट बॉलर हैं, और यहाँ पे तो वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। तो ये प्लान लेके गए हैं लाहौर वाइट्स कि उन्होंने मैच जीतना है। इस चीज़ की एक और निशानदेही भी इस बात से हो सकती है कि उमर अकमल विकेट कीपिंग कर रहे हैं। दैट शोज कि वो टीम गोल को अपने गोल से आगे रख रहे हैं, कि वो जीतना चाहते हैं, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। जब उमर अकमल ऐसा करना शुरू हो जाए तो आप समझ लिए कि पूरी टीम एक पेज पे है। तो ये अच्छा साइन है लाहौर वाइट्स के लिए। और ये उमर अकमल के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो विकेट कीपिंग करेंगे, उनका स्टेमिना बढ़ेगा, फिटनेस के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। और इस दफ़ा इसको गैप में खेलने में कामयाब हुए हैं। 2 रन आसानी से हासिल कर लेंगे। उमर अकमल यहाँ एक लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब जब उनकी टीम ने 97 पर अपने ओपोनेंट को आउट किया है तो उनके पास एक मौका है वहाँ पर लंबी इनिंग्स खेलें। बल्लेबाजों का भी इम्तिहान होगा वहाँ पर। अपनी सेंचुरी के करीब आते जा रहे हैं शहरून सिराज। 90 रन पर इस सिंगल के साथ, इनफैक्ट 2 रन मिसफील्ड के बाद बना लेंगे। तो अभी भी वही खामियां हैं, अभी भी आसानी से रन्स दिए जा रहे हैं, आसानी से रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक की जा रही है। तो कोई मुश्किलात है नहीं इस वक्त मुल्तान रीजन के बैटर्स के लिए। 408 पर 3। साउथ पंजाब के क्रिकेट के एक और बड़े नाम ज़हूर इलाही, तैमूर आजम, ये बहुत इंप्रेसिव है। मुझे इस जो डुओ है, जो कोचिंग स्टाफ है, मुझे बहुत पसंद आया है। इनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, दोनों के अंदर ही। तैमूर आजम को हम जानते हैं, बहुत प्लेयर्स इन्होंने डेवलप किए हैं, जिसके अंदर बाबर आजम को भी इन्होंने मौका दिया इस्लामाबाद जब लाहौर नहीं खिलाता तो इन्होंने पहली बार इस्लामाबाद से उनको मौका दिया। शान मसूद को भी इन्होंने इस्लामाबाद से मौका दिया। आबिद अली को भी इन्होंने अपने अंडर खिलाया। और जब यहाँ पे भी आए थे, पहला मैच मुल्तान खेले, तो हमें एक पॉजिटिविटी नज़र आई थी कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड गेम की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत रोल होता है कि आप कैसे प्लान करते हैं, कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं। ज़हूर इलाही का तो हम मालूम है कि वो वन ऑफ द ब्रिलियंट ब्रेन्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। पूरी इलाही फैमिली, सलीम इलाही, ज़हूर इलाही, मंजूर इलाही, तीनों बड़े प्लेयर साहिवाल से आए। और ये वो पहला बंच था मंजूर इलाही से, अगर हम शुरू करें, जिन्होंने साउथ पंजाब से रिप्रेजेंटेटिव आए
जिन्होंने क्रिकेट खेली बड़े लेवल पे और बाकी प्लेयर्स के लिए रास्ते खोले। एक और प्लेयर थे रिजवान सतार, वो बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सके, सेम मुल्तान एरिया से उनका ताल्लुक, अच्छे प्लेयर थे वो भी। तो बहुत बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट मौजूद है। और अब दोबारा से उस 90s के बाद अब दोबारा से मुझे ऐसा लगता है लैया से, साहिवाल से अब प्लेयर्स आ रहे हैं, इससे अच्छे तरीके से खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए शरून सिराज ने अपनी सेंचुरी के करीब होते चले जा रहे हैं 95 रन पर इस शानदार बाउंड्री के बाद। कासिम अकरम की फ्लाइट डिलीवरी और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। एक दफा फिर टाइमिंग लाजवाब, इत्मीनान बहुत जबरदस्त है शरून सिराज का। चार 413 रन। अब यहां से किस तरफ जाएगा ये मैच, मुल्तान क्या करेगा, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है रिजल्ट की। ब्लूज अगर ड्रॉ भी खेलते हैं, बैटिंग पॉइंट्स भी हासिल करते हैं तो वो खुश रहेंगे क्योंकि वो टेबल के टॉप पे हैं। मुझे लगता है कि यहां से अप्रोच चेंज होगी जब शरून सिराज अपने 100 रन मुकम्मल करेंगे कुनुमल। उसके बाद हम देखेंगे कि पुश करेंगे, बड़े रन्स की तरफ जाएंगे, 500 की तरफ जाएंगे। जी अली, यही प्लान हो सकता है कि शरून की सेंचुरी और उसके बाद एक्सेलरेट करें, तेजी से रन्स बनाएं और लंच से पहले पहले जो है वो 500 रन्स मुकम्मल करें और उसके बाद लाहौर को बैटिंग के लिए दावत दी जाए। तो प्लानिंग तो यही नज़र आती है और इसी में वो फिर 20 खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा रन है ये, लेकिन देखना होगा कि क्या इनफ टाइम देंगे अपने बॉलर्स को। मैं चाहता हूं कि 500 रन पर पहुंचेंगे, जल्दी से 500 रन दें। लंच से अगर आधा घंटा पहले भी, आधा घंटे में तो शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लंच तक भी अगर आप 500 रन तक पहुंचे हैं तो 2.5 दिन होंगे, आप 2 बार आउट करें। और मुल्तान की बॉलिंग के अंदर वो डेप्थ है, वो वेनम है कि आप आउट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने टीम्स देखी हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो वेनम है वो मुल्तान की साइड में है। उनके पास अच्छी पेस है, ऑल्दो इस मैच में सिराज नहीं खेल रहे हैं, 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, बट स्टिल हमने आखिरी मैच में देखा कि स्पिनर्स काम आए, आखिरी दिन, तीसरे चौथे दिन स्पिनर्स काम आए, तो ये चीज़ इनके हक में जाती है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2 स्पिनर्स रखे होंगे टीम में। यहाँ पर एक और ओवर का खात्मा हुआ 417 पर 3। दीवार भी कह रही है बस जान चलाओ, मैं सुट दो। सिर्फ 3 रन दूर हैं। शरून सिराज एक बेहतरीन एफर्ट, इनके करियर की पहली सेंचुरी के बहुत करीब आ गए, 1 रन और रिया, 98 रन पर पहुंच गए। तो बहुत बड़ा ओकेजन है, बहुत बड़ा मोमेंट होगा ये शरून सिराज के लिए अगर बाकी 2 रन बना लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप रेड बॉल क्रिकेट में आपकी डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। $97 पर इस वक्त मौजूद हैं शरून सिराज और यकीनी तौर पर वो अपने इस मैच को यादगार बना सकते हैं। ओवरऑल अगर इनकी इनिंग्स की बात की जाए अली, तो एक चीज़ देखने को मिली कि जहां पर थोड़ा सा ये लूज शॉट खेलने के लिए गए, इन्होंने अपना मुहासबा खुद किया और दोबारा उस शॉट को दोहराया नहीं, वो गलती दोहराई नहीं। बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि स्ट्राइक को रोटेट किया, कोशिश की कि सिंगल्स किए जाएं और फिर जहां पर थोड़ा सा फील्डर जो है वो सुस्त आए
वहाँ पर 1 रन को 2 रन में तब्दील किया जाए। तो इनका ओवरऑल इनकी अप्रोच बहुत अच्छी थी और एक इसी वजह से वो एक कंपोज इनिंग्स खेल पाए। 98 रन पर शरून सिराज, 99 रन पर शरून सिराज इस सिंगल के साथ अच्छी बैटिंग की, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई है शरून सिराज ने, फोकस नजर आए। एक मोमेंट आया था कल जहाँ पे थोड़ा घबरा गए थे, बड़ी हिट्स मारना शुरू हो गया था और ये सब इंतजार है कर रहे हैं इस सेंचुरी का। कप्तान जैन अब्बास हैं, आमिर यामीन भी हैं। इस वक्त तो कंडीशंस बहुत आसान है, आप भी 100 कर लेंगे नहीं? मौका मिले तो यकीनन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगा। 421 पर 3। ओवर तो कह दिया एंडी कितने को ओवर करवा रहे हो? स्टार्ट नंबर पे लगाओ। आ गया बट पे। इंतज़ार ये है कि बासित सिंगल लें और स्ट्राइक जो है वो शरून सिराज के पास आए, जो कि सिर्फ 1 रन की दूरी पर। लेकिन आप क्रेडिट बासित से नहीं छीन सकते, जिस तरह से उन्होंने साथ दिया। बहुत ही कमाल लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की और एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की। दोनों ही नौजवान बहुत इंप्रेसिव नजर आए हैं। बहुत गहरी नजर है कुन्नूवाल आपकी क्रिकेट पे। 70 रन पर पहुंच गए मोहम्मद बासित और अब हम उस लम्हे के करीब आते जा रहे हैं। शरून सिराज की सेंचुरी सिर्फ 1 रन दूर और ऐसे मोमेंट इंसान नहीं भूलता है, अपने करियर की पहली सेंचुरी। उस्मान सलाउद्दीन ने आके बात की है और अक्सर हम देखते हैं कि नर्वस 99s जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और ऐसे प्लेयर जो कि यंगस्टर हैं वेट करना पड़ेगा, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा शरून सिराज को। आई एम श्योर बहुत नर्व्स होंगी, पहला मौका अपनी सेंचुरी का। थोड़ा वेट और कुनुमल, थोड़ा वेट और। जी हाँ, आपके साथ साथ डग आउट में इनके तमाम साथी भी इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार अब अगले ओवर तक जाएगा। मुल्तान 422 पर 3।
First hour of play completed, and after the drinks break, we're back live. This is how the first session has gone by. Runs have come out easily. A few chances, but we say half chances. The only prolific part of this session has been the run scoring. Not only the boundaries have come easily, it's also the highlight is the singles, the strike rotation. And we have seen Lahore Blues fielding unit and the bowlers who've just been neutralized. And with 105 overs already bowled, 422 on the board, so 70 odd has been added in the first session. And 99 for Shirun Siraj. Look at the number of deliveries against that, 118. That's the good part. Basit is complemented there with the 70 of 100. They've surely increased the pace and going almost just above 5 and over. That has been the standout for Shirun. He came out with an intent and clarity. He went after the bowlers, never held himself back. 77 runs coming in just 17 overs this morning. Qasim Akram. Continue the proceedings. Interesting stat to be shared. 58% of runs have been scored without boundaries. That tells you the intent between, especially these two, have been running really well. Multan has always stood out when it comes to rotate strike. Yeah, that 58 suggests that over 200 have been scored running between the wickets out of the 422 on the board. It's a fairly good mix, and overall run rate or the run scoring has been on the healthier side. 244 to be precise, makes the 58%. Qasim Akram is an electric fielder. He just seems to be out of place in all the slow proceedings. He's trying to do as much as he can. Well, it would have been nice if it was a fair square penetration level also, and the fielders would have supported the bowlers. There would be more wickets. This could have been dangerous, by the way. He almost stepped onto the ball. Yesterday chances were created but put down by Lahore Blues. 3 chances given to Zain Abbas to be precise. But he made most of it, and so did Shirun Siraj. Just one away from his maiden century of this season. He's played well. For me, he's been the highlight. Yes, we have had 200s, but his 99 is valuable because of the number of deliveries faced. 423 for 3. One more round to go before the final after this. We just look at the progress of the teams in operation in this Quaid-e-Azam trophy.
Karachi seems to be very balanced in terms of a fair square of fair mix of seniors, and of course some youngsters. Also the bowling complementing the batting available to them. They've got an experienced lot in the bowling department. Played a lot of cricket. Mir Hamza played more than 100 first-class games. Down the wicket and plays that with ease because everything in the deep is awakened, and this time it's gone all the way, I think. And he gets to 100 with a maximum. First maximum from his bat, but he's got 14 boundaries to complement that. And Sharoon Siraj gets to it with 121 balls, his first-class 100. Magnificent innings. He came out and he took the challenge, and with a very healthy strike rate, he went on scoring these runs. He deserves all the applause he's getting right now. And he's been impeccable in timings, in his shot selection, brave enough to target spinners as well as fast bowlers. And even on this time, he just launched it. It was nowhere near the pitch, but just wanted to hit big. It's been a magnificent innings by Sharoon. He has made mark in white ball cricket, but today, with this maiden century, he's announced himself in the longer format as well. 430 for 3 after that maximum. So coming back to talking about Karachi, the experience of Mir Hamza, 100+ first-class games. Noman Ali, we know what he's capable of, a lot of experience there. Ghulam Mudassir, Tabish is, well, he's got a lot of wickets in the first-class circuit. He must be 40+ by now. Well, he's very fit in terms of his ethics and his habit. He really pushes himself hard in the gym. And that is probably one of the reasons that has helped him prolong his career as a fast bowler. Got one test match against Zimbabwe. That one opportunity gave him the star. Well, in comparison, I think that Lahore Whites also have a very balanced side, but they are slightly on a batting heavy. So we're just talking about Tabish Khan, 617 first-class wickets. We'll come back. Actually, it's the end of the over, yes. 431. It was very expensive Kashif Bhatti yesterday. It was taken to the cleaners by Sharoon and even Basit. Just again straying down the leg. He went for a lot of runs in that area. He swept a lot. So do you go with Karachi, or would it be Lahore Whites or Blues who are topping the table? Would you fancy, not talking about in terms of win, but making it to the final or deserving to the final if they make it? Well, when you look at Lahore Whites, I think they're also a very balanced side. But
heavily rely on their batting. I think the rotation of bowlers have been, if I have to be very critical, has been really poor. I think they've got some really good pace bowlers with Naveed, Ahmed Daniel, Alian Mahmood, a good off spinner. He hasn't had a chance. They need to utilize him. And again, that has been a question of what attack, especially bowling attack, they can bring in with all these options. But Lahore Whites have struggled to find an answer for that. We'll talk about it. Multan region, 435 for 3. Lahore hasn't been wise in opting his bowlers. We'll talk about Lahore Whites actually. Been swept, they've got protection there. I think Alian should have been given chance, especially here at Qazafi Stadium. He's a really good off spinner. Naveed actually bowled well here but was dropped the next match. Ahmed Daniel, he's one exception bowler. But they need to find the right combination to win matches. I think the teams must also be selecting their 11, which is, of course, an absolute no-brainer according to the conditions. So any team coming to play at the Gaddafi Stadium would know that this season 1800s have been scored here. So you would not heavily pack your batting. You'd try to get more bowlers in your side so there's less load on them, and you know that top 3 or 4 will score runs over here. Similarly, the other venues combined have scored 1300s. That's exactly my point with Lahore Whites. I mean, when you have a genuine off-spinner, why wouldn't you give him a chance here at Qazafi Stadium? He was left out. Naveed bowled well. He was left out again for the next match. Usman Qadir, we can't see him here. He was in the squad initially, but not anymore. Nudged around. Good running yet again. These two, Sharoon and Basit, have been really quick between the wickets. It's 439 for 3. One thing that I'm actually lacking to understand, we know, especially when we talk about Qazafi Stadium, express pace and a genuine spinner that have been very effective. And somehow, probably all the teams have left out those options when they pick up their playing 11 at this venue. They've struggled lately with their bowling and obviously have lacked to take wickets.
earlier we saw from Multan, Siraj. He's been exceptional with his pace bowling, and then the spinners coming in terms of Ramiz and Mehran. Both got Pfeiffer. It's all about what your picks are for a certain venue and certain oppositions. Question is, when do they feel, Multan region, that they're in the comfort zone? End of the over, 441 for 3. Some great drives. Shahrun Siraj, the moment he walked out, he's looked aggressive. Calculated risk taken. Very quick on his feet. He's always capitalized on any opportunity given to him. Easily clearing the infield, no problems with the shorter delivery. He launched his attack against the pacers and the spinners as well. Even this morning, continued with a clarity of mind. And a superb 100 to back it up. This innings actually equates his talent. When do they feel comfortable was my question. 500 plus 550. And how much time do they need to score another 100? The way they're going, they should be able to do it somewhere halfway through second session 2. You always need to leave that hanging fruit. But I guess they know the Lahore Blues have got nothing to lose. They're on top of the table. They'll take their sweet time to score whatever runs they want. How do you extract something for yourself as a team? That's the question for Multan. They can up the ante by scoring quickly, but once they come out to bowl, do they have that penetration in them to dismiss a side? All in all, to try and get some bonus points and a result if possible. We haven't seen a result yet. We'll take a titanic effort to get a result on this pitch. And it's going to be hard for Multan because Amir Yamin and Siraj both are not playing. Gone up ish, but straight to the fielder. Soft dismissal. Forced the shot actually. It was never there, and Qasim Akram has the last laugh. Yeah, got the toe end of the bat. He was trying to clear that fielder at mid-off. Eventually handed it to him. A good knock comes to an end. And it will be Basit taking that long walk, 75 of 122. Well, beg your pardon, Shahrun is gone. And he's caught in this manner. We need to sort this out. We're showing on strike Basit. I'm saying the wrong things over here. Shahrun Siraj goes out, 114 of 135. And 4 down at 442.
New over starts with Kashif Bhatti continuing after the dismissal of Sharon. And the new batter in is Imran Randhawa, who will now be on strike. We're just talking about how the progress has been for Multan, and we always try to relate this to Test match cricket because of the longest format and the red ball. In the modern day, I think even 100 runs a session is now a basic norm. You need to get 300 at the end of the day's play, irrespective of the fact how many wickets you lose. That is how the progress moves, and you try to win a match over 5 days. This morning, we've seen 100 runs have been added, or you say 99 have been added in the first 1.5 hours. Could ball that first up. So which means we have another 45 minutes to lunch. If they can get 150 runs on the board, that's probably good going. That's in fact very good going. Because we discussed this earlier that the average first inning on day one score here has been 299. This has been a bit of an exceptional performance, courtesy Sharon Siraj's fast knock, which took the side to score more than 5 runs and over in that last session yesterday. It's better bowling from Kashif. The line is better. They should try to tighten the ring around Imran Randhawa. Don't allow him easy singles. And that's exactly what he's been doing. Got off the mark. Four, 4-5 for Multan region. Qasim Akram got a wicket of the last delivery of his previous over, got rid of Sharon Siraj in this manner, got the toe end of the bat, and a catch taken at a little wide mid-off rather. He was dismissed after scoring 100. It is a sigh of relief for all the bowlers on this surface. Every wicket is as gold dust. Well bowled, Qasim. He's bowling well, Qasim, keeping it within the set of the stumps and good lengths, forcing the batter on the back foot, especially Imran Randhawa, who's new at the crease. He's bowling quick, flatter trajectory, quicker through the air. Well bowled, Avaji. Again, the point we were discussing, what will Multan do to extract a result out of it? And when you look at their bowling options, again, they've got Majid Ali, the left-arm pacer, Tahir Hussain, another left-armer, Zaid. They will heavily be relying on Zaid Mahmood. I'm not sure what help he can get out of the surface. Imran Randhawa is a medium pacer. Again, Ali Usman, slow left-arm spinner. These are the options that Multan have, and probably a proactive captain, I would say, with Zain Abbas. He's done different things. He's tried different strategies in the previous games here on the same venue to try and do something different. But how much he can trust these bowlers to bring him some result. What's the score? 446 at the end of the over.
इंपॉर्टेंट इनिंग है ये इमरान रंधावा के लिए, क्योंकि आमिर यामीन की जगह इस टीम में आए हैं ये। अच्छी ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, थिंकिंग क्रिकेटर हैं, हैंडी क्रिकेटर हैं, और यहाँ पे अगर एक कैमियो खेल जाते हैं अपनी टीम के लिए, क्विक रन्स टीम को की ज़रूरत है इस वक्त, तो काफ़ी हैंडी होगा अपने लिए भी और टीम के लिए भी। सलमान बट से मज़ीद बात करेंगे कि क्या मुल्तान यहाँ से कैसे रिजल्ट की तरफ जा सकता है, क्या डिफरेंट करे, क्या एक्स्ट्रा करे, क्योंकि रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं सलमान। शुक्रिया अली। यहाँ पे बात है इंटेंट की, और मुल्तान वो टीम है जो पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है, और अगर ये ऊपर जाना चाहते हैं और अपने आप को वो मौका देना चाहते हैं जहाँ ये शायद फाइनलिस्ट में शामिल हो जाएं, तो इनको मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए जाना है। और ऐसे में इस तरह की बैटिंग बेमानी है, स्पेशली उस वक्त जब पॉइंट्स मज़ीद नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर इंटेंट ही होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी करना है, जो इनके जहन का टारगेट है, वो अचीव किया जाए और फिर उसके बाद लाहौर को आउट करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये देखकर अभी लग नहीं रहा कि ऐसी कोई सोच इनमें है। शायद ये इसी में खुश हैं कि चलिए आप रेलीगेट नहीं होंगे, आप बॉटम पे फिनिश नहीं करेंगे, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इतना कंपटीशन टफ है पॉइंट्स टेबल में कि आप इस चीज़ को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं कि आप रेलीगेट नहीं होंगे। मजीद बात करेंगे सलमान बट से, क्योंकि ओवर का हो गया इख्तिताम। करना है एक गेम है। सलमान, हमने अक्सर देखा है, स्पेशली जब लाहौर वाइट्स यहाँ पे खेल रही थी, तो पहले दिन बहुत अच्छा बैटिंग सेशन जाता है, पहला घंटा अगले दिन का भी बहुत सेशन अच्छा जाता है, लेकिन पहले घंटे के बाद टीम्स जो हैं हमने देखा स्लो हो जाती हैं। लाहौर वाइट्स ने भी ऐसा किया, क्योंकि बॉलिंग में ऐसा कुछ खास है नहीं जो कल नहीं था। तो क्या ये स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि लंबा लेके जाइए, आप उतना टाइम निकाल दीजिए मैच से? क्या ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में या रिजल्ट के लिए? उठा के खेल दिया है और गैप में खेले हैं। शानदार प्लेसमेंट, 4 रन के लिए बासित ने। क्विकर बॉल था ये, और इसको बैटर ने बड़ी आसानी से मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए, और इसी तरह 450 रन इसी शॉट के साथ कंप्लीट किए मुल्तान रीजन ने। देखिए एक दफ़ा फिर ये बॉल ओवर पिच था और आसान स्ट्रोक राइट हैंडर के लिए। जब एक ऑफ स्पिनर इस रीजन में बॉल करे और डीप मिड विकेट अगर आपके पास नहीं है, तो एक फ्री हिट है ये। कि ज़रूरी है कि आप की जो बैटिंग है वो आपकी इंटेंशंस को जाहिर करती है, जिस पेस के साथ, जिस इंटेंट के साथ आप खेल रहे होते हैं। तो अगर तो मुल्तान एम करती है कि आउटसाइड चांस है ऊपर आने का, तो फिर तो नज़र ये आना चाहिए कि वो इस मैच में नतीजा खेज खेलना चाहते हैं, और जिसमें ये होगा कि अब पॉइंट तो कोई मिलना नहीं है, तो फिर इन्हें आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि 20 विकेट लिए बगैर आप जीत सकते नहीं हैं 4 डे का मैच। और जीत के 16 पॉइंट्स हैं, बैटिंग के आपने ले लिए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्ट कर चुके हैं मेंटली कि यहाँ पर फैसला नहीं होना। और जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीमें शुरू से ही इस माइंडसेट के साथ खेल रही हैं कि भाई अपने बैटिंग के पॉइंट्स लो, और जितनी बैटिंग कर सकते हो करो, अपनी बॉलिंग को और अपनी फील्डिंग को थकावट से बचाओ, ताकि बाहर जब निकलें तो इंजरी जो है ना वो ना कैरी करें यहाँ से वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन ये अच्छा माइंडसेट नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे बैटिंग ट्रैक्स पे हमने देखा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग को आउट किया, और वो इससे भी ज़्यादा अच्छे बैटिंग ट्रैक्स थे। मजीद बात करेंगे इस बारे में। 451 पे 4। ये बहुत ही एक एक्साइटिंग स्टैट है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रेशियो जो सेंचुरीज की साल के हिसाब से, इस बॉल के बाद दोबारा देखेंगे, आसानी से सिंगल हासिल किया। तो सलमान, बैटर्स की चांदी रही है इस सीज़न में, बहुत ज़्यादा रन्स देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा सेंचुरीज देखने को मिली हैं, स्पेशली कदाफी स्टेडियम में तो भरमार रही सेंचुरीज की। इनफैक्ट जिसने सेंचुरी नहीं की, मैं उसे अनलकी कंसिडर करूँगा इस बैटिंग ट्रैक पे, इन कंडीशंस में।
कन्फ्यूजन हुई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन सिंगल आसानी से हासिल कर लिया। देखिए डेफिनेटली ये एक ऐसी जगह रही है जहां पर बैटर्स जो हैं उन्होंने कैपिटलाइज किया अपॉर्चुनिटीज़ पे, और बड़े बड़े रन्स हमने देखे हैं, डबल सेंचुरीज और बड़े 100 देखे हैं इस पिच के ऊपर, इस मैदान के ऊपर। और यकीनन वो प्लेयर्स जो यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर सके अपने आप को बदकिस्मत तस्वर करते होंगे। और एक और फ्लाइटेड बॉल, लगता है पूरे मैच की फ्लाइट इसी एक बॉल में दे दी, क्योंकि यूजुअली हम देखते नहीं हैं इनकी तरफ से फ्लाइटेड डिलीवरी। सलमान, आपको तवज्जो इस पे लेके आऊँगा दोबारा से। 2023-2024 का सीज़न, 31 सेंचुरीज और 100 पर मैचेस 1.55। इसका मतलब है कि हर मैच में सेंचुरीज, 1.5 सेंचुरी तो हुई है। तो कितनी आसान कंडीशन है बैटर्स के लिए यहाँ पे बैटिंग करना। और फिर वही बात करूँगा कि जिसने सेंचुरी नहीं की वो मिस आउट किया। जी बिल्कुल, और ऐसे में इस वेन्यू के ऊपर अगर आप देखें तो तमाम टीम्स को फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी एक लर्निंग कर्व है जहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। और देखिए फ्लाइट किया तो स्पिन मिला है, बाउंस मिला है, बैटर को थोड़ा इशू हुआ है, लेकिन ये 37 ओवर लग गए इनको ये रियलाइज़ करते करते कि यहाँ पर फ्लाइट से कुछ और हो सकता है। तो 117 रन दे चुके हैं और इतने सीनियर हैं, इतने अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिएगा इस दफ़ा जो फ्लाइट दिया है बड़ा शार्प टर्न और बाउंस के साथ हुआ है, लेकिन आपको ये ट्राई करने में दूसरा दिन आ गया। यहाँ वही 38 ओवर्स लग गए काशिफ भट्टी को रियलाइज़ करते हुए कि किस पेस, किस लेंथ, किस एयर से बॉल करने हैं कदाफी स्टेडियम में। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आप देखें डोमेस्टिक सर्किट में इस साल वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं ये तो स्पिन बॉलिंग में काशिफ भट्टी, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ओवर का हुआ इख्तिताम, 454 रन्स, 4 विकेट्स का वाक़या। सलमान, वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। देखिए एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार फिर से, ये जो 31 सेंचुरी स्कोर की गई है, इसको डिफाइन करें कि कितनी आसानी से यहाँ पे बैटर्स ने 100 किए हैं। सिर्फ 20 मैचेस में 31 सेंचुरीज हुई हैं और बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे। 200 रन आसानी से किए हैं बैटर्स ने। कासिम अकरम कंटिन्यू करते हुए अपना स्पेल। देखिए ये जिन सीजन्स में डेफिनेटली फ़र्क इस बात का भी है कि किन सीजन्स में कोकोबरा की बॉल यूज़ हो रही थी और कब कब यहाँ पर ड्यूक का बॉल इस्तेमाल हुआ। जो ड्यूक का बॉल है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंटली बिहेव करता है और किसी भी कंडीशन के अंदर वो ऑफ द सीम मूवमेंट उसकी नहीं रुकती, चाहे घास पिच पे है चाहे नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। कोकोबरा का बॉल डिविएट होता है बिकॉज उसकी सीम बहुत हार्ड है, प्रोमिनेंट है, प्राउड है। लेकिन कोकोबरा का बॉल ऐसा है कि इस पे बॉलर को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड ये है सीज़न के हवाले से कि ये वो बॉल है जो 90% इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ होता है। वाइट बॉल जो है 100% और रेड बॉल जो है सिवाय इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दुनिया में हर जगह कोकोबरा यूज़ होता है और इंडिया अपनी टेस्ट क्रिकेट में एसजी का बॉल इस्तेमाल करता रहा है। सो या तो अगर हम इसको तब्दील करना चाहते हैं तो क्या हम अपनी होम क्रिकेट कोकोबरा के अलावा खेलेंगे, तो फिर उस बॉल पर स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं तो फिर ये बेहतरीन फैसला है कि जो आपके यंगस्टर्स हैं वो इसी बॉल के साथ अपनी स्किल को बढ़ाएं और उसमें प्रोग्रेस करें। और मीनवाइल एक फ्लाइटेड डिलीवरी, ओवर पिच्ड और बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, कंट्रोल ऑल अलोंग द ग्राउंड, 4 रन्स के लिए। देखिए दोनों स्पिनर्स जो हैं, क्योंकि इन्हें फ्लाइट करने की आदत नहीं है, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करते हैं, तो जैसे ही स्पिन देखा आप फ्लाइट कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट में इनकी लाइन और लेंथ नहीं है कंसिस्टेंट। यहाँ बहुत आगे बॉल कर दिया, मुंह में बॉल कर दिया। ये इजी पिकिंग्स हैं बैटर्स के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अगर आप इस स्पेस से बॉल करेंगे तो आपको रन्स मिल ही खाएंगे। एक बार फिर, लेकिन इस बार थोड़ा जो लाइन थी विद इन द स्टंप्स रही कासिम अकरम की जानिब से। सलमान, एक और वापस आते हैं उसी टॉपिक पे, स्ट्रेटजीज को लेके, प्लानिंग को लेके। कदाफी स्टेडियम में जो टीम्स ने की हैं, स्वीप शॉट, फील्डर देखते रह जाएंगे, बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। ये अच्छा काउंटर अटैक है इमरान रंधावा की जानिब से। इससे पहले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और अब फाइन लेग के ऊपर से 4 रन हासिल किए। बेहतरीन बैटिंग। एक ऑफलाइन बॉल जिसका पूरा फायदा उठाया इमरान रंधावा ने। बिल्कुल भी इंप्रेसिव लाइन और लेंथ नहीं है कासिम अकरम की। इतनी क्रिकेट खेले हैं, इतना कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं 4 साल से, पाकिस्तानी के टूर्स किए हैं, यू एक्सपेक्ट बेटर लाइन एंड लेंथ। एक और ओवर का अख्तिताम। क्या मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है
कदाफी स्टेडियम में बॉलर्स के लिए आपकी लाइन और लेंथ चूकी नहीं और आपको रन्स पड़े नहीं, और यही डिसअपॉइंटमेंट लेके कासिम अकरम आप अपनी फील्ड पोजीशन पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी एहसास है कि गलत लाइन और लेंथ पे अफोर्ड नहीं करते हैं इस पिच पे बॉल करना। सलमान, अगर जैसे पोजीशन हमें लाहौर वाइट्स की नज़र आ रही है फाटा के अगेंस्ट, 97 रन्स पर उन्होंने फाटा को आउट कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम इस स्ट्रेटजी से एग्री कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट्स मुश्किल है, उन्होंने एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने बैटिंग बोनस पॉइंट्स मैक्सिमम हासिल किए। तो कहीं भी जहाँ पे कंडीशंस उनके बॉलर्स को सूट की, वो रिजल्ट की तरफ गए, और अगले दोनों मैचेस वो अगर जीतते हैं तो टॉप ऑफ द टेबल वो आ जाएंगे, क्योंकि ये हमें एतराज़ रहा कि उनकी स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं रही, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रही। देखिए, उनकी बॉलिंग रिसोर्सेज ऐसे नहीं थे कि वो यहाँ पर बहुत इफेक्टिव हो सकते, देयर वाज नथिंग एक्सप्रेस। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइज किया है, लेकिन इस पिच के ऊपर किसने नहीं लिया बैटिंग पॉइंट्स? ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो लाहौर ने प्लान किया और अचीव कर लिया। यहाँ पर तकरीबन हर टीम, शायद कराची है जिसने ये अपने 1 पॉइंट मिस किया था बैटिंग का, उसके अलावा हर टीम ने जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट्स लिए, और वो भी अगर सरफराज फहद इकबाल की जगह बैटिंग पे ऊपर आ जाते तो बड़े आराम से वो अपना पॉइंट अचीव कर सकते थे। तो सिवाय कराची के हर टीम ने यहाँ पर अपने पूरे बैटिंग पॉइंट्स हासिल किए। कंसिडरिंग के लाहौर वाइट्स अपने 5 मैचेस यहाँ खेले, स्टिल उनको बेनिफिट दूंगा कि उन्होंने स्टिल एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ की कि कोई पॉइंट लूज़ नहीं किया बैटिंग में। मैक्सिमम जितने भी वो हासिल कर सकते थे, जो उन कंडीशंस से फ़ायदा उठा सकते थे, वो उन्होंने उठाया। और अब जहाँ पे जैसे अभी सलमान कह रहे थे कि थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस आई तो उनको अहमद बशीर ने 6 विकेट्स हासिल किए, तो शायद हम वहाँ देख सकते हैं कि लाहौर वाइट्स मैच जीत सके, क्योंकि स्टार स्टडीड साइड है, बहुत बड़ी साइड है, बड़े नाम हैं, और पॉइंट्स टेबल पे जो मुकाबला है वो बहुत सख्त है। मुल्तान की भी बात करें, रेलीगेशन से भी बचना है, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मिडिल में है ये दो टीमें, लाहौर वाइट्स और मुल्तान रीजन। ओवर का हुआ इख्तिताम 464 पर 4 मुल्तान रीजन। टॉप लेफ्ट सिराज खान, जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया था लास्ट टाइम जब मुल्तान यहाँ खेले थे, और उनके साथ बैठे हैं फरहान सरफराज, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 750 रन्स बनाए हैं, और अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है मुल्तान को रिप्रेजेंट करने का। और अभी सैम, जिनका डेब्यू इस मैच में हुआ है, वो 550 रन्स किए थे उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में। सो बहुत सारा बैटिंग टैलेंट मुल्तान के पास। और यहाँ पर एक और बड़ा शॉट 4 रन्स के लिए मोहम्मद बासित जो है स्पिनर्स को आड़े हाथों लेते हैं, जैसे ही उनकी जोन में बॉल आता है वो बिल्कुल अपना स्ट्रोक खेलने से नहीं घबराते। या मार्जिन ऑफ एरर स्पिनर्स के लिए बहुत ही कम है। देखिए फिर लेग साइडिश लाइन, और ये जब अगर आपके पास मिड विकेट का फील्डर नहीं है तो ये बहुत इजी पिकिंग्स हैं बैटर के लिए, क्योंकि रिस्क फ्री शॉट हो जाता है अगर फील्डर वहाँ मौजूद नहीं और आपकी लाइन लेग साइड पे है। ऑफ स्पिनर की अगर बात की जाए, यहाँ पे अपने माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हुए 86 रन्स पर बासित पहुँच गए। 150 रन्स अपने डेब्यू पे बनाए हैं इन्होंने, अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहे हैं, फ्री खेलते हैं, दलेर हैं। जी बिल्कुल, और काफ़ी कुछ ऑन ऑफर भी है बड़े शॉट्स खेलने के लिए। कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ा बासित को, उनके जोन में बार बार बॉल होते, और एक बार फिर यहाँ पर ओवर पिच्ड बॉल था जो सीधा मिडिल किया, लेकिन सीधा कवर्स की तरफ, और लकी रहे कासिम अकरम, बाउंड्री बॉल ही था फॉर्चुनेटली फॉर कासिम अकरम कि वो सीधा फील्डर के हाथ में गया। इस बार फील्डर के साथ से बॉल गया, लेकिन स्वीपर कवर मौजूद है, 1 रन बनेगा। बहुत जोर से हिट मारते हैं, ये हमने अभी तक इनके बारे में नोट किया है, तगड़ा खेलते हैं, तगड़े वेल बिल्ट हैं। सलमान जी बिल्कुल, जो है अपनी शॉट के अंदर पूरा बॉडी वेट ट्रांसफ़र करते हैं और अथॉरिटी के साथ स्ट्रोक्स खेलते हैं, और ये खुशाइन चीज़ है। बैटर्स को आजकल जो है उनकी बेस बहुत सॉलिड होनी चाहिए ताकि आप अपने बड़े शॉट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। और कमिंग बैक बॉलिंग की तरफ, तो ऑफ स्पिन आर्ट जो है, जिस पे बहुत सारी डिबेट होती है पाकिस्तान के अंदर कि ऑफ स्पिनर्स उस तरह से नहीं आ रहे, उसका रीज़न ये भी है कि ऑफ स्पिनर्स जो है यूजुअली वो ऑफ स्पिनर को पाकिस्तान में ऐसा आर्ट लिया जा रहा है बहुत अरसे से कि जो साथ चलो ऑफ स्पिन कर लेते हैं बैटिंग के साथ, उसको प्रॉपरली परसू नहीं किया जा रहा कि एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर है। और बहुत सारी टीम्स भी ऐसी हैं
जो शॉर्टर फॉर्मेट की क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उस क्रिकेट की, वो उसमें ऑफ स्पिनर को कह लीजिए कि तरजीह नहीं देती। वो चाहती हैं कि कोई मिस्ट्री स्पिनर हो, कोई लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेकिन ऑफ स्पिनर के सिलेक्शन के ऊपर रिलक्टेंस है। सो कहीं ना कहीं इसको हमें टारगेटेड प्रोग्रेस की तरफ ले जाना है। लेकिन सलमान, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, क्या डिफरेंट करना चाहिए इंडिविजुअली यंग बच्चों को कि ऑफ स्पिन का जो आर्ट है उससे ज़िंदा रखा जा सके, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके? हम समझते हैं कि अब वो दूसरा उस तरीके से नहीं होता है, बट स्टिल क्या करना चाहिए? देखिए, आपको इसका टैलेंट हंट करना चाहिए। आपके पास सकलैन मुश्ताक हैं, लेजेंडरी ऑफ स्पिनर, आपके पास तौसीफ अहमद साहब हैं जो सिलेक्टर का रोल निभा रहे हैं, और इसी तरह आपके पास अरशद खान है। तो 3 बेहतरीन आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनर मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा ये उठाना चाहिए कि एक तो ऑफ स्पिनर्स के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करें, और ऑफ स्पिनर जो हैं ये मेक श्योर करें कि वो कहीं ना कहीं सीज़न में एग्जिस्ट करें 6-7 ऑफ स्पिनर, और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए, और शॉर्टर फॉर्मेट से हटके भी उनको एक विजन दिया जाए कि भाई टेस्ट क्रिकेट है आपके लिए, वनडे क्रिकेट है। आप नेथन लायन को देखिए, वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस जहाँ पर इतना पहले 3 दिन स्पिन नहीं मिलता, वहाँ पर उनकी 600 के करीब विकटें हैं। सो इट्स ए डेफिनेट आर्ट जिस पे हम मिस आउट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सलमान ने। 120 ओवर्स मुल्तान रीजन खेल चुका है, 470 रन्स। अब यहाँ से मैच किस तरफ जाएगा? 500 रन्स क्या हदफ होगा? क्या लंच तक बैटिंग करना हदफ होगा, या लंच के बाद 1 घंटा बैटिंग करना हदफ होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं टारगेटेड अप्रोच की, तो आप देख लीजिए कि इंडिया में क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वर्ल्ड कप के दौरान वो एक ऐसा रोल है उनका मिडिल में कि अगर अच्छे स्पिनर्स हैं तो ऑपोजिशन के लिए खासा कड़ा इम्तिहान हो सकता है। तो वहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर जो टीम्स हैं वो स्पिन बॉलिंग ग्रेड्स को कैरी कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग कोचेस या स्पिन के उसके मेंटर्स। बट आई थिंक एट द सेम टाइम वी नीड टू डू दैट। यहाँ पर एक और स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर इमरान रंधावा 4 रन हासिल किए, और काशिफ भट्टी जो हैं जब भी उन्होंने स्टंप्स के अंदर बॉलिंग की है, बैटर्स ने बड़ी आसानी के साथ उन्हें मिड विकेट और मिड ऑन रीजन की तरफ जो है ना बड़े शॉट्स खेले। या अगेंस्ट द स्पिन ये आसान शॉट नहीं होता है, लेकिन दूर से पिकअप शॉट किया ये, और एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। और यही खासियत है इमरान रंधावा की, जब ये बड़े स्ट्रोक मारते हैं तो प्लेसमेंट बहुत शानदार करते हैं। ऑलमोस्ट 6 रन हो गए थे। अली मिड ऑन और स्क्वायर लेग बहुत बड़ा गैप है मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, तो कैलकुलेटेड रिस्क है ये, इसमें इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और फुल आर्म्स की एक्सटेंशन के साथ उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया है स्ट्रोक को। 16 रन पर पहुंच गए, 474 रन मुल्तान रीजन। 91 रन पर मोहम्मद बासित है, इनकी सेंचुरी भी काबिल। और ये आउट हो जाएंगे। ये अच्छा कैच पकड़ा है हमाद भट्ट ने, मिड विकेट पे खड़े हुए बहुत तेजी से ये शॉट लगा था, लेकिन अच्छा एग्जीक्यूट किया इस कैच को। ये हमाद भट्ट खुश होंगे क्योंकि कल अच्छा दिन नहीं रहा था फील्ड में लाहौर ब्लूज की जानिब से, लेकिन ये एक बहुत शानदार कैच। हमाद भट्ट डेब्यूटेंट हैं, और आई थिंक उन्होंने अपना पहला कैच किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। और काशिफ भट्टी इस बार बॉल इतना शॉर्ट नहीं था जितना इमरान रंधावा ने प्रिज्यूम किया, और क्योंकि इतना शॉर्ट नहीं था तो वो एलिवेशन हासिल नहीं कर सके कि फील्डर के ऊपर से मार सके। ये देखिए, पिच काफ़ी आगे था ये बॉल, और बजाय कि इस पे कलाइयों का इस्तेमाल करते उन्होंने इशू को फोर्स करने की कोशिश की, और वो एलिवेशन गेन नहीं कर सके इस बॉल पर। सो एक बैड शॉट सिलेक्ट किया उन्होंने जो नहीं था इस बॉल के ऊपर बनता, और उसका खुमियाजा भुगता। 16 रन बनाकर आउट हुए, 474 पे 5 मुल्तान। इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके आए हैं अयाज, साइम अयाज। अपॉर्चुनिटी मिली है एक बड़ी स्टेज पे, एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा साइन है। तो अच्छा लगा, मुल्तान ने इससे पहले भी अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर को खिलाया था जब लास्ट टाइम मुल्तान यहाँ पे आए थे, और एक बार फिर साइम अयाज जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके आ रहे हैं।
तो एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान रिकग्नाइज कर रहा है अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर्स को। सैम जो है इन्होंने 50 रन की एवरेज से औसत से इन्होंने रन्स किए हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 500 प्लस रन्स हैं इनके और उसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर इन्हें ये मौका दिया जा रहा है मुल्तान रीजन से। जबकि इनके मद्दे मुकाबल फरहान सरफराज ने 103 रन की औसत से इंटर डिस्ट्रिक्ट में 729 रन किए हैं और जो अभी तक इंतज़ार में है कि अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचे। मजीद बात करेंगे। 121 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 474 पर 5 मुल्तान रीजन। 4 बंदे पूरे हो गए हैं। फरहान सरफराज का जिक्र सलमान बट कर रहे थे, कितना परफॉर्म करके आए। ये जिस तरीके से अयाज आए हैं, थोड़ा बॉल नीचे भी रहा, इतना शॉट भी नहीं था, फोर्स करने चला गया। डिसअपॉइंटेड होंगे, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होंगे। बड़ा शॉट हवा में, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं है। दोनों फील्डर्स के दरमियान में बॉल गिरा। 2 रन यकीनी हासिल करेंगे बैटर। बिल्कुल एक हेवीली स्कोरिंग शॉट रहा है इनके लिए और इस मौके के ऊपर इस बॉल को टाइम नहीं कर सके बासित, लेकिन जब भी इस रीजन में इन्हें बॉल मिली है ये गए हैं इस शॉट के लिए। और हैरानगी की बात यह कि कैप्टन ने अभी तक ये वाला शॉट ब्लॉक नहीं किया और एक ऐसी जगह फील्डर रखा हुआ है जो शॉट हमने इनकी तरफ से देखा ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस लाइन पे बहुत स्क्वायर मारने की कोशिश करते हैं तो बैट का फेस आपको काफ़ी क्लोज करना पड़ता है और ऐसे में लेग बिफोर होने के खासे चांसेस हैं। लेकिन मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में जो शॉट है ये खासा इसमें बैट का फेस जो है ना वो पूरा रहता है, तो लेस रिस्क है इसके अंदर इन्वॉल्व। लाहौर ब्लूज के कप्तान इमरान बट, काफ़ी गलतियां हुई हैं कल से लेकर आज तक। लाहौर ब्लूज की जानिब से हमने कल देखा 3 कैचेस ड्रॉप किए गए, एक इनकी खुद से जानिब से स्लिप में हुसैन तलत ने ड्रॉप किया, जुनैद विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप किया। तो ज़्यादा अच्छा ये मैच रहा नहीं है क्योंकि रन्स भी बहुत दे दिए, 476 रन्स। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रन्स तो होंगे इस पिच पे, लेकिन कैच छोड़ देना उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 कैचेस छोड़ देना बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है बॉलर्स के लिए। ऐसी कंडीशंस में आप मेहनत करें और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और आपको फील्डर सपोर्ट ना करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये साइम अयाज के लिए, फील ले लें बड़ी क्रिकेट की। लेकिन अगर आप बैटर हैं और इस क्रिकेट के अंदर आप एज अ बैटर आ रहे हैं और अपना डेब्यू कर रहे हैं, देन नंबर 7 एक ऐसी जगह है जहाँ पे या तो आप ऑलराउंडर हो और या फिर सेकंड न्यू बॉल खेलने वाली टेक्निक हो आपकी, बिकॉज इस नंबर के ऊपर बैटर्स नहीं आते 7 नंबर के ऊपर। तो देखना होगा कि कैसी टेक्निक है। 500 रन तो किए हैं इन्होंने। इट वुड बी सॉलिड डिफेंस है। 122 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 477 पर 5 मुल्तान। काशी भट्टी बॉलिंग जारी रखेंगे। दूसरी जाने बैटिंग बहुत ही आसानी से कर रहे हैं मोहम्मद बासित। ये 2 यंग प्लेयर जिनको हम पहली बार एक्शन में इतने बड़े इवेंट में बड़ी जगह पे देख रहे हैं, अच्छे लगे हैं। बासित ने 150 रन की इनिंग बनाई थी अपने डेब्यू में और इंटर डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर साइम अयाज। अच्छी चीज़ जो बासित की बैटिंग में नोट की है वो ये है कि अपनी शॉट सिलेक्शन महदूद है और उसी पे स्टिक रहते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रावेगेंट करने की कोशिश नहीं करते, सब्र के साथ खेलते हैं। स्ट्राइक रेट भी डिसेंट है फॉर अ पर्सन जो कि एक अपना पहला सीज़न खेल रहा हो और इनिशियल गेम्स में हो। तो और यही की फैक्टर भी है बड़े स्कोर करने में कि आप आपकी शॉट सिलेक्शन जो है उसको बड़ा सिंपल रखें। तो जब भी बॉल इनको इनके रीजन में मिला है, इन्होंने अपने मिड विकेट और दूसरी कवर की तरफ जब भी ओवर पिच बॉल मिला इन्होंने रन्स किए। अब वहाँ पर फील्डर है, मिड विकेट पे डीप फील्डर ले लिया कैप्टन ने, तो शायद ये जो पिछला बॉल था, वरना इस तरह के बॉल्स को इन्होंने अभी तक मिड विकेट के ऊपर से ही खेला है।
क्या ब्रेव इनफ होंगे जिस तरीके से शरून सिराज ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की थी 6 रन के साथ। क्या ऐसा हमें इनकी जानिब से देखने को मिलेगा? ये पॉइंट है क्योंकि लॉन्ग ऑन मिड विकेट दोनों ही फील्डर बाउंड्री पे हैं। इनफैक्ट लॉन्ग ऑफ पे भी फील्डर एक मौजूद है, लेकिन उनको अभी कोई जल्दी नहीं है। देखिए, एक तो जल्दी नहीं है, दूसरा अपने क्रिकेट के अर्ली स्टेजेस में है, इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। और इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितने बहादुर हैं। अगर फील्डर बाउंड्री लाइन पर है तो आप रिस्क ले रहे हैं। सो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि आप बहादुर हैं या आप अकल से काम नहीं ले रहे। 477 पे 5 मुल्तान रीजन 123 ओवर के अख्ताम पर। चार सौ 77 रन, 5 विकेट गवा के। ये विकेट जो है 5-8 हो सकती थी अगर कैचेस टाइम पे लिए गए होते, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, रन्स भी कम हो सकते थे। रन्स भी कम हो सकते थे। एक चांस तो जैन अब्बास का था जो बहुत ही शानदार फॉर्म में है, जिन्होंने बड़े बड़े रन्स किए हैं इस सीजन में। दोनों चांसेस पहले जैन अब्बास के थे और दोनों बहुत आसान का चांसेस थे। इमरान बट स्लिप में, स्क्वायर लेग पे हुसैन तलत। क्या ही फील करता है बॉलर जब इतने आसान कैचेस ड्रॉप किए जाएं सलमान। हार्ट ब्रेकिंग। और दोनों अच्छे फील्डर्स। ये देखिए हुसैन तलत, रेगुलेशन कैच, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था कि जो फील्डर को चैलेंज करे। ये वो कैच जो कि बड़ा ही इजी हाइट पे, आइडियल हाइट पे स्पिन बॉलिंग के लिए। और यहाँ पर विकेट कीपर ने जो है कैच ड्रॉप किया। और सलमान, दोनों ही कैचेस जो पहले थे वो हुनैन शाह की बॉलिंग पे थे, जिन्होंने 19 ओवर में अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं की है। तो ये डिसअपॉइंट होने की ज़्यादा वजह है। अच्छा सिंगल हासिल किया है क्योंकि एक यंग बॉलर जो अपना नाम बनाना चाह रहा हो, जो बहुत मेहनत कर रहा हो, जान से बॉलिंग कर रहा हो, और वो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे और साथ ना मिले, तो ये हार्ट ब्रेक है डेफिनेटली। यहाँ पे अब जो नज़रें हैं अब आ जाएंगी अब मोहम्मद बासित पे, जो कि 94 रन पर पहुँच गए हैं, एक हिट दूर है अपनी सेंचुरी से। और कैच भी वो छोड़े जिसको बॉलर कोई रिएक्शन भी ना दिखा सके, वो आपके कप्तान हो, तो बहुत ही मुश्किल। आप इमोशनल भी नहीं हो सकते। क्या कहेंगे कप्तान को? और कप्तान भी एक अच्छे फील्डर में से उनका शुमार होता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की कासिम अकरम ने, कलाइयों को मोड़ा है इस बॉल करने के लिए। कप्तान जो हैं वो बड़े स्किलफुल फील्डर हैं, स्लिप में बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेट कि आसान कैच उनसे ड्रॉप हुआ, लेकिन असल में तो इमरान बट पाकिस्तान के बेहतरीन स्लिप फील्डर्स में से हैं। और इन्होंने इंटरनेशनली जब टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्लिप कैचिंग की इन्होंने। इनकी वजह शोहरत थी, बैटिंग से ज़्यादा स्लिप फील्डिंग। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्की से अपील जरूर हुई थी, लेकिन कासिम अकरम जानते थे ये बॉल बीट हुए। 124 ओवर्स के बाद 479 पे 5। हो गया टाइम। दोबारा फोकस हम डालते हैं मोहम्मद बासित की इनिंग पे, जो कि 95 रन पर हैं। 162 बॉलें खेली, अच्छी पॉजिटिव एनर्जेटिक इनिंग हमें देखने को मिली है एक मिडिल ऑर्डर बैटर से। काशिफ भट्टी अच्छा ड्राइव किया है, लेकिन फील्ड काफ़ी खुली हुई है, सिंगल्स अवेलेबल हैं। देखिए बिल्कुल लाहौर ब्लूज़ ये नहीं चाहती कि रन्स बाउंड्रीज की सूरत में तेज़ी से बने, तो फील्ड उन्होंने ऐसी रखी है कि जहाँ पे बैटर्स सिंगल कर लें 3-4 ओवर में, और बैटर्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं लूज बॉल भी मिल रहा है उन्हें, रेगुलरली मिल रहा है, तो स्कोरिंग रेट अच्छा रहा है आज सुबह से। लेकिन जो इंटेंट है ना कि मैच जीतने की तरफ जाया जाए, वो नज़र नहीं आ रहा, और ये जो है मैच को इंटरेस्टिंग नहीं होने देती ऐसी चीज़। फील्डर्स को ऊपर बुला लिया है
यंग साइम अयाज के लिए। चलो एज अ यंगस्टर जैसे साइम अयाज हैं, बहुत रन्स करके आए, ऐसी फील्ड सेटिंग हो, लंच राउंड द कॉर्नर हो, आप क्या अप्रोच से जाना चाहेंगे? क्या आप चांस लेंगे, अपने टैलेंट को बैक करेंगे? जिस तरीके से कट किया ये बॉल शॉट, शानदार तरीके से प्लेस किया हुआ है शॉट, 4 रन्स के लिए बॉल चला जाएगा। पहली बाउंड्री साइम अयाज के लिए। अच्छा शॉट, बॉल था वहां पर कट करने के लिए और उसका पूरा फायदा उठाया सैम ने, कंट्रोल किया अच्छा शॉट को ऑल अलोंग द ग्राउंड। ये देखिए थोड़ा सा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ और उस पर वेट किया बैकफुट के ऊपर और अच्छा स्ट्रोक खेला इन द गैप। देखिए अप्रोच यही है कि अगर आप अननेसेसरी रिस्क ना लीजिए, इतने अगर आप करीब हैं एक सेशन के ख़त्म होने के और आपका डेब्यू है, तो आप सिर्फ बुरे बॉल का इंतज़ार कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं अननेसेसरी रिस्क लेने की। लेकिन अगर आप यंग हैं, फील्डर आप देखते हैं सर्कल के अंदर है और आपके पास कॉन्फिडेंस है रन्स का, खैर इनके बारे में मजीद तो बात हम करते रहेंगे। अभी दोबारा वापस आते हैं अब्दुल बासित पे, जिनके पास 2 बॉलें हैं। लंच से पहले मोस्ट लाइकली आखिरी 2 बॉलें होंगी, क्या अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर सेंसिबल होंगे, जैसे सब सलमान कह रहे थे, समझदार होंगे, तो जल्दी नहीं करेंगे। देखिए जल्दी किस बात की, यंग होने का मतलब ये नहीं कि आप गैर ज़रूरी स्ट्रोक्स खेलें। यस मैच्योरिटी कम ज़रूर होती है, लेकिन आपको बताना तो वही है जो रिक्वायरमेंट है गेम की। थर्ड मैन पे स्टीयर किया इस बॉल को, एक बार फिर रूम दिया, थोड़ा सा शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बासित ने बहुत ही शानदार 2 रन हासिल किए, वेल कंट्रोल्ड। मुल्तान रीजन 487 पे 5। नजरें रखिएगा अंपायर्स पे। जी हाँ, उन्होंने बेल्स को उठा दिया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे खाने का वक्फा। आज दूसरे दिन मुल्तान रीजन 487 रन्स, 5 विकेट्स गवाकर, शानदार बैटिंग रही दोनों यंग बैटर्स की जानिब से। मोहम्मद बासित 98 रन्स बनाकर क्रीज पे मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा शेरून सिराज ने अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की इस सेशन में। ओवरऑल एक और सेशन जिसमें बैटिंग का बोलबाला रहा, बॉलर्स के लिए मुश्किलात रही हैं, फील्डिंग साइड के लिए मुश्किलात रही हैं। कैचेस में हमने देखा काफ़ी मसाइल नज़र आए लाहौर ब्लूज़ के। 142 रन्स इस सेशन में बने, रन रेट भी अच्छी रही 3.84 की। ओवर रेट बहुत इंप्रेसिव रहा। शाह फैसल होते हैं हमारे साथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका फोकस रहता है हमेशा ओवर रेट पे। 37 ओवर्स किए, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा स्पिनर्स ने बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स से बहुत कम बॉलिंग करवाई गई इस सेशन में। तेरह रन की ये पार्टनरशिप इन 2 बैटर्स के दरमियान। मुल्तान दोबारा से आगाज करेगा तो कुछ माइलस्टोन्स होंगे। मोहम्मद बासित की सेंचुरी जो कि अभी 98 रन पर है, इस पे नजरें होंगी। इससे पहले हमने देखा ज़ैन अब्बास ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, हसीबुल्लाह भी कमाल की बैटिंग की, उन्होंने 101 रन बनाए। शेरून सिराज ने अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की, 114 रन बनाए सिर्फ 136 बॉलों पे। बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट हमें दिखाई दी शेरून सिराज की जानिब से, और 125 ओवर्स में 487 रन मुल्तान रीजन ने बनाए। मुश्किल हालात रहे बॉलिंग यूनिट के लिए। 2 विकेट्स हासिल की कासिम अकरम ने, 2 विकेट्स हासिल की काशिफ भट्टी ने, दोनों ही स्पिनर्स हैं। 1 विकेट हासिल की अली शफीक ने। हुनैन शाह 19 ओवर्स करवाए, लेकिन अनलकी रहे, 2 कैचेस ड्रॉप हुए इनकी बॉलिंग पे, इसलिए जो विकेट्स का कॉलम है आपको खाली दिखाई देता है। आज का सेशन एक बार फिर बैटर्स के नाम रहा। अब्दुल बासित और शेरून सिराज ने इनिंग आगाज किया था इस सेशन का, और थोड़ी किस्मत ने भी साथ दिया, एजेस मिले, लेकिन अपनी दिलेरी से इस इनिंग को कंटिन्यू किया। बहुत शानदार हिट्स हमें देखने को मिले। फास्ट बॉलर से ज़्यादा बॉलिंग नहीं देखने को मिली, लेकिन स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया। बड़े शॉट्स मिड विकेट की जानिब, एक्स्ट्रा कवर की जानिब, अपनी कलाइयों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। दोनों बैटर्स दिलेर हैं, दिलेरी से अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की थी। शेरून सिराज ने अपनी विकेट भी गंवाई उसी दिलेरी में। ऊपर से खेलना चाहते थे मिड ऑफ के, कासिम अकरम ने विकेट हासिल की उनकी, लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद बासित कंटिन्यू करते रहे अपनी स्ट्रोक मेकिंग। डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस साइम अयाज आए, उन्हें भी अच्छे इम्प्रेस किया हमें स्ट्रोक मेकिंग से। मोहम्मद बासित दूसरी जानिब रन्स बनाते रहे, और यही क्वालिटी है। इमरान रंधावा तेज़ रन्स बनाने की कोशिश में, जरूर हमने हिट्स देखी, लेकिन उसी असना अपनी विकेट भी गंवा दी। अच्छा कैच हमाद बट की जानिब से देखने को मिला। डेब्यूटेंट
अयाज ने भी अच्छा स्ट्रोक खेला एंड पे और इस सेशन को सेफली ख़त्म किया मुल्तान रीजन के लिए। गद्दाफी स्टेडियम में खाने का वक्फा है, कुछ देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
दो रन्स की दूरी पे मौजूद है। एक और सेंचुरी हमें देखने में नजर आएगी। बॉलर्स के लिए एक बार फिर इम्तिहान। 2 विकेटें हासिल की कासिम अकरम ने, अच्छी बॉलिंग की आज, और काशिफ भट्टी भी 2 विकेटों के साथ कामयाब रहे। 1 विकेट अली शफीक के नाम हुई। थोड़ी बेहतर बॉलिंग इंटेंट नजर आई है। फील्डिंग की भी बात करें तो लाहौर ब्लूज आज कुछ कदरे बेहतर नजर आए। आज के दिन का आगाज एक बार फिर बैटिंग इंटेंट से नज़र आया था मुल्तान रीजन की जानिब से। स्पेशली शरून की बात करें, मेरे साथ कियास मौजूद हैं, जिस इंटेंट से वो कल भी आए, मिडिल में आके उन्होंने खेलना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया बॉलर्स को, और एक अच्छा कह सकते हैं हमें नज़र आया प्रोग्रेशन रन रेट की सूरत में। और उसके बाद उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं मोहम्मद बासित, सिर्फ 2 रन की दूरी पे। मुल्तान थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आया लाहौर की निस्बत। जी बहुत शुक्रिया मरीना। लाहौर में इस वक्त ये मुकाबला जारी है जहां पर बल्लेबाज एक दफ़ा फिर राज कर रहे हैं, और इस ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया दोनों नौजवानों, ख़ासतौर पर शरून सिराज की जो आप बात कर रही थी, उनका जो एतमाद था वो बहुत ही ज़बरदस्त, टाइमिंग लाजवाब, और बहुत बहादुरी से बल्लेबाजी करते रहे। और इसी तरह उनके साथ इस वक्त उनके विकेट के बाद बासित इस वक्त मौजूद हैं, और बासित के बारे में हमारे साथी कमेंटेटर और स्टेटिशियन फरहान निसार ने और बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। 98 पे मौजूद हैं। थोड़े से आज फास्ट बॉलर्स के खिलाफ थोड़े से ये नर्वस लगे, लेकिन स्पिनर्स को जिस तरीके से ये चढ़ के खेलते हैं वो ज़रूर जिक्र के काबिल है। अब देखना ये होगा कि मुल्तान रीजन किस टारगेट तक जाना चाहेगा। पहली गेंद लंच ब्रेक के बाद। ने अच्छी पेस के साथ बॉलिंग की है, थोड़ी फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ। कासिम अकरम ने विकेट्स हासिल की, शरून की विकेट भी हासिल की। एक दफा फिर ऊंचा खेले हैं, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी? ये चंद टिप्पे खाने के बाद ये गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन, दूसरी सेंचुरी इस सीजन की। पहले केआरएल में 150 रन बनाए थे इन्होंने अपने डेब्यू पे, और उसी फॉर्म को जारी रखते हुए कज़ाफी स्टेडियम में एक दूसरी सेंचुरी अपने नाम की है। बासित स्ट्राइक पे मौजूद नहीं थे, ये 4 रन हासिल कर लेंगे। अभी भी 2 रन की दूरी पे हैं बासित। 2 लगातार चौके। इस दफा ये लेंथ ठीक नहीं थी, पीछे गिरी हुई इस गेंद को आराम से खेल दिया फाइन लेग की जानिब। 4 रन हासिल किए। साइम भी पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हुए नजर आए। थोड़े ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं कासिम अकरम। विद इन स्टंप्स तो जरूर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस पेस से कर रहे हैं उसमें वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है। लंच के बाद पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज मिले,
अच्छा आगाज लंच के बाद एक दफ़ा फिर मुल्तान का। अठानवे पे मौजूद है मोहम्मद बासित, अपनी दूसरी सेंचुरी की जानिब गामजन है। फास्ट बॉलर्स को भी बहुत ही मुतात अंदाज से खेला, स्पिनर्स को आड़े हाथे लिया, कुछ ज़्यादा मुश्किल बनाई नहीं लाहौर ब्लूज के बॉलर्स ने भी, उनको ज़्यादा नज़र आया नहीं कोई अच्छी डिलीवरी जो आउटसाइड ऑफ स्टंप पे बीट हुए हो कोई भी बॉलर। वकास को वापस लाया गया, तजर्बेकार बॉलर हैं। जाने दिया इस गेंद को। नर्वस 90s की हम बात ज़रूर करते हैं, काफ़ी कुछ चल रहा होता है बल्लेबाज के दिमाग में, जल्द अज जल्द अपने वो 3 हिस्से पूरे करने की कोशिश में ज़रूर होता है, लेकिन ये भी एक डर होता है कि आउट ना हो जाए सिर्फ 2 रन की दूरी में, इतनी मेहनत करके जब आप सेंचुरी के करीब पहुंचते हैं। जी हाँ, बल्लेबाज को ये परेशानी ज़रूर होती है कि एक माइलस्टोन जो है वो मुकम्मल होने वाला है, इस वक्त अपनी विकेट ना गंवा दे, और इस चीज़ का और इस दबाव का फ़ायदा बॉलर उठा सकता है कि वो कोई ऐसा ललचाने वाली गेंद कर दे जिसमें बैटर कोई गलती कर दे। थोड़ी मूवमेंट ज़रूर नज़र आई है वकास अहमद की जानिब से, और ये अच्छा एरिया है, ये कॉरिडोर इनको मेंटेन करना पड़ेगा। स्लिप मौजूद है, गली मौजूद है, डीप पॉइंट भी मौजूद है, तो यकीनी तौर पे जो लाइन है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप होगी, लेकिन ऐसी लाइन हो कि ज़्यादा रूम ना दिया जाए। जो बात हम अक्सर करते हैं 4th और 5th स्टंप की, वो ज़रूरी है कॉरिडोर मेंटेन करना। थोड़ा चेस करने गए थे, खुशकिस्मत रहे कि चॉप ऑन नहीं हुआ। 2 रन की ताक में और इस तरह अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे मोहम्मद बासित। इस सीजन की दूसरी सेंचुरी, 150 रन की जाराना इनिंग्स खेली थी केआरएल में इसी सीजन में, और उस फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए सेकंड सेंचुरी अपनी फर्स्ट क्लास की। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया कि मिस्ताक इस नौजवान की ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास में एंट्री हुई है। अपने पहले ही मैच में 150 रन की इनिंग्स खेली और ये शानदार सेंचुरी, और यहाँ पर सजदा रेज हो गए। यकीनी तौर पर आज इनके लिए एक और बहुत बड़ा दिन। अच्छी पार्टनरशिप शेरून के साथ इन्होंने बिल्ड की थी और उस स्टार्ट का फ़ायदा उठाया। अच्छा कन्वर्जन रेट और टेम्परामेंट नज़र आता है जो स्कोर करते आए 150, 60, और ये तीसरा हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट क्लास डेब्यू पे बासित की जानिब से, जो 150 उन्होंने केआरएल में किया था। पाकिस्तान में 3rd हाईएस्ट है, ये भी एक रिकॉर्ड इनके नाम हुआ। इनके बल्लेबाजी में बला का एतमाद, इनकी टाइमिंग की बात की जाए, इनके हौसले की बात की जाए, तमाम तर दाद आज इनके नाम जाएगी जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की है। और आपने नर्वस 90s की बात की थी मरीना, इसमें मैं आपसे एक वाक़या भी शेयर करना चाहूँगा। बाजी के एक बल्लेबाज भारत के नजवत सिंह सिद्धू, जो कि आजकल वहाँ पर मंत्री भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उस हवाले से आपसे कि वो जब नर्वस 90s में होते थे तो वो क्या करते थे। आगे गिरा हुआ गेंद। उनकी अहलिया, उनका नाम भी नजवत कौर है, और वो बताती हैं कि कई दफ़ा ऐसे हुआ, ये इतने शर्मीले थे नजवत सिंह सिद्धू कि ये 90s में जानकर आउट हो जाते थे कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा, अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाऊँगा। और आज देख लीजिए कि वो नजवत सिंह सिद्धू जो हैं पूरी दुनिया में टीवी प्रोग्राम्स के हवाले से भी जाने माने जाते हैं। ये उनकी अहलिया ने एक टीवी शो में बताया।
फिर आगे गिरा हुआ गेंद, ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए। थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अगर टेक्निकली बात की जाए, जो कि हम अगले ओवर में करेंगे। 497 पे 5 मुल्तान रीजन। 497 पर 5। पैच पे आ गए हो आप। पैच पे आए। अंदर फिर भी कुछ नहीं होगा बंदे ना लो। कासिम अकरम जारी रखेंगे अपनी बॉलिंग। मरीना, अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से मुल्तान आया 500 करने के बाद जो है वो इनिंग्स डिक्लेयर करने की तरफ जाएंगे, या 550 का हिस्सा उनके जहन में होगा कि अगर 20 विकेट्स इनके बॉलर्स ने हासिल करनी है तो फिर उनको इनफ टाइम भी देना होगा, वक्त दरकार होगा। बिल्कुल, अब जैन अब्बास के लिए सोचने की ये बात है कि डिक्लेरेशन तो वो हो सकता है अमूमन 5 पे तो नहीं, 550 रन करके शायद ले लें, लेकिन रिजल्ट किसी नतीजे की तरफ वो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आमिर यामीन भी उनके बॉलिंग अटैक में नहीं है। सिराजुद्दीन जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी वो भी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। माजिद अली मौजूद हैं, शायद महमूद पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहेगा। अली उस्मान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन पेस बॉलर्स में इमरान रंधावा मीडियम पेस कर सकते हैं। तो कोशिश और सोच ये होगी कि कैसे इन बॉलर्स को यूटिलाइज किया जाए कि जल्द अज जल्द लाहौर ब्लू की विकेट हासिल करें। यकीनी तौर पर जो थिंक टैंक है, कोचेज़ हैं, वो इस चीज़ को अपने जहन में मद्देनज़र रखते हैं कि यहाँ पर आउट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ कंटेन किया जाए, जिस तरह रमीज़ जूनियर ने कर दिखाया, मेहरान ने 5 विकेट्स हासिल की, तो ये ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी टीम मीटिंग्स के अंदर कि किस तरह से 20 विकेट्स हासिल कर। फिर दूर से खेला, चॉप ऑन हो सकता था लेकिन बच गए, और कासिम अकरम को इसी चीज़ का अफसोस है। 499 पे 5 मुल्तान रीजन। ये वाला चाइना वाला। हसीबुल्ला ने इस सीज़न की पहली सेंचुरी मुकम्मल की। जैन अब्बास की अच्छी फॉर्म है उनकी, इस सीज़न की दूसरी सेंचुरी। शरून ने बहुत ही अच्छे रन रेट पे खेल की सेंचुरी मुकम्मल की, और दूसरी सेंचुरी मोहम्मद बासित की इस सीज़न की। टाइम लिया शुरू में, फास्ट बॉलर्स के लिए वेट किया, स्पिनर्स को आड़े हाथों लेते हैं, बिल्कुल भी सेटल होने का मौका नहीं देते, और इस सरफेस पे शॉर्ट डिलीवरी ने भी कोई ख़ास मुश्किलात बनाई नहीं। जिस तरह स्लॉक स्वीप करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए, क्योंकि एक प्लान अटैक कर सकें। ये मुस्कुराहट इस चीज़ की अक्कासी करती है कि काफ़ी खुशी है इन्हें। और इस तरह की फॉर्म जब आपके पास हो तो ज़्यादा कैश करनी चाहिए, और जब आपके पास कज़ाफ़ी स्टेडियम आ जाए और यहाँ पे आप बड़ा स्कोर ना कर पाएँ तो आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मोहम्मद बासित ने नहीं किया। अभी भी टाइम मौजूद है इनके पास कि अपने पहला जो इन्होंने 150 की है उस रन से ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेलें। जी, सवाल फिर वही है कि आया आप 550 रन्स करने के बाद जब डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे, या फिर आप 600 का हिस्सा अपने जहन में रखेंगे। बिल्कुल सेट हैं, जहां उनको कोई लूज डिलीवरी मिलेगी उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थ्रू आउट द इनिंग्स हमने उनकी पूरी इनिंग्स में इस चीज़ का मुआयना भी किया, ऑब्जर्व किया कि जहां जहां गलती करते हैं बॉलर, वो उसके ऊपर उनको मार पड़ जाती है। बात कर रहे थे कि मुल्तान किस तरह रिजल्ट की तरफ जा सकता है, और आपने बात की कि कंसिस्टेंट बॉलिंग करानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाहौर ब्लूज़ को कोई ज़्यादा जल्दी होगी नहीं। काफ़ी बार गेंद था, और अगर एक ही जगह पे बॉलिंग कराई जाए और वो वहाँ पे अगर लीव भी करें या थोड़ी बहुत शॉट्स भी खेलें तो वो इस चीज़ से मुतमईन रहेंगे, क्योंकि उन्हें रिजल्ट की जल्दी नहीं है, वो अपने पॉइंट्स मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी बाहर गेंद था,
मज़ीद स्विंग होके गया। तो मुल्तान के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे प्लान के साथ आएँ जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं, जो लाइन ऑफ अटैक उनको विकेट दिलवा सकता है, बजाय इसके कि ड्रैग करें या कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे ब्लॉक करें। डॉट बॉल्स का प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि विकेट टेकिंग प्लान जो है वो लाना स्पेशली अब मुल्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा। जी हाँ, लकीर का फ़कीर नहीं रहना होगा, कुछ नया करना होगा। यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बहुत आसानियाँ हैं इस पिच में। और हमने देखा है कि जब भी बॉलर्स जो हैं वो बैटर्स के करीब गेंद करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो ड्राइव खेलने के लिए जाएं, वहाँ से एक मौका मिल सकता है। अभी भी आप देखिए जो वकास बॉलिंग कर रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ी आसानी से इसको मैनेज कर रहे हैं मोहम्मद बासित। उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं हो रही। बिल्कुल ज़रूरी है कि बैटर को आमादा किया जाए कि वो शॉट खेलें। फोर्थ और फिफ्थ स्टंप की हम अक्सर बात करते हैं। ये तो बहुत ही वाइड गेंद कर दी, वाइड दी जाएगी। स्लिप कॉर्डन है, उनको इंगेज करने के लिए बल्ले से कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है गेंद का। आमिर यामीन जो कि इस मैच में नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं आमिर। साथ उनके सिराजुद्दीन मौजूद हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और हमने देखा है पिछले मैचेस में सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अच्छी पेस के साथ एक कंसिस्टेंट लाइन इन लेंथ पे बल्लेबाजों को थोड़ा सा झटका ज़रूर दिया था। और आमिर यामीन ने अपने आप को ओवर टाइम बहुत अच्छा ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर में तब्दील किया है। स्पेशली वाइट बॉल में इम्पैक्ट अपना ज़रूर दिया है और काफ़ी नसार करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट में भी मुल्तान इन पे, जब इनकी जेन्युइन इन स्विंग डिलीवरीज हमें देखने को मिलती हैं। और बहुत ही हम्बल इंसान भी हैं, जब भी इनसे बात करें पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। एक रन हासिल करेंगे और कप्तान थे सेंट्रल पंजाब के, वनडे कप इन्होंने जितवाया। तो थिंकिंग क्रिकेटर ज़रूर हैं और हर वक्त सीखने की ताक में रहते हैं। 501 पे 5 मुल्तान रीजन। काफ़ी क्रीज में डीप खेलते हैं मोहम्मद बासित, इसलिए बहुत टाइम होता है। थोड़ा सा भी अगर शॉर्टर साइड पे गेंद हो तो उसको बैकफुट पे मैनेज कर लेते हैं, स्लॉक कर लेते हैं। रीच अच्छी है इनकी और किसी भी स्पिनर को डोमिनेट करने के लिए ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक आपके पास स्वीप होना, एक आपको एज ए बैटर क्रीज का इस्तेमाल करना, ये भी आना चाहिए। थोड़ा सा पेश आउटर एज था, लेकिन 2 रन की ताक में ज़रूर होंगे और 2 रन बन भी जाएंगे। और बार बार हम बात करते हैं, अगर इस सीज़न की बात की जाए, सरफराज अहमद बिल्कुल भी स्पिनर को सेटल नहीं होने देते। उनके पास रेंज ऑफ शॉट स्पिनर्स के खिलाफ बहुत है। जी, और यहाँ पर वो डबल सेंचुरी करने में भी कामयाब हुए। इस पिच पर जिस जिस बल्लेबाज ने हौसले से बैटिंग की है और गलतियां नहीं की, उस बल्लेबाज ने ज़्यादा रन्स किए हैं। अहमद शहजाद की जो डबल सेंचुरी थी उसमें भी काबिल दीद बात यही थी कि अहमद शहजाद अपनी नेचर से हट कर खेले। उनकी नेचर है तेज़ खेलते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने वक्त लिया और फिर एक लंबी इनिंग्स खेल गए। मेरा ख्याल है यहाँ आप जिस भी नेचर से खेले आपको रन्स मिल जाएंगे। नहीं मरीना, यहाँ पर जब भी बल्लेबाजों ने गलतियाँ की हैं वो फिर अपनी विकेट गंवा बैठे हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप मुझे तंग कर रही हैं। कैचेस भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ।
ये एक और एस्पेक्ट है लॉन्गर फॉर्मेट में, स्पेशली कंसंट्रेशन लेवल एज अ फील्डर रखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब कुछ हो ना रहा हो और आप एक लम्हा ऐसा आता है कि एक्सपेक्ट नहीं करते कि कैच या फील्डिंग आपकी तरफ आएगी। जी हाँ, और जैन अब्बास की सेंचुरी भी उन 2 ड्रॉप कैचेस की मरहून मिन्नत है। एक इमरान ने और एक हुसैन तलत ने ड्रॉप किया, फिर उसके साथ विकेट कीपर है। अब 130 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 506, 5 खिलाड़ियों के नुकसान। इमरान धावा अफसोस ज़रूर होगा इन्हें, क्योंकि इनके पास भी मौका था एक बड़ा स्कोर करने का, लेकिन गेंद इतनी छोटी थी नहीं जितना बैकफुट पे जाके खेल गए, एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए। आसान कैच नहीं बैठे शॉट मिड विकेट पे। बिल्कुल फील्डर्स का बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इस तरह की विकेट्स पे जहाँ सपोर्ट बॉलर्स को नहीं मिल रहा होता, अपने बॉलर्स को सपोर्ट करना, उठाना और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना। हाफ चांसेस को क्रिएट करना, अच्छा रन आउट, ये वो चीज़ें जो एकदम लिफ्ट कर देती हैं। इमरान रंधावा अच्छे प्लेयर हैं, ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में भी इन्होंने अपना मार्क बनाया और ये वो विकेट थी। कलाइयों का इस्तेमाल विप करने चले गए थे, इसलिए एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए, सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया। जी हाँ, कोशिश तो ये की थी कि वो मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से खेलें, लेकिन ये गेंद जो है उसने इतना ज़्यादा उसमें बाउंस नहीं था। और फिर वो अच्छा कैच भी लिया, तो जहाँ पर कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कुछ अच्छे कैचेस भी हुए हैं। अच्छे कैचेस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच को अच्छा कैच कह रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पे बिल्कुल सादा कैचेस गिराए जा रहे हों, पर इस तरह के कैचेस आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा मेरा ख्याल है इमरान रंधावा बहुत अंदर आने दिया बॉल को, आगे से पकड़ते तो शायद एलिवेशन हासिल कर भी पाते। ये अच्छी कॉरिडोर है, ये अच्छी लाइन है। मोहम्मद बासित के बल्ले का निशाना लेना ज़रूरी है, और एक ऐसे फील्डर जो मैं अक्सर बात करती हूँ कि पूरा दिन भी गुजर जाए लेकिन आपको वो एक्टिव नज़र आते हैं, एथलेटिक नज़र आते हैं फील्ड में, वो है तैयब ताहिर। वो पूरा दिन भी गुजर जाए तो भी आपको आखिरी गेंद पे भी वो अपनी एफर्ट करते नज़र आते हैं। तो ऐसे फील्डर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, स्पेशली जब बॉलर्स को सपोर्ट ना मिल रही हो। 1 रन बचाना, 2 रन बचाना, ये एंड ऑफ द डे में मानी रखते हैं। यॉर्कर की ताक में थे, इसको गाइड कर दिया डीप पॉइंट की पोजीशन पे। जी हाँ, जैसे पेशावर में साजिद हैं जो अपनी टीम को अलाइव रखते हैं, बातचीत उनकी जारी रहती है, बैटर्स को भी वो तंग करते रहते हैं, और ऐसे में विकेट कीपर का जो रोल होता है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल होता है कि विकेट के पीछे से तमाम खिलाड़ियों को बकअप करें। और माजी में हमने देखा कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती थी कि बल्लेबाज जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, फिर मोइन खान वो विकेट के पीछे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते थे, टीम को मोटिवेट करना, जगाए रखना। जुनेद लाहौर ब्लूज के कीपर हैं, आज कदरे बेहतर हैं, कल उनके दिल का जो हाल था वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन आज थोड़े ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी खाली की एक कीपर की नहीं होती, स्पेशली जो आपके बल्लेबाज के आसपास स्लिप कॉर्डन हो गया, ये शॉट कैचिंग पे जो होते हैं उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। अक्सर हमने देखा है कि उनके बोलने से भी बैटर थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता है। (507 पे 5) मुल्तान रीजन।
मुख्तलिफ कप्तानों के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं. अक्सर हमने ये भी देखा है कि अगर अच्छी पार्टनरशिप लग रही हो या रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हो बल्लेबाज, तो 1-2 ओवर के लिए एक शॉर्ट कैचेस या शॉर्ट लेग लाके खड़े कर देते हैं जो मुसलसल बल्लेबाज के कान में बोलता रहता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उनको थोड़ा सा अपनी गेम से ऑफ पुट करने के लिए, क्योंकि एक डिलीवरी चाहिए होती है बल्लेबाज को डिसमिस करने के लिए. तो मुख्तलिफ कैप्टन्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन इमरान भट्ट में हमने ज़्यादा देखा नहीं कि उन्होंने कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स आजमाए हों. सैन अब्बास जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं इस मामले में. जी मैं आपकी तवज्जो इसी तरफ दिलाने लगा था कि कप्तान भी जो है वो बिल्कुल एक ऐसी अप्रोच से सामने आए हैं कि और ये अपील ज़रूर हुई है और इसके साथ ही अंपायर का इशारा कि मोहम्मद बासित को वापस जाना होगा. इस दफ़ा गलती कर गए और ये वो चीज़ थी जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि बैटर जब खुद गलती करेगा तो फिर वो अपनी विकेट गंवाएगा. कासिम अकरम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. इस बात का मैंने जिक्र पहले भी किया था कि बहुत डीप जाके खेलते हैं, इसलिए आपको बहुत मोहतात होकर खेलना पड़ता है. बहुत अंदर गेंद को खेलने चले गए और कुछ ज़्यादा मुश्किलात हुई नहीं अंपायर के लिए और कासिम अकरम को रिवॉर्ड मिला अपनी बॉलिंग का. शानदार इनिंग्स इनकी. मोहम्मद बासित की दूसरी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की इस सीज़न की, लेकिन अब इन्हें वापस डगआउट लौटना पड़ेगा 105 बनाकर. 507 पे 6 मुल्तान रीजन. कासिम अकरम ने अच्छी बॉलिंग की आज, कंसिस्टेंटली टारगेट किया स्टंप्स को और इसी का रिवॉर्ड मिला. थोड़ा सा मोहतात होकर खेलना पड़ता है, स्पेशली ऐसे स्पिनर्स के खिलाफ जो थोड़ा तेज़ गेंद कर रहे हो, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी में कर रहे हो. फिर जब आप डीप जाते हैं क्रीज में तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बॉल को अंदर आने ना दें, थोड़ा आगे से पकड़ना होता है और यही गलती की मोहम्मद बासित ने. हालांकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते आए, कल शाम से हम ये देख रहे थे. और इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद जब आप एक ऑर्डिनरी गेंद पे आउट हो जाएं तो फिर दुख ज़रूर होता है. नए आने वाले बल्लेबाज अली उस्मान. यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ेंगी इमरान भट्ट को. अली उस्मान बैटिंग कर सकते हैं, एवरेज अच्छी है, 350 कर चुके हैं. अच्छी गेंद, स्टंप्स को टारगेट एक बार फिर किया और ये अप्रोच अच्छी है. लेग स्लिप भी मौजूद है, स्लिप मौजूद है, क्लोज इन फील्डर्स हैं काफ़ी. कोशिश यही करनी चाहिए इमरान भट्ट को कि अब यहाँ से मोमेंटम जो है वो वापस लाहौर ब्लूज की तरफ लाया जाए. जी अब कोशिश यही करनी चाहिए कि 550 रन ना करने दिए जाएं और ये बकिया जो 4 विकेट्स हैं ये जल्द अज जल्द हासिल करना है. थोड़ा सा एतमाद बहाल होगा. और जो एक मुल्तान सुल्तान का प्लान होगा, ये इस तरह आउट हुए थे. आई बेग यू पार्डन. मुल्तान का जो प्लान, ये गेंद फ्रंट फुट पे खेलनी चाहिए थी, लेकिन इसको बैक फुट पर चले गए और आसानी से अपनी विकेट गंवा दी. बहुत अंदर खेलने चले गए थे. पीएसएल में कमेंट्री के बाद आपको सिर्फ मुल्तान सुल्तान ही याद रहता है मरीना. 507 पे 6 मुल्तान रीजन.
फरहान भाई कैसे हैं ठीक है एंजॉय कर रहे Multan region, bat on. 507 for 6 at the moment. Still no signs of declaration from Multan side. We were hoping that once these youngsters get 100, Mohammad Basit got 100, Sharoon Siraj got 100. We were hoping that they might declare and try to make a match out of this, try to get a result out of this game, but doesn't seem to happen here at the moment. They're happy batting on. 132 overs. Maybe they're trying to frustrate Lahore region. I've got a person right next to me, Salman Bhatt, who will answer these questions for me. Salman, why are they still batting on? That's the question. Thank you, Ali. First thing first, I'm not answerable for what they intend to do. Secondly, yes, their approach is making it boring because they need to pick up points if they want to qualify or have an outside chance of qualifying for the top position in order to play the final. But this kind of approach means they've already accepted the fact that there isn't going to be any result. And if there is any outside chance, they're going to make sure it doesn't remain anymore. But if you talk about the possibilities, yes, one thing is for sure that they're not thinking about the result. Big shot. But straight to the man, not quite getting that elevation and the placement. Samayas. Salman, one thing, that's what you mentioned. I totally agree that they're not even thinking about it. But what could other options be? Are they looking to frustrate the hot bowlers? Are they looking to score that big that they can bowl them out twice? Well, I think they are looking not to field or to field for as less as possible, to bowl for as less as possible. That's what they're looking for. The Lahore has already been in the field for 132 overs now. They have conceded 508 runs. So if they wanted a result or something sort of match-winning result, they would have declared by now. Not the case. It just amazes me, the strategy of this game. I remember when Multan last came to Gaddafi Stadium, they were looking for a result. They were positive. They won the toss, batted first, played two spinners, but rain affected that game. But now the situation is different. It's desperate for them to win, but the plan not quite there to be winning the game. And they're just playing out time, giving the opportunities to somebody like Saim Ayaz, because I don't see a reason that Ali Usman was a left-arm spinner. He can bat. Where are they going? That's the question. Well, Ali, I know where they are going. They're going on. And they'll try their best to keep going on for as long as possible. And this has been the case in the last 3 games. If you see, the batting sides have tried their best to bat for 2 days, and even more if they possibly could. But by the end of the second day, most teams have gotten all out or they've lost all their wickets. But there hasn't been an intention of declaring with an intent to get the opposition out and in the end winning the game. And we know that how difficult it is to bowl our opponent out, even in one inning. Forget about 2 innings. 133 gone for 508 for 6. Well, had he been there in the side, the man on your left with sunglasses on, Siraj Khan, there could have been an opportunity, but I had a word with him in the morning. He was not feeling 100%. He had some niggle. That is why he's not included in this game. So maybe alongside Tahir Khan, Zahid Mahmood, Ali, Usman, they had a better unit as a bowling unit. They looked good in the last game. But that's not the case here in this game. Well, he's one of those who can produce express pace and can be effective regardless of how the pitch behaves. His pace is something natural gift for him, which he can utilize, but not the case in this game. He isn't playing.
Meanwhile, what we are having in front of us is just an effort to bat as long as possible. Yes, do it, do it, do it, do it, do it. कोई भी नहीं। Yes, yes, yes. जा। 2 runs easily taken. 510 is the total at the moment. Multan really frustrating. Lahore bowlers. Qasim Akram getting his 3rd wicket, but that too after bowling for 31 overs and giving away 131 runs. Wonder how much damage those drop chances have done. At the moment, what we are watching is aimless, lack of purpose, and just going through the motions. And this is something which is not a good sign in the midst of a competition. This is edged, it was wide outside the off stump, and now the fielder realizes that he has to run, there is nobody behind him. Meanwhile, the ball crosses the boundary, 4 it is, to Sam Ayaz, who wanted to cut it through the point region, got the desired result, not the area. Kashif Bhatti was the man. Later, realized it later that he could have stopped it, but the pace taking it away to his 3rd for 4. What are the milestones from here on? Maybe they're giving the opportunity to Saim Ayaz to get a 50. Well, Ali, you use the right word. It is just milestones from here on. And this is what makes this cricket. You know, the lack of interest comes because when this type of thinking prevails, where you're just looking to play as long as possible and you don't intend to win games. Edged right between the two. He will take 4 runs for that edge. Saim Ayaz being lucky this time. It was right between the wicketkeeper and the first slip. He's disappointed. Kashif Bhatti in slips. Imagine Kashif Bhatti being in the slips. What's the point? What is Imran Butt thinking? He has put his slowest fielder in a position which requires the quickest of reflexes. And he, when he fell to the ground, the ball had already crossed the rope. It's amazing field placement from the captain with no cricketing logic to back it up. Everyone has dropped a chance, so maybe they're giving Kashif Bhatti, you drop one too. But yes, I totally agree. You need your sharpest at slip. The best part is that he was still there. After letting it go, he was still there. That's the amazing part. End of the over, number 134, 518 for 6 Multan. Qasim Akram could have taken 4. Nearly got 1. But that ball went right between the two. I don't know, it was standing way wide, but it was hit squarer than he thought. Ali, you make another good point. To an off spinner, you don't stand that wide. So only a person who hardly could have ever been standing in the slips will have this angle. So this shows how much he knows about slip fielding. And there he is. But it has nothing to do with him because it's the captain's decision to place him wherever the captain wants. And it's amazing, Imran Butt, himself being a slip specialist, he has asked Kashif Bhatti to stand in the slips. Waqas will continue into his 18th over. 64 runs he's given. Well, we are back with the replay, and there we see Qasim Akram nicely tossing it up. And look at the fielder.
he's already assuming that it's going to be chest high, straight into his body, and it hasn't pitched so far. And he is in no position to make a move. It's just a reaction once the ball went past him. Oh, Imran Butt. What are you thinking about? Single taken by Ali Usman. He's off the mark. 519 for 6 at the moment as they bat on. Multan region. It's all smiles at the moment because they're in well commanding position in this game. Waqas from Cricket Centre, same club. Umar Akmal plays, Kamran Akmal plays, Adnan Akmal plays. Are they still playing there? I think Kamran is still. So there is a very experienced keeping coach, Bilal. Bilal Bhai is going through his routines with Hasibullah, trying to give him some different idea, or maybe giving him a tip of how he can improve his glove work. He's someone who has been coaching keepers for a long period of time, and there we see Hasibullah. And that's great to see youngsters learning from the experienced people. It's important because Hasibullah is one of the brightest wicketkeeper batter, upcoming wicketkeeper batter. It's important that he gets it right at this level, because once your base is made, then it's very good. It's very difficult to change it. So this is a good sign. Oh, I won't call it a good leave. Definitely won't call it a good leave. It was closer than he thought. Well, it was pitched way short, I believe, and that's why the batter let it go. I think it didn't bounce enough. Let's have a look at the replay. There you see, pitched really short. The bowler intended it to be much higher, but that's not a good technique at all. He's leaving the ball off the back foot without covering his stumps. In fact, you can see his middle and off very clearly. And he's lucky to survive this. And any young batters watching, this is not the way to do it. This looked good. Samiyaz scored lots of runs in inter-district cricket, and it's good to see Multan region valuing the performers of inter-district. I wish they could have given the opportunity to Farhan Sarfaraz also. He has scored lots of runs, more than Samiyaz in inter-district cricket. Yes, Ali. Farhan Sarfaraz averages over 100 in inter-district, and Sam averages half what Farhan Sarfaraz has been averaging. But he bats in the top order. Maybe Zain is scoring runs, the other top order batters are scoring runs, and maybe that's the reason that his opportunity has been delayed. Pulled, smashed. 4 runs for Samiyaz. He's getting comfortable at this level now. Scoring at some ease. Another boundary for him. Yes, I wonder what Waqas is complaining about, because this ball deserved to get hit like this. And you don't have a fielder there where it got hit in front of square between mid-wicket and mid-on. And I wonder what the complaint is. It was a poor ball, and the batter took full advantage of it. 135 gone, 523 for 6 Multan. Qasim Akram will continue. Wrong line. Runs, buys probably. 4 of them. Yep, buys given by the umpire. That's poor bowling. Poor line again, and it has been so frequent, this kind of bowling, where loose stuff has been offered free runs, and the batters, they have been, capitalizing on all opportunities, and this one
didn't even require the batter. 4 free runs. Off spin is one of the easier traits where you can have better controls. And for an off spinner to bowl like that, it's a crime. Yes, boy. Nothing really happening at the moment. Some excitement created by Qasim Akram. But really, it's so disappointing to see such a huge team, Lahore Blues, right at the top of the table. And I don't see anything happening from them either. I know we've been talking about Multan, but have a look at this for a body language. Everybody down, not interested, not focused even. Salman, what do you make of it? Well, I absolutely agree with you, Ali, and they just do not seem interested because the purpose is missing. The batting side want to bat for longer. Lahore don't want to bowl. And there is no likelihood of declaration in the near future. And simply there isn't any venom in the bowling that threatens the batting. No pace, no discipline, and intentions are to play for as long as possible. 136 gone, 528 Multan. '79 wickets. 4,750 runs have been made at Gaddafi Stadium. But that runs per wicket is too high. 60 runs per wicket. It's tough for the bowlers. Especially compared with the other venues, it is double almost every venue. There we see another lethargic short one. Very easily negotiated by the batter, Ali Usman. It's a very interesting graph that we just saw. I'd like to see it again and would want to compare what cricket is happening all around and Gaddafi Stadium. I really like Aptabad Stadium. It's such a great balance there. If you look at it, 174 wickets, runs per wicket very less. And then also runs being scored. 4,300 runs also being scored at the same venue where the maximum wickets have been taken. So that's what you want to see in domestic cricket. The balance between bat and ball. Yes, the same goes for Pindi Stadium as well. 141 wickets falling there. Most matches are giving results. It's just here. It's all right. Yes, the pitch hasn't been ideal, but the teams have not intended to get to a result as well. And it's just been get your batting points and just stay there for as long as possible, and which is not fair to the cause of getting full points. Absolutely, Salman. 100% I agree with you. It's not always about the conditions. It's not always about the pitches. It's off the back. It's off the back. You're not getting those, Vikas. Don't worry. Go back. So it's not never about the conditions only. We've been talking about it. It's about the skill level also. Indeed, it is. There we see the replay of the short one. Again, very poor technique of how to play a short ball. And he put his front foot wide as if he was getting ready to slog the ball. And then he took his eyes off. So he doesn't seem to be the compact player that we were looking for. Seeing his record in inter-district, he scored 500 plus runs at an average of 50. But the way he's batting against medium pace shows that compactness isn't there.
Oh, there's a chance. There's a chance. Direct throw was needed. But it has been a very poor day in the field. In fact, the match has been very poor from Lahore Blues as far as fielding is concerned. There was another opportunity for Qasim Akram to run the batter out, but direct throw was needed, not to be. Just confusion. They couldn't decide if they wanted a run. Decided very late. Qasim Akram recovered well. But all he needed to do was direct throw. It would have made things very interesting. Well, meanwhile, all that was happening, why didn't the keeper come to the stumps? This is also something that relates to game awareness. And there was loads of time over there to come to the stumps. And even if he was there, he would have easily taken the bails off. And Lahore Blues would have earned a wicket. But the keeper, he just stood his ground. Look at that. Look at that, the amount of time he took to recover. Then he threw. And look at where the keeper is. He's nowhere in the picture. So you can't do that. Poor boys. Poor boys. They've got former captain looking at their performances. Junaid, the man, yeah, rightly agreed with you. Game awareness was missing. So you've got somebody in the commentary box who's keeping an eye on you. A close one. So you better be on target. You better bring your A game here at Gaddafi Stadium. Otherwise, you will be criticized. 137 gone, 531 for 6. पानी के बगैर वाटर के 5 मिनट आए ना दे दे मैं नियामत को मशवरा दे दे मैं क्या 531 for 6. 34 for Saim Ayaz. Ali Usman still there for 4. Multan region bat on. No intentions of giving it away. I wonder what the state of the umpire's mind is at the moment. Because it's such kind of game going on where both teams are looking to spend time and preferably with the bat in hand. Both the umpires are making their debut. They've been good so far. They've given good decisions. They've remained vigilant. There we see. And this one again fired down the leg side, and batter takes full advantage. He just guides it towards the boundary, just gives it direction, uses the pace, and that was enough. No second invitation required for Ali Usman. Qasim Akram. This one fired down the leg side again. Every over there is something down the legs, which is in easy pickings. And batter just helping it along its way. Consistency is the key. If you want to bowl decently at Gaddafi Stadium, you have to have consistent line and length, which has been missing in most of the bowlers. And this one has been swept to square leg, where Hashim Ibrahim, who just made his debut in the last game, he fielded the ball. Hashim there in the picture. He scored 69 in his first class debut. Plays at Ghani Institute of Cricket. Very talented boy. And this one shot again and taken advantage of. Saim Ayaz is enjoying what is on offer from Qasim Akram, who looks tired now. He has bowled 34. Lahore have bowled 138.
And Multan, 540 for 6. Yeah, good time to bat for a youngster, for a debutant. He tried doing something different, Qasim Akram, but with that length, you're never going to succeed. It was easy picking for the batter. Waqas begins another over with a short one, which is guided towards fine leg for another single. And Sam is back on strike. And we saw Sam in the previous over that Waqas bowled. Sam had trouble against the short ball. And we shall see if the captain posts something close to short leg or a 45, just in anticipation of how Sam played in the previous over. But we see nothing happening in terms of a field change. In fact, we see a deep mid-wicket. Well, that's at least Waqas has just started to bend his back a bit. There we see, short one, and the batter wasn't that easy while letting it go. In the end, managing it. So Saim on his debut is on 38 of 46 balls, scoring at a decent rate. Better. Good follow-up delivery. After banging one shot, the next one right in the block hole. Waqas. He's been around for a while. Waqas, we've seen him play. He's from Sialkot originally, but plays his cricket here in Lahore. Well built, but somehow not enough pace behind him that can help him get wickets here at Gaddafi Stadium. Because we know that you need to be express. You need to have that pace to get wickets here at Gaddafi Stadium. My favorite spell still remains the Musa Khan spell. Full toss. That was some spell that he bowled last year. It was for Northern. 5 wickets it took. I think that is the best spell that I have seen here at Gaddafi Stadium in recent times. But that was pacey spell, full of fire and venom. Yeah, we can understand what you're going through, Ali. It's been a year since you've seen a spell Thank you. Thank you very as much. quick as Musa's spell in the last season. Well, he's quick, he's young, he's aggressive, he's good to watch when in rhythm. And meanwhile, another one goes over mid-on this time, and Saim accepts the short one and hits it for a 4 over mid-on. It's not working. This length is not working. He's playing at his own will. Look at that. You don't treat a fast bowler like this. Flat batted it right in front. Yes, correct. He's becoming predictable with the amount of short balls that he has bowled. Pace is not that great, so the batter has time.
Beautifully driven down the ground for another boundary. Fantastic batting as he continues to impress. 549 for 6. It's time for drinks. ड्रिंक्स ब्रेक का अख्ताम हुआ और इस वक्त सूरत हाल 549, 6 खिलाड़ी आउट। देखते हैं कि इससे पहले अभी तक हुआ क्या है। सेकंड सेशन जो कि सिर्फ रन ही दिखे हैं हमको और काफ़ी तेज़ रन्स बनाए गए हैं। इसमें साइम ने 46 बनाए हैं 50 गेंदों पे। काफ़ी ऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग जो है वो इतनी कोई अच्छी नज़र नहीं आई, कोई पेनिट्रेशन, कोई वेनम नहीं था उसमें और उसका फ़ायदा उठाया है साइम ने ख़ास तौर पे और इसकी वजह से ऑलमोस्ट 550 रन हो गए हैं। साइम भी अपने 50 रन से करीब पहुंच चुके हैं, 46 पर नॉट आउट हैं और अली उस्मान ने 10 रन बनाए हैं। आसिम अकरम ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेट्स हासिल किए। स्पिनर्स कहीं ना कहीं विकेट्स ले रहे हैं।
क्या कासिम अकरम भी उस रवायत को बरकरार रख पाएंगे कि 5 विकेट्स लेने की तरफ जाएं? इस तरह पिछले मैच में रमीज़ और मेहरान ने 5 विकेट्स लीं। इनके पास अच्छा मौका है, तक अच्छी लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है। बड़ा शॉट लगाया इस बार कासिम अकरम की गेंद पर, वेकेंट एरिया, काउ कॉर्नर, मिड विकेट, और इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल कर लिए साइम अयाज ने। 51 बॉल्स और डेब्यू पर 50 रन मुकम्मल किए और उस फहरिस्त में शामिल हो गए बैटर्स की जिन्होंने यहां पे रन्स का एक अंबार लगाया है। फ्लाइटेड डिलीवरी थी कासिम अकरम की, इसका भरपूर फायदा उठाया और इसको मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 4 रन्स के लिए। और ये इनका फातिहाना अंदाज, 50 रन मुकम्मल किए। स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था, बॉलर्स को आड़े हाथों लिया है। थोड़ी सी झिझक दिखी थी, अच्छा थ्रो अगर होता नॉन स्ट्राइकर पे तो बहुत चांसेस थे कि साइम रन आउट हो जाते। सिंगल लेते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट और थ्रो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा था। अली शफीक कि बिल्कुल ये अच्छी एफर्ट नहीं थी। कासिम अकरम भी इससे खुश नहीं हुए, काफ़ी दूर थ्रो, और अगर ये थ्रो सीधा होता कासिम अकरम की तरफ जाता तो यकीनी तौर पर एक विकेट यहाँ पर मिल सकती थी, रन आउट हो सकते थे। कासिम ने भी इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया। फिर से बड़ा शॉट और फिर से वही रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम 6 रन हासिल किए, अपॉर्चुनिटी मिस की, रन आउट की, और उसके बाद बैटर उसका दिल बड़ा हो जाता है जब नजर आ रहा होता है कि फील्डिंग साइड के जो है कंधे बिल्कुल और सर झुके हुए हैं। ओवर भी मुकम्मल हो गया, 563, 6 आउट। खेल सकते हैं, खेलेंगे। हुनैन शाह को वापस लेके आए हैं बॉलिंग में। 19 ओवर किए हैं, कामयाबी कोई नहीं मिली। एंड्स चेंज किए हैं हुनैन ने। पिछला स्पेल जो है वो पवेलियन एंड से कराया था, कल इस एंड से कर रहे थे गेंद हुनैन, लेकिन रिजल्ट अभी भी नहीं आया इनके बॉलिंग में। इनको विकेट अभी तक नहीं मिली। उसकी वजह ख़ास यही है, ये सिर्फ अकेले नहीं है। फास्ट बॉलर्स को अगर मजमूई तौर पे देखें तो उन्होंने कोई एक लेंथ या एक एंगल को पकड़ के बॉलिंग की नहीं है। बड़े एक्सपेरिमेंटल और वेवर्ड दिखाई दिए हैं सारे फास्ट बॉलर्स। नए बॉल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, पहले दूसरा दोनों नए बॉल ज़ाया किए लाहौर ब्लूज़ के फास्ट बॉलर्स ने। उसमें कुछ कसूर फील्डर्स का भी है कि इनका जो विकेट का कॉलम है वो खाली है। इसमें 2 विकेट्स इनकी हो सकती थी। आसान कैचेस गिरा दिए कप्तान इमरान भट्ट और हुसैन तलत ने। ओवरऑल इनका एग्रेशन बहुत अच्छा है, बाउंसर्स अच्छे किए हैं। अभी नौजवान हैं, सेकंड सीजन खेल रहे हैं। वक्त के साथ इनकी
कारकर्दगी में यकीनी तौर पर निखार आएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है यंग एज में, जो इनकी उम्र है उन्हें इनकी यहीं से डिसिप्लिन इंस्टिल किए जाते हैं, बॉलिंग डिसिप्लिन। अब शुरू से फ्लैम्बॉयंट ज़रूरी है, होनी चाहिए। फास्ट बॉलर्स में थोड़ा बहुत एग्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन बॉलिंग डिसिप्लिन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑफ कोर्स प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, लेकिन ये एक तरह से आपका ब्रीडिंग ग्राउंड भी है जहाँ पे आप अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि आपको हाईएस्ट लेवल पे कंपटीशन दिखता है बैटर्स की सूरत में, और फिर आप अपने आप को बिग स्टेज के लिए तैयार करते हैं। यहाँ कैजुअल एफर्ट अगर कहीं होगा तो वो फिर उसकी झलक दिखाई देगी डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे फिर ये कहीं आगे जाके T20 में सेलेक्ट हो जाएं, PSL में सेलेक्ट हो जाएं। नसीम शाह के छोटे भाई हैं ये, कहीं ना कहीं उनका जो डिसिप्लिन है वो इनमें आहिस्ता आहिस्ता दिखना चाहिए। बहुत आला अली भाई। जब इस प्लेटफॉर्म पर यंगस्टर्स जिस तरह हुनैन हैं, ये बॉलिंग करते हैं, यहाँ पर फिर कोचेस की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इन नौजवानों के साथ काम करते हैं, इनकी गलतियों के ऊपर इनकी गलतियों पर काम किया जाता है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइन और लेंथ और डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, तो इस पे यकीनी तौर पर जब ऐसी पिचेस बनती हैं जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ख़ास मदद नहीं होती, उससे भी थोड़े से हौसले पस्त होते हैं। पाँच सौ 565 पर 6। नहीं इधर आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ, एक मिनट चले जाए। इधर ही रखना है। काशिफ भट्टी 2 खिलाड़ी आउट किए 131 रन देके, उसे 131 रन को 42 ओवर्स में दिया है जो उन्होंने किए अभी तक। टर्न हो रहा है भट्टी भाई। यासर भाई स्क्रीन थोड़ी जितनी साजगार और अच्छी कंडीशंस बैटिंग के लिए हैं, उस पर टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग देना, शायद क्योंकि टेबल पे टॉप पर हैं लाहौर ब्लूज, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं अगर तो फाइनल पहुंच जाएंगे। वो 5 दिन का होगा ऑफ कोर्स। काशिफ भट्टी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। अब तक अली उस्मान कॉन्फिडेंट बैटिंग कर रहे हैं। अली उस्मान ने अच्छा साथ दिया है साइम अयाज का। साइम ने अपने पहले ही मैच में आज यहाँ पर 50 स्कोर किया। इस दफ़ा कदमों का इस्तेमाल किया और ये गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की जानिब 4 रन्स के लिए। थोड़ा सा ओवर पिच भी थी, और जिस तरह से कहा आपने कदमों का इस्तेमाल, तो अपनी लिए खुद की लेंथ क्रिएट की और इसको सीधा खेल दिया, क्योंकि डीप में फील्डर नहीं है तो आप ये चांस ले लेते हैं
पूरा नहीं भी लगा तो वेकेंट है वो एरिया। ओवर मुकम्मल हुआ, इसमें 4 रन आए, 569, 6 आउट। फिर से वही शॉर्टर लेंथ और वही रिजल्ट। ऐसी लेंथ कराएंगे तो ऑब्वियसली ऑन साइड पे आप रन्स खाने के लिए अपने आप को दावत दे रहे हैं, और वो कोई पेट्रोल या गार्डेड एरिया भी नहीं है। एक दफा फिर बहुत जबरदस्त पुल शॉट, कंट्रोल मिड विकेट की जानिब, बड़ा अच्छा टाइम किया इसको। ये बाउंसर कारगर साबित नहीं हो रहे हुनैन शाह के, और अयाज इनको बहुत अच्छा खेल रहे हैं। साइम अयाज अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट, खराब गेंद। 573 स्कोर हो गया है इस वक्त। कितना और खेलना चाहेगा मुल्तान रीजन, ये है कितनी ज्यादा और भूख है, क्योंकि इस तरह से अगर आप सेशंस को गॉबल और एग्जॉर्ब करते जाएंगे तो रिजल्ट तो बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा स्टेडियम से। अब तक के जितने मैचेस हुए हैं उसमें यही रहा है कि मैचेस जो हैं वो या तो कंप्लीट नहीं हुए बारिश की वजह से, या अगर हुए हैं तो रिजल्ट कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया। और इसमें थोड़ा सा इंटेंट होना चाहिए टीम्स को अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि वो कहाँ खड़े हैं। सेफ जोन्स ज़रूर हासिल किए जा सकते हैं अपने आप को मैच में बचाने के लिए, लेकिन यहाँ ज़्यादातर फोकस दिख रहा है कि अगर किसी तरह से कोई बोनस पॉइंट्स मिल जाए या कुछ हो जाए। बॉलिंग को तो शायद ना मिले, ऑल आउट बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, बट फिर जब फाइनल 5 दिन का होगा तो उसमें रिजल्ट आता है यूजुअली। वहाँ फिर आप अपने आप को एज ए टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर पाएंगे अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हैं। एक दफा फिर खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, और मजीद 4 रन हासिल किए। हुनैन ओवर पिच डिलीवरी, इसको शानदार तरीके से टाइम किया साइम अयाज ने। साइम 62 पर। इंतहाई ऑर्डिनरी बॉलिंग है, कहीं शॉर्ट है तो पुल करके 4 रन पड़ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ओवर पिच है, बॉल को रोक भी सकते थे, उसके रास्ते से ही हट गए और 4 और रन हासिल हो गए। तो यहाँ पे इस वक्त जो लाहौर ब्लूज का जो मोड नज़र आ रहा है वो ये है कि वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब मुल्तान रीजन खुद ही थक जाए और बोले कि अब हम बैटिंग कर चुके। इसमें जो कप्तान हैं इमरान भट्ट, उनका जो रोल है वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी है। बिल्कुल भी किसी जगह पर भी वो टीम को बकअप करते हुए नज़र नहीं आते हैं, और बिल्कुल खामोश ठहरे हैं स्लिप में।
ना तो कोई बॉलर के साथ बातचीत करते हुए नज़र आए किसी जगह पर, और ये एक बिल्कुल हारी हुई बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। यहाँ बैठ के सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीम क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है। 577, 6 खिलाड़ी आउट पे ये ओवर भी ख़त्म हुआ। इसको फिर यही कर लेते हैं। अगर बॉल जा रहा है कर सकते हो, करो, मुझे तो कोई मसला नहीं। टीम क्या सोच रही है और टीम का प्लान क्या है, डग आउट में थिंक टैंक क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं कप्तान। अगर फिर कोई भी कप्तान हो, चाहे सलमान हो या इमरान हो, सॉरी, या कोई और हो, अगर वो ये सहरा पहनना चाहता है कि उसको यहाँ बैठ के कमेंटेटर बोले कि इनके पास इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव दिख रही है, तो वो फिर ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है। वरना ये बार बार हम बात करते हैं कि बैटिंग कंडीशंस हैं, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, पिचेस जो हैं, और बिल्कुल कुछ ऑफर नहीं कहीं बॉलर्स के लिए। ये बॉलर्स भी तो सही जगह बॉल नहीं कर रहे हैं, कैचेस भी तो ड्रॉप हो रहे हैं। और अगर यही माइंडसेट से आप कोई मैच स्टार्ट करते हैं सोच के कि यहाँ तो रिजल्ट निकलता ही नहीं है, आई गेस फिर वही होगा जो आप सोच के आए होंगे, अनटिल आप कुछ नई चीज़ करना चाहें। जैसे कि मुल्तान की अगर हम बात करें, मुल्तान के लिए बड़ा फ़ायदा है अगर वो ये चांस लें कि इससे रिजल्ट निकले, वो थर्ड लास्ट नंबर पे। लेकिन अगर वो बैटिंग करते ही चले जाएंगे तो वो दिन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आज के बाद 2 दिन बाकी रह जाएंगे, 2 दिन और 1 सेशन का गेम बाकी है। So basically you become a creation of your own habits. जैसे आप होंगे वैसा झलक नजर आएगी। इस वक्त सिर्फ थ्रू द प्रोसीडिंग्स चल रहा है गेम, कि खुद ब खुद अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। एक क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा मुल्तान को, वो ये है कि जिस तरह से कल शाम का जो लास्ट सेशन था उससे लेके आज के तकरीबन लंच तक इन्होंने अच्छी फास्ट क्रिकेट खेली है। 5 से ऊपर उनकी स्कोरिंग की औसत रही है, जिससे एक्सेलरेशन भी मिली है टोटल स्कोर को जल्दी टाइम में। लेकिन उस एक्सेलरेशन का फ़ायदा भी उठाएं। अगर आज दूसरे दिन दूसरे सेशन में आप 500 कर चुके हैं तो दे दें दूसरे को बैटिंग। फिर आई कैन अंडरस्टैंड कि लाहौर ब्लूज़ तो ऑलरेडी टॉप पे है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। वहाँ आप अपनी बॉलिंग को टेस्ट करें, फील्ड पोजीशंस को टेस्ट करें, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिविजिट कर लें। 579 फॉर 6। पेशावर रीजन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 216 रन्स बनाए, और उसमें मोहम्मद अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, खुरम शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फैसलाबाद रीजन के इस वक्त 118 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। अली वकास 50 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, और फाटा भी लाहौर वाइट्स के ख़िलाफ़ जल्द आउट हो गई। उसमें अहमद बशीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। सो बाकी जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पर बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वहाँ पर मदद मिल रही है। इस दफ़ा हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की है हुनैन ने, और राउंड द स्टम्प्स आने का फ़ैसला किया है। सिकंदर भाई, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि कोई प्लान जो है वो थिंक टैंक की तरफ से नज़र नहीं आ रहा, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो यकीनी तौर पर आपके पास प्लान बी होगा। एक दफ़ा फिर ये बाउंसर डिलीवरी, शॉर्ट पिच डिलीवरी, इसी के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं हुनैन। और जो आप बात कर रहे थे कि उनकी बॉलिंग के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है कि एक लाइन को मेंटेन करें, या तो बहुत आगे बॉल करें या फिर शॉर्ट पिच डिलीवरीज करें।
मैं सिकंदर भाई बात कर रहा था कि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो फिर यकीनी तौर पर प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी भी आपके पास काम नहीं कर रहा तो प्लान सी होना चाहिए। लेकिन इस तरह से बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिए कि बस जिस जो होगा देखा जाएगा, इस वक्त ये हिकमत अमली चल रही है। देखिए प्लान्स तो ए बी सी जी तक हो सकते हैं किसी भी टीम के पास, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी तो करें। हमने देखा था कल इन्होंने पहले प्रिडोमिनेटली 6-3 की फील्ड ली, ऑन साइड की बाउंसर कराने की कोशिश की, एक प्लान है। फिर 6-3 इन्होंने ऑफ साइड की फील्ड ली और बोला फुलर लेंथ करें। लेकिन कप्तान का प्लान फील्ड पोजीशंस पे कारआमद तभी होगा जब आपका बॉलर आपके साथ सेम पेज पे है। अगर शॉर्टर बॉल करानी है और अच्छी जगह वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉल्स करानी है और नहीं कराएगा और आप सारे रन ऑफ साइड पे खा रहे होंगे तो फिर वो सारी फील्ड ऑफ पे ले आएगा। जब वो ऑफ पे ले आएगा और आप इन स्विंग के साथ मिडिल और लेग पे बॉल करके ऑन साइड पे सिंगल और चौके खा रहे होंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो रेगुलेशन फील्ड कर देगा, आधे इधर आधे उधर। अब भी हुनैन शाह के लिए 3 फील्डर्स, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग पर 3 फील्डर्स लिए। और प्लान यही है कि दोबारा से शॉर्ट पिच डिलीवरीज राउंड द स्टंप्स आकर साइम अयाज ने अच्छा जवाब दिया है, कुछ अच्छे पुल शॉट्स देखने को मिले हैं, तो यहाँ से कोई गलती करवाने की अब कोशिश करेंगे। एक दफा फिर हुनैन ये लगातार शॉर्ट पिच डिलीवरीज, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि साइम जिन्होंने पहले भी पुल शॉट खेले इस दफ़ा कोई गलती कर जाए। लेकिन अच्छा कंट्रोल दिखाया है साइम ने अब तक, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, खुलकर बैटिंग की है और जितने भी उनसे सवालात पूछे किसी भी बॉलर ने उसका भरपूर जवाब दिया। सिकंदर भाई जो आप तस्करा कर रहे थे कि जी तक प्लान हो सकता है, लेकिन प्लान ए बी और सी के बाद जो प्लान अब नजर आ रहा है वो बिल्कुल शिकस्त खुर्दा नजर आ रहे हैं इमरान बट और उनकी टीम के। बस क्योंकि बैटर्स अगर खुद गलती करेंगे तो विकेट देंगे और खुद इस वक्त वो बाउंड्री पर चले गए हैं इमरान बट, डीप मिड विकेट पर फील्डिंग के लिए। $579 for 6. एबटाबाद में फाटा की टीम 97 पर आउट हो गई और कर्टसी अहमद बशीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस वक्त लाहौर वाइट्स वहाँ पर बेहतर पोजीशन में है, 125 रन की लीड ली है। तैयब ताहिर 53 पर नॉट आउट है, इमरान डोगर ने भी वहाँ पर 50 स्कोर की है, आसिफ आफरीदी की 3 विकेट्स और समीन गुल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। तो एबटाबाद में लाहौर वाइट्स की टीम पहले बॉलिंग को एंजॉय कर रही थी, अब बल्लेबाजी का लुत्फ ले रही है। हम जब घड़ी देखते हैं तो इसके बाद आप तकरीबन आधा घंटा और दे दीजिए तो हम टी ब्रेक पे जाएंगे। वहाँ तक आई थिंक इनको अब
छोड़ देने चाहिए बैटिंग। 2 दिन और 1 सेशन और, यहाँ से आप हारते नहीं किसी, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा ज़रूर लगाना पड़ेगा कि जो बॉलिंग साइड है इस वक्त वो टेबल के टॉप पे है, उन्होंने तो चांस लेना ही नहीं है किसी किस्म का भी। तो क्यों ना फाइनल सेशन में आके गिरती हुई लाइट में थोड़ी बहुत कोशिश करें कि आप कुछ अवेल कर सकें। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, आई थिंक होगा यही, अगर तो ये सर्वाइव कर जाती हैं बाकी 4 विकेट्स के, आखिरी आधा घंटा देंगे। 580 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। Partnership brewing, 73 among these two. Saim already on 63, Ali Usman on 24. Has been a heavy scorecard with centuries. Zainab Asab, Hasibullah, Sharoon, and then Mohammad Basid. So nothing different there. Runs are inevitable on this surface. And to continue. He's the only pacer that has actually given some hope to Lahore Blues. He was very unlucky yesterday. Twice his edge was put down of Zain Abbas's bat. Saim Ayaz on 63. There has been a lot of talk what Multan can do, what Lahore Blues can do to extract anything out of it. Still struggling for answers. It's well left and well bowled. Multan doesn't seem like they're thinking about declaring. Salman Butt. Yes, there is absolutely no doubt about the intention. They make it very clear. The intent is to bat for as long as possible. Keep the home bowlers in. And then once they get out, the Lahore intends to bat for as long as possible. This is what makes the game purposeless. And it seems as if Multan has no intention of getting to the top of the points table, giving themselves a chance, get maybe into the finals. Because they had number 5 at the moment. Got all the remaining points from this game, but winning a game could give them 16 more. That is where the chances lie. He accepted that there isn't going to be any result to this game. Already on track. Wasted around 46 overs so far. बार-बार क्यों करते हैं? Yes, the intentions are very clear. Nobody wants a result here. The batting side just wants to go on for as long as possible. Lahore just going through the motions. And there we see everything is looking very lethargic at the moment. Usman, the left-arm spinner. Multan will also rely on him along with Zaid Mahmood. The two genuine spinners in operation probably for Multan. Then we come to their bowling attack. It's Majid Ali. Again, just really took off. But the question is, are these the wicket-taking deliveries? Or they're just testing Ali and Saim with short stuff?
Well, they're partially trying that something may happen, or maybe they're trying to force something, but it has been too easy for the batting side. The bowling has just not been consistent. A lot of times it has been purposeless, just going through the motions, providing so many free scoring opportunities to the batters that they haven't felt anything like pressure while batting. Because you have to build up pressure by bowling lots of dot balls, or maybe bowling to your field, a particular side of the wicket. But we haven't seen all that since this game started. Just a floater. Polar length in the slot. Gently dealt by Ali Osman. 147 overs gone. Multan region 582 for 6. If you put Imran Butt under a spotlight, you have to be critical about it. There are many questions you can ask about the tactics, the strategies, especially in terms of the field placement and the fielders he opted for the certain positions. Well, already your bowlers are struggling. These sort of errors can only make your day more difficult. Haven't seen any different tactic since this morning from Imran Butt. The waiting game is on for them. Yes, pretty much so. They have waited for Multan region to make all the moves so far. And whatever Imran Butt has put in terms of field placings, the bowlers have been unable to bowl to the specific plans. And himself at times, he has looked not interested in what's going on. At times we have seen him go to deep mid-wicket. At times he's standing on square leg, whereas his specialist position is slip, where he asked Kashif Bhatti to stand and the catch went by. So out of whole of the team, he asked a fielder who was least equipped to stand in the slips. Another single down to mid-off, trying to play it over cover, did not middle it, didn't get the desired placement or the timing. Nudging around, no single available. I'll have to ask, what is your stance of having different squads under different captains across formats? Well, again, it's about resources. If you have a wonderful captain who is an outstanding player and can be adaptable to all formats, then why not? It's better to have one. And if you have people who specialize in different things and adaptability isn't as required, then obviously you have no choice but to go for different captains and different squads. Some people think that it's the choices that spoil people for doing that. But limitations can also get you to a point where you have separate squads and separate captains. 148 gone, 583 for 6. नहीं टी के बाद मैं करूँगा 3 ओवर यार प्रॉमिस बस 3 तो 3 ही कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं भाई कप्तान ने कहा था 3 से ज़्यादा नहीं करने की And when we talk about different captains, in your regard, what are the major attributes for having a captain for white ball and for red balls separately that can stand out in appointing them? Well, talking about the bigger format, the most game aware and the most tactically switched on person is required for the bigger format, because you have to constantly make strategies and implement those, and then when there is no hurry for the batters, so everything that you do has to be done with precision. Whereas you come to the shorter format, what you see there is whatever you bowl, the batter has the license to go after it, and he is going to make sure that he tries different things, and in that
you get wickets, in that you get hit for runs, and a lot happens, and which is obviously, which you know is going to happen. That is, they're going to be positive, they're going to go after the bowlers, and the bowlers also know that. So all those variations become valuable because you know that the batter is going to come after you in search for big runs. So being a captain of a test match or a one-day cricket is much harder, much more tactical than being a T20 captain. The best and the top teams and the top captains in the world have done it across formats. Very recently, if you see, you will find out the best people, they are playing across formats, even as players and as captains. Imran Butt has now turned to Hashim Ibrahim. In dire need of wickets. Again, a partnership of 77 among these two is brewing. Tossed up. A little bit of turn, I guess. Hashim Ibrahim, the youngster who made his debut in the last game, scored 69. Here he is trying to give the ball a spin, and he gets some spin, flights it, leg spinner. Lahore now exploring new options. Good bowling. Dot to end the over. 5-8, 5 for 6, Multan region. Quite comfortable there. Ali Usman and Saim Ayaz. It's been another hard day for Lahore Blues. They have been given and provided an opportunity to wrap things up, but again haven't really capitalized on those windows. Gosh, have to continue. No setup has been seen whatsoever, even from Imran Butt or the bowlers. But leg spinners are such kind of bowlers who can be dangerous for the tail-enders because they have lots of variety. But what we have seen is reluctance to play leg spinners. And Lahore Blues had Usman Qadir in their squad to start with. And now, they didn't play him any game. That's one thing. And now he's not even part of the 15. So, it's another case of what we want to develop when it comes to cricket, when it comes to good wrist spin, and when also it comes to the potential that we can already see. But how do we take it to the maximum is by playing them in the longer format. But here we see him not getting a game even in the season. And this is something that needs to be answered by the relevant coach or the management. Because none of the spinners they have are even, likely to threaten the opposition over here. So why not have someone who can bowl a big leg break, has a googly, has international experience, and has some future for the Pakistan team as well. Just one coming off the over. 5-8, 6 for 6, Multan region. Especially when you compose your squad and even your 11, you do consider the venue you are playing against. And especially here at Gaddafi Stadium, we've seen bowlers having express pace and genuine spinners have been very effective. When we talk about Ramiz and even Mehran, they did get some support
but they were spinners who actually put and ball their heart out. Again, coming back to the point, when you have a genuine leg spinner, you can plan your innings, you can plan an attack against an opposition. No threat whatsoever. Easy singles available. Yes, and also we've seen that there has been reluctance to take the grass off the pitch as well. They haven't left it shaved because then it becomes more abrasive as the time goes on. And with the sunlight coming down and no grass on it, it might turn, it might take reverse swing, asks the batters to do something different, have some choice there for the bowlers as well. And when you comprise all this, better chances of getting a result. And also batters to adapt to different conditions at different days of the game. So we haven't seen that. The kind of grass covering that we have seen is mostly something which has kept the pitch really good throughout. It has been compact, the bounce hasn't varied that much, no big side movements of the ball that might threaten the batters. So it's basically been it's been about batting all the time. Keplo just whipped it into the onside. One theory is that most of these pitches haven't been used that much to bring out something out of it. Normally they are left alone. And then the need to keep that grass, to keep them compact. Last season we saw just 2 games being held here at Gaddafi Stadium. We'll talk about it. 592 for 6, Lahore, Multan region. Kashif Bhatti has been decent today. He struggled with his line and length yesterday, went for loads of runs. That was a floater. So I'm just again placing it for a single. No urgency either from Lahore Blues or from Multan region. Testing the defenses. Yeah, I don't see, except from that one slip, no one around the bat. And Usmani is on 30, but still you should be looking for wickets. Down the track, just a gentle push. Imran Butt can bring his fast bowlers back and maybe test both these batters with short stuff. But I'm not sure if his fast bowlers might respond to that or not. Well, it's already beyond 150 overs and all the bowlers must be tired now, especially when you go out and just go through the motions and there is not much of an aim. Then it's hard to bowl for as long and be in the field. It's 594 for Multan and still no signs where they don't want to, call a declaration. There are no signs that they want to actually call any declaration. There we see the dugout and the next batter has padded up. Not in the picture though over here, but we know that Zaid Mahmood has padded up.
594 for 6, Multan region. There was something going on between the keeper and Imran Butt. Junaid, I think he might have suggested something, but he was very reluctant. Zayed Mahmood all padded up, waiting for his turn to come out in the middle and get some runs against his name. He'll be eager to bowl here. Had one outing before this and he was very expensive. It will race away. No, it won't. It's been cut down by Waqas Ahmed. They're just waiting, you can tell by the body language. Just waiting for something to happen. Well, it's going to be long because there are no signs of any sort of declaration. There we see full toss this time. And Hashim trying his best to extract something from the pitch or from the batter. But they are just enjoying milking it to the deep fielders for easy ones. $108 runs were given by Zayed Mahmood in 27 overs. 2 wickets were taken. It's better than that. We've seen that at different venues, but this one, this is a nightmare for bowlers. Swept. In no hurry, the fielder just allowed the ball to arrive. Still no throw from the fielder as well. 599 for 6, Multan region. I hope he doesn't take the ball out of the ground. So Kashubhati is walking towards the bowling end, and maybe he thought that the captain would make a change, but Imran Butt says, no, you have to come and bowl and keep going. So there is absolutely pin drop silence in the field. In the last game, we at least saw the Peshawar boys make a lot of noise and get into engagement with the batters. Here, it's absolutely flat. Pin drop silence as if it's a classroom. Yeah, for a moment I thought the stump might be broken, but no. It's sheer silence out in the middle. When you talk about Peshawar, Sajid Khan was very animated. Abuzar, the keeper, was chirping. 600 up for Multan region. Still going strong. Simon 71, 36 on Ali Usman. They've scored 600 twice now in the history. He should be bowling. Haven't seen Hussain Talat. He's holding the ball, maybe begging his captain to give him an over. Well, at the moment, they're making sure that they don't have to bowl another over before tea. And the umpire is asking Kashubhati to continue his over, please. But Usman Salauddin is discussing something which has come to his mind after 600 runs have been scored. The clock is ticking. Finally, Hussain Talat has given Kashif the ball.
Another single. At least they're talking about something. Well, you know, the sad part is that there is going to be another over. There are still 3.5 minutes to go. And there we see again, Usman Salahuddin is in talks. And he's, I don't know, are they talking international affairs inside? Are they talking economy of the country? Or what's going on? We can see him smiling. And Usman Salahuddin is a very humorous character. For the first time in this game, I've seen him go and talk to the bowler. He's also having a word with the umpire, probably asking that, are we allowed to take bat from the batters? Maybe that's one way to stop scoring and start taking wickets. I guess the batter stopped this ball. He also wants another over. It's so deliberate. And I think the umpire has to have a word with the fielding side here. And there the batter now, he's getting impatient. He wants to face Kashif Bhatti. So 2 more to go and 2 minutes remain to the much desired tea break for the Lahore side. So my biggest question is how all of this cricket can be productive. Or am I being too ambitious to ask this question? Well, the question is valid, but the person you're asking has no authority over anything. So, but I agree with you, it can be more purposeful. The intention can be more productive. And teams can obviously try harder. And now we will see another fielding change. And that's brilliant. It's been 5 minutes since this over started. And Kashif Bhatti and his team have been laboring along, trying to make up different reasons for delaying this over, which just cannot be done in the way they are opting it. Sometime the same fielder goes back, sometime he comes up. And this time it's swept, and the fielder doesn't want to throw. So finally, they've got what they wanted. No more over before tea. 154 gone, 602, and it's tea. Imran Butt literally hauling his players out of the ground. Saim is well set on 72. Ali Usman. It's good partnership. 95 of 137. There's the session, just 1 wicket falling. They've scored with decent run rate, 3.97 that is. 29 overs have been bowled. They are in no hurry, Multan region. 602 runs for the loss of 6 wickets. Lahore Blues, they need a lot to think about. Nothing different there. Loads of runs. 4 centuries already been scored. Saim Ayaz on 72 is looking for another one. Ali Usman not out on 37.
Imran Rafiq and Imran Randhawa, the early dismissals for 14 and 16 respectively. Has been a sad story. Qasim Akram with 3, Kashif Bhatti with 2 and 1 for Ali Shafiq. But otherwise they have failed to create any impact or manage to set up the batters of Multan region. Well, the session began. They were well set, Mohammad Basit and Saim Ayaz. They went on scoring. Loose deliveries were being punished, and this one, Qasim Akram was rewarded with a wicket. Just trapped Mohammad Basit right in front. This was a chance. Just passed by Kashif Bhatti in slip, and then there was no looking back. Again, bad line, bad bowling. Shorter stuff was being pumped to the boundaries. Qasim had tried different things, but all went in vain. Boundaries kept raining, and that was his century, his half century. Again, struggle continued for Lahore Blues. The bowlers were clueless, so was the captain. Hunain Shah expressed his pace, but there was no ending to the score from Multan region. It's time for tea now. We'll join you on the other side.
Welcome back once again to the Gaddafi Stadium, Lahore, where it's Lahore Blues versus Multan region into the final session of day 2. 602 runs for the loss of 6. Runs galore, as mentioned earlier, second 200 opening partnership in this season, not by Multan only, first one by Lahore Whites. 114 from Sharoon Siraj and 100 from Mohammad Basit, and now down the order got Saim Ayaz on 72 not out. The wickets today, and this one, the batter tried to heave it over mid-off, didn't time it. This one taken at mid-wicket and pulling a ball which was fullish in length, easy decision for the umpire. Here's the bowling card for Lahore Blues, and not much successful side this. 3 for Qasim Akram in 35 overs and 2 for Kashif Bhatti, who bowled 49. Both spinners bowling the longest spells, the fast bowlers 20 each for Waqas and Ali Shafiq. Hoden Shah bowled 23 and he looked most likely to pick up wickets, but the chances he created were not accepted. Session 3 on day 2 will now begin as we see Saim 72, Ali 37. 602 for 6. Where is this heading? Has been the discussion since session 2 started. I was expecting that yesterday in session 3, when the run scoring increase over 5 and over, there is some sort of a plan Multan has in mind. Even this morning when they started off with the first session of the day, they were looking to score. Strike rotation, boundaries. But then 600 runs, and now are we going to look at something which is so by the book and typical that they'll give the last half an hour to bat before the end of the day's play with the dim light and XYZ? Well, you can hope for that, but we're not sure if even that's going to be the case, because Multan haven't looked like thinking about winning this game, and Lahore Blues for most of the time today have been just going through the motions. So this is now the highest ever runs that Multan region have scored, 610. Okay. The previous highest is 610 for 7, and they declared against Hyderabad way back in 2003 and 4. And now they are very close to achieving their highest ever, just 7 runs away. So you just mentioned that you're still not sure if they're going to even declare if these batters keep batting in this session as well. So honestly speaking, we're not trying to dissect or teach someone what to do, what not to do. What is the purpose? There's a purpose behind everything. I mean, even if you murder someone, there has to be a purpose behind it. That's the investigation. What is the reason? What is the motive? So when you're out there in the sun and you're batting 603 runs, you've got to be playing for something. Well, it's pretty clear that the both sides have assumed that the result isn't going to come. And they aren't even trying for that. We thought maybe Multan would look to get the maximum points that is possible to get from one game, and maybe look to get towards the top of the table, and then maybe have a chance, an outside chance of qualifying for the finals. But their batting in such length suggests that they have no intention of getting there. It's just that get the full batting points, avoid bowling for as long as possible. And for Lahore, yes, they must be thinking about the decision they took at the toss.
because they had spinners on before lunch on the first day. And that too as early as the 6th over. No, why I'm talking about 600 runs and all, because Multan region has more to play for in this match compared to Lahore, who's already on top for the table. So when you've got the decision to go off and come out with the ball, then what's stopping you? Well, again, if the purpose of playing this tournament is just to be one of the participants of it in the next year, then they are fine with their approach. But if they want to win it, then this is obviously not the approach that is going to get them there to the desired result. So this one has gone for 4, a very laboring effort from Waqas, who looks very tired, and it's been interesting again. You don't understand why Imran Butt keeps putting his bowlers into positions which require good athletes. We saw Kashif Bhatti in the slip for the spinner. Now we see Waqas in the covers. And himself, when these were the positions, he was fielding at deep mid-wicket. So again, no cricketing logic describes his decisions, especially his field placings. That's a good-looking drive. And the ball will win the race. Back-to-back boundaries here. Again, over-pitching. The fast bowling has been very ordinary. End of the over, we'll come back to that, is now the highest by Multan, 612 for 6. Slightly away. Slightly more. Time for Hussain Talat to bowl. He's going to come on from the pavilion end. And Hussain Talat today hasn't been part of the bowling action. And this is the first time in the day. He's only bowled 4 overs, given away 25 runs. And all that happened yesterday. Well, he's one of the experienced men in the team, supposed to be an all-rounder. Now we have a field which is packed on the offside. And let's see, for once, if the captain and the bowler are aligned. Drives this time a little to the left of mid-off fielder and might just go all the way, and it does. Hunain gives the chase, but it's got enough legs on it. Too wide from Hussain Talat, and he could freely outstretch his arms and throw the bat at it. So a third boundary in about, what, 7 deliveries? With the time going by, the pitch is becoming better and better. This was nowhere close to a half volley. Hit on the up, through the line. And that's been the beauty of this track for the batters.
You can just hit through the line. Once you are there for a good period of time, then you can bat as if you are batting on a concrete track. It's the first time that a 7th wicket has scored a 100 partnership in this season for any team. This time the width is there, and he's probably done exactly what any batter would do. Won't get him a boundary, but easy runs here. Well, one thing about placing fielders at certain distances is what you are intending to stop. Here, two fielders in the covers, they're neither going to stop a full-blooded boundary if it's in the gap, neither they're going to stop singles. So this is something that you need to know as a captain, where your fielders are. And there we see this time a run not taken, which was on offer. Yeah, from a distance you can call it a non-aggressive defensive field. I mean, you may feel that you've got a packed offside field, but rightly mentioned by you that the distance from the striker to that fielder is neither there to stop that single nor there to stop the boundary. Once the ball passes the fielder, there's no way he's going to win that race. So not even a 75 marker, which usually you would say. The fielder at backward point is at a 75 marker. Sometimes you don't completely depend on the captain. A smart fielder assesses what's happening on the pitch. Is it going to carry to me if I'm standing in a catching position? Do I need to move a step forward or just push myself back a little bit? This time on the onside. Yep, Hussain Talat was expensive. 4 overs, none for 25, and this over is no different. Yes, this is the 4th 50 for Ali Usman, and he has achieved that by playing according to his will. He moved towards the offside, and from that line outside the off stump, he placed it through mid-wicket for another boundary. 156 overs gone, 621 for Multan. $621 for 6. We were talking about field positions and how fielders also need to improvise what they can do individually. It's not about the captain who would probably use a geometry set and say exactly this is the distance you need to stand at. It was a very important discussion that was happening the other day. I was listening to it, where a fielder analyzes, especially if you're standing square of the wicket, what is the pitch doing. If it's getting stuck into the wicket, you'll stand squarer. And if it's sliding on, you'll probably stand behind the square. Similarly with the pull shot, if it's a express fast bowler and you see that the batter is going to attempt a pull, it will always go behind the square. Whereas a bowler with a lesser pace and his ball's a shorter one, high chance that the ball will be pulled in front of the square, or rather very square, like square leg position. Again, this is absolutely no worries and no disturbance at all for the batter. It sits nice and easy in front of your eye line. He pulls that. Yes, and he has been pulling regularly through that mid-wicket region for another boundary this time. And coming back to your assessment of the fielder, where he positions himself according to his own speed, his own reaction ability, and also what's happening on the pitch and how the batsman is going after the ball, it all has to do with the game awareness and involvement of the fielder himself. But here what we see is lack of interest, where the body language of the team seems as if they are waiting for the Multan region to call the shots, whether they want to bat, if they want to declare. It's just as if they're going through the motions and they're not interested and not thinking about creating anything different.
Another very important thing is, of course, the specialist positions in the field. These days, no position is just a hideout. Every position is important, but there are certain specialist positions: point, backward point, ball travels, comes quickly, spins away from you at times. There's also an interesting point that usually you see the wicket keepers, who are your makeshift wicket keepers, or you're playing an extra keeper in the 11, you make them stand square of the wicket in the field, in the deep, because usually you expect the keepers to move quicker sideways. You'll see Mohammad Haris fielding in the deep square, or sweeper cover. Since wicket keepers have a more rapid movement sideways, you hardly see wicket keepers who are in the side, not with the glove, standing at long on, long off. But then it also depends on the agility, and especially if you're thinking about sending somebody to the boundary, you need to know how good an arm he has, what kind of a throw he possesses, and that is very important these days, because you need to cut off the runs from the boundary. You need to have a strong arm to affect if there's any chance of a run out. Coming back to this game, yes, we have seen in specialist positions fielders who will hardly be effective in those positions. For example, Kashif Bhatti was in the slip. Then we saw Waqas fielding in the covers. And there was chances that were there in the slips while Kashif Bhatti was there. No, I totally agree. This is exactly what we're talking about. Good run taken. That these bits and pieces form a unit and a motivation and certain direction of which way the team is going. Even the batters, the smart batters. I mean, you've been out there in the topmost level of cricket. If you are playing a shot to a fielder towards cover, towards left or right, you probably would have seen who's standing where. If it's a left-arm thrower and if you play it to his right, you know that he's going to go around, collect the ball, and then throw. You have that enough space to take that single. There are lots of things which probably a viewer or someone who's a fan of cricket will be watching and thinking, why wasn't the single taken, or why was it taken? It's about the assessments the batter is making, wearing that helmet. He's looking around, who's standing where, who's got a stronger arm in the deep, who I can challenge, taking 2 or 3. If it's a big ground, square of the wicket, I've got enough pockets available where I can squeeze out more runs without hitting a boundary. Certainly there are fielders who, as batters, we have been discussing in the middle that where it's safer to run a couple run from, or take the extra run, or to look out for the extra run to certain fielders. And every team has them. And there we see shorter one, not bouncing enough, and even bouncing once more before the keeper. I hope he's fine. Looks okay. End of the over, number 157. Multan 6-7 for 6. Have you noticed,
in today's game, maybe yesterday as well, but especially in today, that the batters from Multan region have attempted to play every ball. I haven't seen anyone shouldering arms or letting one go outside the off stump. Even the one played earlier, he's stretched himself to put bat on it. Nothing to do with the game or strategies. It's just something I felt that I've not seen many. Yes, there's absolutely nothing happening off the pitch for the bowlers. And the batters, once they are set, it feels as if they are batting on a concrete. They just go through the line. Even if, like you said, they have to stretch their arms to the fullest, they've still been able to connect the bat with the ball and not edge it. It's just been that kind of a day, or many days till now, where batters have had it, I think, the best batting track of their lives, maybe. Gone through. Pass point, and that will be cut off by sweeper. There's the captain himself. What's he doing back there? Maybe he wants to be lonely for a bit, and he has taken that position where there is no one around him. There we see square driven. Should have been fielded this. Took a lot of time while coming down. And Imran but making up for the infielder. So runs flowing on Hussain Talat's bowling. What do you expect of the center pitch, the test match pitch for the final? What would it do in the 5 days? Would it be something, of course, will offer us a bit of both to the bowling and to the batting out there? And a stadium pitch is always different from a different ground, a club ground. That should be 4, and it, well, probably you'll have another look at it, but good attempt. From Hunain Shah, he has been one person in the field who has given it all. And Hussain Talat has been going for runs everywhere. There we see the replay. Again, it was far from being full length, but still driving through the line. And Hunain Shah diving and makes a clean stop there. No doubt about it. So now we see a field change. A fielder from the offside going towards the leg side will be stationed at mid-wicket, and we see a deep mid-wicket as well. And Hussain Talat now opting to bowl around the wicket. Going to try his luck on the shorter side. Coming back to the center pitch, this one that the teams are playing on now is closer to it. So I wonder if there would be any different in terms of behavior, because all the pitches that we have played on during this tournament have looked alike. There are 4 pitches in the center that are the main pitches which are used for international games. And this one is very close to them. So I wonder if there would be any different. Maybe the bowling quality also has to do a lot with what we have seen in the games. Ali Usman's 50 and a 100 partnership, first time in this season at the 7th wicket. Some big shots, some good looking drives from his bat, and he's shown some promise at that number where he's batting.
nicely keeping it down while attempting the pull shot, angling that bat towards the turf. Wow, that's good backing up. He's managed to stop it, but not a clean stop. That was a wild throw. Yeah, that's one way of taking out your frustration. Just aim for the batter, who had to come down all the way, laying on the ground to save himself. Hunain Shah, he's been working hard in the field, has been running around, putting all his efforts in. Steered to the third man, another single. So even this partnership where the number 7 and 8 are batting, it seems so simple for the batters. There is absolutely no challenge being presented to them. And the bowlers, they're looking flat. It's also to do a bit with the quality of fast bowlers Multan region is playing in this game. I mean, with all due respect to the bowlers who've been trying hard, but haven't seen anything in terms of challenge being created with the two new balls from Ali Shafiq or Waqas Ahmed. Wow, look at that shot. If you can pull the ball in front of the square in that manner, that means you are eyeing it well. And that also means that you don't have enough pace as a bowler to bowl that length. Yes, as soon as he middled that, he knew this one is going for a 6. Had lots of power behind this ball. There we see giving himself room and a good swing of the arms and middling it to perfection. Huge 6 over mid-wicket. When he came in to start with, when Waqas started to bowl short pitch to him, he struggled for a few balls. But since then, we have seen him get better and better against the short ball. And now he's hitting them for huge 6s, regardless of the fact that there are 3 fielders patrolling the boundary on the leg side. In the gap this time. We'll get a few more runs. You talk about the onside field, there's no one near to the bat. You've got a deep fine leg, a deep square leg, a deep mid-wicket, and then you've got 2 more fielders at a cow corner, wideish mid-wicket, and well, I don't call it long on. They're both at halfway through, say a 75 marker. Now one is coming in at mid-wicket. It's just very strange. What are they looking at? Are they inviting him to pull and attempt something? There you go, shorter ball. Well, I just fear that Ali Shafiq doesn't have that pace. If he's going to be hit of a shorter one, it's bound to go out rather than land in someone's hand. Well, perhaps not many choices in terms of pace for Imran Butt, but the plan can be better. Rather than bouncing them out, he can bowl good lines, good lengths, and be patient with that. Both the batters putting up a partnership, record partnership at this number. And 94, Saimez on his debut. And there are the coaches, Quaid-e-Azam, Tausif Ahmed, and Muhammad Ashraf. Tausif Ahmed has now been included again, this time pulling that one. He makes sure he doesn't play it in the air. He's now the selector for both junior and senior side. And recently he was on the same flight when I came in. He's going to be here and around the NCA and watching the proceedings of this particular match and the tournament. Well, it's good to have the selectors around, so the bowlers chance to do well and then also get noted by the people who matter. 159 gone, 644 for 6 Multan.
He's trying to get to his 100 as quick as possible. It's been stopped here. Now different things are being tried. Talat now coming round the wicket to the right-hander, just trying to create that angle, not to allow him enough space to actually commanding what situation. It's just the way that you think about in different situations. The same ball, you won't care if you're not that close to a bigger milestone. It's just the way that you think when you approach 100. But Saim, he hasn't been that careful. He has been swinging his bat regardless of the fact that he's on debut and is on 96. I hear that he scored a lot of runs on the back of that. 500 runs in inter-district, and he's showing glimpses of that in his first outing here at the Quaid-e-Azam Trophy, where he's 4 away from a maiden 100. I wonder what the selectors were made of, will make up of these hundreds that have been scored here at the Gaddafi Stadium. I'll tell you. That would be nice. If you would say, not by looking how he's batting, if you're talking about the paper, you say, fine, there's a boy who scored 100 on debut, but then you say there are 4 more hundreds in the same batting. And there are 5 in the previous innings as well. So then you say, okay, what was the challenge out there then? And he's batting, I don't know where he actually bats, because to be batting at this number and being a specialist batter is very strange. And Karachi region also scored 500s in one innings that they played over here. So this is the second time in the season that we are going to witness, if he gets to his 100, 500s second time in 3 games in one innings. It's a no ball, and it's been collected in the deep, so just a single. And the no ball signal. So yeah, okay, I'll take your opinion. So when you look at just the end of the over, we'll just come back to that, 649 for 6. That if you were to find out who's done well, and especially the debutant at 97 right now, I hope he gets his 100. What will be your criteria of looking into someone for the future when you see so many hundreds in? Well, it would be interesting to see that when these very boys who have scored big hundreds over here, when they move out to other venues, how they have done over there. And then you can engage and, compare what sort of adaptability that they have. Were they scoring big only over here? Or when they moved outside, they were playing innings which were required by their team or which helped their team get to a certain position or win them games. So because so many hundreds have been scored here, so it's not easy to evaluate because the bowling sides haven't had great time in any of the games. And I wonder what the record books would have said if 2 matches were not rained off. It is much like the numbers that we saw of examination while there was period where COVID was there and everybody was assessed, and then we had so many, I think, record numbers who took full marks in board examinations. So this is 650 now for Multan region.
And our statistician tells us that it's the 7th highest runs scored in an innings here at the Gaddafi Stadium. Well, Saim is on strike, and he's only 3 away, a stroke away from his 100 on debut. And it will be interesting to see. He hasn't held back, even when he's been closing in to this first 100. And he hits that into the sky. It clears the boundary at will. And it's 100, maiden 100 for Saim. So there you have your answer. The way Sam approached his 100 is entirely different to what normally people would do. So he went for the big one, connected well, and he's now thanking God that he has achieved this milestone on debut. He scored 100, and he hasn't missed out on this batting paradise where everybody or most of the batters have had great time this season. He had to hit that. The pace and again that length. He's been trying to bowl that shorter one. He's hitting him at will. What a way to get to a maiden 100. He'll remember this one with a maximum. It's strange. The bowling doesn't want to get them out. The batters don't want to give up. So we just keep going. It's infinity. This could go on forever. It's like you have in street cricket. My bat, I'll bat first and I'll bat as long as I want. Once I'm done, I'm going home. Also the fact that you win a toss at Gaddafi Stadium, Lahore, please do not opt to bowl. Any captain who has opted to bowl here has been in the field for nearly 2 days every time. And on top of that, they've missed chances. So they cannot totally blame the pitch for that. The fielding hasn't been great. The bowling has been offline, offering a lot of loose stuff for the batters. Do you think that we'll have a half a century of hundreds by the end of the season? We're already at 3600. 14 more. Well, the rate that we are going at, 5 per innings, we can be, more than that. And this one, long way over his head. And I wondered if that was given a wide. No? How come? Another short ball, another pull. Single, 658 for 6. पे मुल्तान रीजन भरमार लगी हुई है सेंचुरीज की ज़ैन अब्बास हसीबुल्लाह सरून मोहम्मद बासिद और साइम अयूब
साइम अयूब की आदत हो गई हमें। अली उस्मान भी 40 रन दूर पे। ये मोस्ट सेंचुरीज इन इनिंग्स क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी अगर आप देखें रिकॉर्ड बन गया। मुल्तान टॉप पे आ गया लाहौर ब्लूज के खिलाफ, 500 कर दिए। 5 हमने कराची वाइट्स के भी देखे थे इसी वेन्यू पे इसी सीजन में लाहौर वाइट्स के खिलाफ। और मुल्तान 6 सेंचुरीज करने के बहुत करीब है, सिर्फ 40 रन की दूरी पे। अगर अली उस्मान कर जाते अपनी सेंचुरी। रन्स नहीं रुकते हैं यहाँ पे, विकेटें भी नहीं मिल रही और बॉलिंग जो है वो बरकरार है। कद्दाफी स्टेडियम में सेंचुरियों की घन गरज जारी है और लेकिन आपके डेब्यू में आप जब सेंचुरी करें, कैसे भी कंडीशंस हो, जो भी ग्राउंड हो, बल्लेबाज को क्रेडिट जाता है। उसने वहाँ पर हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और डटे रहे। तो साइम अयाज यकीनी तौर पर उनके लिए एक बड़ा मैच बन गया। स्लो वन हुसैन तलत की जानिब से। ज़्यादा बॉलिंग देखने को मिली नहीं थी, आज पूरा दिन भी नहीं की। कल सिर्फ 4 ओवर किए थे 8वें ओवर में अपने। यहाँ पे सिर्फ यही बात की जा सकती कि अगर कोई बल्लेबाज सेंचुरी के पहले आउट होता है तो जाहिर अफसोस बहुत ज़्यादा रहेगा और आप सिर्फ उन्हीं को गलत ठहरा सकते हैं, क्योंकि बॉलर बहुत मुश्किलों से हमने अभी तक देखा होगा 1 या 2 बार बॉलर आउट कर पाया किसी बल्लेबाज को, वरना तो गलत शॉट से ही ज़्यादातर यहाँ आउट होते देखे हमने। लेकिन मरीना, अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बल्लेबाजों ने इतने रन्स बोर्ड पर सजा दिए हैं, अगर वो फतह हासिल नहीं कर पाते तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। यकीनी तौर पर आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, टीम के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा रन्स बनाने के बाद फतह की जानिब नहीं जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं दिफाई सोच कहलाई जाएगी। शॉर्ट पिच डिलीवरी की फील्ड ली है, जाने दिया क्रॉस एंगल पे। हुसैन तलत ने बॉल कराया था और 1 ऑफ द ओवर भी कॉल हो गया। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस वेन्यू पे आके ज़्यादातर कप्तान, वो एक कहावत है कि जैसा देश वैसा भेस, वही मेंटालिटी आ रही है यहाँ पे। इनफरादी तौर पे रन्स हो रहे हैं, माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं, टीम के तौर पे भी। बाउंड्री से बाहर है इमरान बट, शायद बाहर वाले से कोई डिस्कशन कर रहे हैं कि वहाँ से कोई तरीका मिल जाए विकेट हासिल करने की। अच्छा क्विक सिंगल। अभी भी फील्डर्स को टोस पे रखा हुआ है अली उस्मान और साइम अयाज ने। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और खेलते ही 1 की कॉल थी दोनों बैटर्स ने। साइम अयाज ने भी बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और जिस तरह से उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, वो एक शानदार स्टाइल था। एक दफ़ा फिर सॉफ्ट हैंड से खेले और यहाँ पर फील्डर थोड़ा सा चूक गए, कलेक्ट नहीं कर पाए। जिस तरह से सेंचुरी मुकम्मल की मरीना साइम ने, 3 फील्डर जो हैं वो बाउंड्री पर थे, डीप मिड विकेट। कासिम अकरम इस वक्त अपनी एफर्ट से खुश नज़र नहीं आ रहे। बॉल लगी है, नज़र बॉल पे थी नहीं, हो सकता है कि उंगली पे थोड़ा सा हिट किया वो बॉल ने। नज़रें हटा ली थी क्योंकि रन आउट की ताक में थे। एक अच्छा रन आउट चाहिए लाहौर ब्लूज़ को, थोड़ी अच्छी एफर्ट करें कैचेस के लिए भी। स्लो वन पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं हुसैन तलत, इस बार सिंगल नहीं चुराने देंगे।
660 पे 6 मुल्तान रीजन। एक 153 की पार्टनरशिप अली उस्मान साइम अयाज। पार्टनरशिप्स भी जोरों शोर से नजर आई हमें यहाँ पे। ये चारियाना बैटिंग नजर आई है, वो चांसेस हैं जो लाहौर ब्लूज को लेने चाहिए थे। साइम अयाज ने चारियाना बैटिंग की भरपूर फ़ायदा उठाया अपनी सेंचुरी के लिए। अच्छा सेट हो गए थे उसके बाद, बहुत ही चारियाना बैटिंग की। किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पे देखा है कि रुके नहीं है अपनी शॉट्स खेलने से। ये शानदार स्ट्रेट ड्राइव थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी ने बिल्कुल भी किसी मुश्किल में नहीं डाला और इस तरीके से 6 रन्स के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। मेड इन सेंचुरी इनकी, बहुत खुश होंगे और इस फॉर्म को कैरी करना चाहेंगे। सेंचुरी ऑन डेब्यूज की लिस्ट में इनका नाम भी आ गया। मुबस्सिर खान, मोहम्मद बासित जिन्होंने आज एक और सेंचुरी बनाई, 150 इन्होंने फाटा के खिलाफ बनाई थी। अब्दुल्ला शफीक और सलमान खान जूनियर इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक थे, जिन्होंने कल श्रीलंका के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में एक शानदार सेंचुरी की। यहाँ पर आज जब साइम अयाज ने सेंचुरी की है तो उस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। ये फिर आपकी यादें होती हैं, और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो ये रिकॉर्ड जो है ये आपकी बेहतरीन कारकर्दगी की अक्कासी करता है। अब्दुल्ला शफीक ने 2020 में T20 डेब्यू पे भी सेंचुरी की थी, जिस तरह की कल महारत के साथ उन्होंने इनिंग्स खेली है, उस चीज़ की अक्कासी करती है कि टेम्परामेंट, टेक्निक और मैच्योरिटी तीनों चीज़ें उनके पास हैं। वाइड बॉल में इस तरह की टेक्निकल बैटर्स का होना और इतने लंबे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करना, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, मिडिल कर नहीं पाए, लेकिन नतीजा जो हासिल करना चाह रहे थे वो मिल जाएगा। 4 रन्स के लिए खेल दिया मिड विकेट पे। अली उस्मान भी अपने बाकी टीममेट्स के नक्शे कदम पर इस दफ़ा इसको मिड विकेट के ऊपर से खेला और 4 रन हासिल किए। उनकी भी पेशकदमी जारी है कि वो भी सेंचुरी कर लें यहाँ पर। थोड़ा सा गेंद नीचे रहा। 5 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है एक इनिंग्स में, जो मुल्तान ने अब भी अचीव किया और कराची वाइट्स के पास पहले से भी था। मैं ख्याल है यही कहना सही है कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं। अली उस्मान इस ताक में ज़रूर होंगे कि 6ठी सेंचुरी करके ये एक और रिकॉर्ड कायम कर दें। बहुत ही अच्छे तरीके से खेला इसको। काशिफ भट्टी की ज़्यादा फ्लाइट देते नज़र नहीं आए, इस बात को डिस्कस करेंगे। 6 का हिंसा मुल्तान रीजन की आगे।
666 पे 6 मुल्तान रीजन। काशिफ भट्टी की मैं बात कर रही थी, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी लाहौर ब्लूज को उनसे। थोड़ा आएंगे यार, हैं थोड़ी एफर्ट करेंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी यार हैं। ज़्यादा फ्लाइट से बॉल करते नज़र नहीं आए, जिस तरह की उम्मीद थी लाहौर ब्लूज को। ज़्यादा विकेट्स हासिल करने की तरफ जा सकते थे, लेकिन बहुत तेज़ गेंद किए। हुसैन तलत कंटिन्यू करेंगे। देखा नहीं कि फ्लाइट के साथ थोड़ी सी वेरिएशन कर रहे हैं या थोड़ा सा परचेज हासिल करने की कोशिश करें पिच से। साइम अयाज की जो सेंचुरी हुई है उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली। इस दफा अच्छी गेंद थी, मरीना ये दूर से खेल गए और इशारा कर रहे हैं कि वो थर्ड मैन की जानिब इसको गाइड करना चाह रहे थे। अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी लेंथ पे, फ्रंट फुट पे रह के ही थर्ड मैन खेलना चाह रहे थे, लेकिन लेट हो गए। ज़्यादा पेस ऑफर करते नहीं हुसैन तलत, इसलिए इसको अगर गाइड भी करेंगे तो बाउंड्री मिल नहीं सकेगी, शायद ट्रेवल ना कर पाए। तो ये शॉट सिलेक्शन पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस पेसर के खिलाफ, किस बॉलर के खिलाफ आप कौन सी शॉट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मौजूद है शॉर्ट पिच के लिए, ज़्यादा थ्रेटनिंग पेस है नहीं हुसैन तलत की। साइम ने 70 रन्स बाउंड्री से किए हैं, 13 चौके और 3 छक्के। और जो आखिरी छक्का था जब साइम 97 पर नॉट आउट थे, 97 पर, तो उस वक्त काबिल दीद चीज़ ये थी कि 3 फील्डर्स डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और उसके साथ डीप स्क्वायर लेग पर 3 फील्डर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तीनों को बीट किया और छक्का लगाया। इससे इस बात का एहसास होता है कि उनका जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, वो आसमान से बातें कर रहा है। उनको अपने शॉट पर यकीन था। अमूमी तौर पर पहला मैच हो, 97 पर बल्लेबाज हो, वो इस तरह के, ये वो शॉट थी जिससे इनके जज्बात और इनकी बहादुरी की दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, और इनकी पूरी इनिंग्स में कोई भी मैंने मिस क्यूट शॉट देखा नहीं, जो भी देखा बल्ले के बीचों बीच नज़र आया खेलते हुए। और ये एंगल बन भी गया था आसानी से, इन्होंने अगला कदम जो है उसको क्लियर किया था, और ये बहुत ही आइडियल हाइट पे मिल गई थी इन्हें गेंद। जब इतना कॉन्फिडेंस हो, पूरा दिन आप मिडल कर रहे हो, ये देखें। और ये वो बाउंसर नहीं थे कि तेज़ सरफेस से निकले, ये वो बाउंसर था थोड़ा सा सरफेस पे लग के स्लो हुआ था, इसलिए बहुत टाइम मिल गया था इन्हें ये शॉट खेलने के लिए। और जब आवाज़ आई थी उसी टाइम अंदाज़ा हो गया था कि ये बाउंड्री के पार ही जाएगा। कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन कारआमद साबित हो नहीं रहा। पुल शॉट की बात हो तो फिर आप रिकी पोंटिंग का तस्करा ना करें, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक ऐसे बल्लेबाज जो फ्रंट फुट के ऊपर बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाते थे। और अज़हर महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि एक दफ़ा मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इनको मिस टाइम करवाऊँ। मैंने डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग पर 2 फील्डर्स देखकर मैंने शॉर्ट पिच डिलीवरी की, और नतीजा ये हुआ कि बॉल जो है वो क्राउड में चली गई। लाजवाब पुल लगाते थे। बिल्कुल क्विक हैंड्स थे उनके। जब उनसे बात हुई थी वो यही कहते कि मॉडर्न डे में एडजस्ट करने के लिए इतना टाइम होता नहीं, स्पेशली अब जितने तेज़ गेंद करने वाले बॉलर्स आ गए कि आप पहले बैक फुट पे जाएं और फिर पुल करें, इसलिए फ्रंट फुट से ही वो उठा देते थे।
668 पे 6 मुल्तान रीजन। फुल शॉट्स में केविन पीटरसन भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने एक टाइम पे आके मॉडर्न डे बैटिंग की एक नई रीत रखी। मैं सोच रहा 2 ओवर में भी छोड़ दिया। उन जैसा फ्लिक भी मैंने बहुत कम देखा, और जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी वो मेरे आइडल थे। इसलिए अगर आपने कभी मेरी बैटिंग देखी हो, मेरा फ्लिक, एक्स्ट्रा कवर, उनकी उसमें झलक नजर आती है। उनका खड़े खड़े खेला है साइम अयाज ने। जिस तरह शेन वॉर्न के अगेंस्ट उन्होंने हरबा अपनाया था कि निकल के लाइन कवर करके वो ऑन की तरफ खेलते थे, कुछ घबराहट जरूर हुई थी शेन वॉर्न को भी उनके खिलाफ खेलते हुए। आसानी से रन्स बन रहे हैं, बिल्कुल भी कोई मुश्किल का सामना नहीं है अली उस्मान या साइम अयाज को। ये पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। लाहौर ब्लूज भी किसी जल्दी में नहीं लग रहा। आदत हो गई है 600-700 रन की हमें अब। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। यहाँ बल्लेबाज बिल्कुल आसानी से रन्स बना पाएं, सेंचुरीज बना पाएं और बॉलर्स जो बेबस नजर आए। ये क्या वजह है कि जो बाकी दूसरे वेन्यूज़ हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा विकेट्स हासिल कर रहे हैं बॉलर्स। गद्दाफी स्टेडियम की पिच में वो मदद मौजूद नहीं है बॉलर्स के लिए। आया क्या ये सिर्फ मौसम की वजह से ही है या पिच में भी जो है, या सिर्फ ये कि जो ग्राउंड स्टाफ है वो पिचेस ऐसे ही तैयार कर रहा है कि जो सिर्फ बल्लेबाजों के लिए उसमें मदद हो। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच हो, एबटाबाद, शुएब अख्तर स्टेडियम, सभी जगह जो है वो हमें मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजों के लिए भी मदद है, बॉलर्स के लिए भी मदद है, स्पिनर्स के लिए भी है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी। छः 672 पे 6 मुल्तान रीजन। देखिए इसमें शक कोई नहीं है कि बाकी वेन्यूज़ हम इस पे बात करेंगे। एक बार फिर ये स्टैट आपके सामने शेयर करते हैं। मोस्ट सेंचुरीज इन एन इनिंग्स मुल्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद कराची वाइट्स। दोनों ने एक इनिंग्स में 500 कंप्लीट किए हैं और दोनों ही कज़ाफ़ी स्टेडियम पे इस सीज़न के। मुल्तान जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, अली उस्मान तकरीबन 70 पे पहुंच गए। हो सकता है कि 6 सेंचुरीज हासिल करने में कामयाब हो जाए मुल्तान। ये एक और रिकॉर्ड होगा इनके नाम। ड्रिंक्स ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं।
Welcome back after the drinks break here at the Gaddafi Stadium, Lahore. If you ever want to score 100, come and join us here. This is the final session on day 2. And we've seen some half opportunities, some good shots. Pull shot has been the pick of stroke from Saim Ayaz in his maiden 100. 108 not out here. Of 120, he's targeted a lot of mid-wicket area because short ball strategy was deployed against him. Some good straight dives. So much to trust in terms of bounce, in terms of the track that is on offer, that the batters are coming and piling on runs one after another. And why not from the debutant Saim? So, the final drinks break of the day, hopefully. And off we go with more runs coming in from the Multan region. Yeah, I won't be surprised if Ali Usman go on to get 100. It's that sort of a day. If you don't get 100, consider yourself unlucky, because there have been lots of hundreds. The latest one, century on debut, Saim Ayaz for Multan. The conditions have been pretty batting friendly here at Gaddafi Stadium, and that's what we say. If you don't get 100, consider yourself unlucky. Mubassir Khan, very talented, got 164 back in 2020. Mohammad Basit this year against Fada from Multan. Abdullah Shafiq, the superstar from yesterday. Salman Jr., 3 of the debutants making hundreds in this season only. So this season has been a great one for debutants. The latest one being Saim Ayaz. $673 for 6. Wow. They're not done yet. They want Ali Usman to get 100 also. Zain Abbas, Hasibullah, Sharoon Siraj, Mohammad Basit, everyone getting 100 other than Imran Rafiq. How unlucky one has to be in that list not to get 100. There's an appeal, but the umpire is not interested. The keeper in the slip corner was immediately up for it. The bowler, not so much. A rare moment in the day. Some excitement, some turn. Good area, good channel. Spin also. It's not going to get that. Junaid, it was more of an excitement rather than anything else. Yeah, he should be reprimanded for that appeal. The keeper just went off the slip cordon, just joining him because probably he was bored. It's only the bowler staring at both of them. What are they appealing about? Miles away from that bat. End of the over, 677 for 6. We've almost seen every ball for Lahore Blues. Now we see Hamad Butt. What do captain do? They're not even declaring, not getting out. It's that sort of situation. Where you bat on. There's another one. Hamad Butt making his debut. Slightly uppish, but on the bounce. He's the 8th bowler in operation from Lahore Blues. You hardly see a part-time leg spinner. I think he's a bowler, but he's not been tried.
This pace is not going to help. Even a batter who plays at number 8 can easily maneuver him. Ali Usman, he's a left-arm spinner, but a handy batter also. If Ali Usman gets to 100, and why not? He's not far away. It will be the 37th 100 this season. And Salman Butt and I have made a prediction that probably we'll reach a half a century of hundreds by the end of the final. One more round to go after this. Feels he missed out on the length. 679 for 6. Multan. Yesterday morning at the toss, I was really excited when Zain Abbas, he actually told me that they're going to go for the result. They're going to try something because they need a result. But guess what? I think he was kidding. He was joking. No, they are going for a result, and that is called a draw. In their favor. That's not going to happen. It's just so unfortunate to see such level of cricket at this, especially headquarters, where we see nothing happening, no intentions, nothing happening off the pitch. Bowlers can't do much. Smashes that one, but it's a fielder there in the deep, and then the single takes Saim to 111. Good times to bat, that's for sure. Good time to make a debut. That is why Lahore White missed out on few players. Was there an edge? Was there an edge? Seems like there was, but did not carry to slips. Kaisar Khan says no. But it spun a long way. Yeah, short in length, going deep into the crease and pulling it for a single. Yeah, very interesting conversation going on between the wicketkeeper and the bowler. Wicketkeeper suggesting that you may bowl that shorter one. Then maybe he tries to pull it and get an opportunity at deep mid-wicket. But Saim Ayaz is on 112. Remember that. It's not going to be that easy. Another single taken. Another end of the over. 168 overs bowled by Lahore Blues, 682 for 6. $175, the partnership. 10 overs to go. Today's play. I wonder if they continue playing tomorrow also. They can do it because we're not looking for a result. We're not going for the result. So better bat and bat and bat. Let Zahid Mahmood get 100. Everybody gets 100. Not surprised that Lahore Blues have not opted to go for the second new ball, which is due from 8 overs now. I don't see a point also taking the new ball. When they tried that yesterday, they went for runs.
Definitely, question needs to be asked from Multan camp about the strategy, about the planning of this game. They're making the bowlers pay. They're tiring them actually. Is that the reason? I don't know, because I can't figure it out. What may be the reason of still carrying on? Earlier we thought they might give debutant an opportunity to score 100. That has been done. Still bat on. 684 for 6. Kashif Bhatti, 51 overs, 150 runs given, 2 wickets for him. Reminds me of the spell of Ali Manzoor. Similar figures for him. But he bowled 68 overs for 255 runs. Lots of bowling. Qasim Akram, 163 runs given, 3 wickets to him. They'll take 2 easily. Two is the call. They're going to get it easily. Tired legs. Ali Shafiq took a long time to get to the ball. It slowed down considerably, keeping in mind that when I was here for my previous stint with Salman Butt, that is the time when Saim had scored his 100 with that maximum that he hit. He was at 96, he scored 102. Now he's at 114. So in the span of 40 minutes, he's just probably scored 10 or 11 runs, which is completely against what he was scoring when he was reaching his 100. It has slowed down considerably. I was thinking the way they were scoring, when we left our last stint, they should have crossed 700 by now. They were scoring at 5.08 runs in over. So just conserving some energy. Maybe the focus is on Ali Usman now. He's giving him this maximum strike so that he can also get to the 100. He'll keep the strike. 690 for 6. Into the 690s now. We were just mentioning and sharing, 20 years ago was the time when Multan region got their 600 runs, back in 2003. After 20 years, they managed to get 600 today. 610 was their previous best for 7 declared. This time around, that D is missing. There are lots of possibilities. Straight
into the V, well, this protection because the long on is very straight. Maybe they want to reach 600, then they'll think 700. Maybe they want to, of course, as you said, they want to 81 for Ali, let him get another 19. But that's really not about personal landmarks, is it? It seems like it has become one. It shouldn't be like that, but it has become like that. They're giving the opportunities to everyone as Ali slices one straight to the man. We were hoping that after getting 400 runs in the first 100 over where they get the batting bonus points, we might see a declaration and might see Multan going, at least trying to get a win. But that didn't happen. And what happened, we'd never expected that from Multan. 171 overs gone, 693 for 6. Yeah, we can see batters calling for their helmets. This might be the sign that Lahore Blues might get the new ball, which is due from 11 overs now. But what does that do? Will just increase the run scoring maybe? Maybe get a wicket? But we haven't seen that happen. Well, the scores that stand out is Imran Rafiq 14, Imran Randhawa 16. Everyone else has got 100. 118 by Zainabas, 101 for Hasibullah, 114 for Sherun Siraj. Basit also getting 100. This is another very exciting stat we have. Most centuries in an innings in a first-class cricket match. 5 by Multan in this game against Lahore Blues. Hunain Shah is back, but with the old ball. We were expecting them to get the new ball. Still carrying on with that old ball. Interestingly, 2 scores. Karachi Whites doing it against Lahore Whites, same venue, same season, 5 centuries. And there is a wicket here finally. Flashing the bat outside the off stump. Hunain deserved one. He bowled his heart out. He's bowled quick. There were a couple of drops off his bowling, but eventually the wicket has been taken. And the batter dismissed is Saim, who's taking that long walk. Dismissed for 117, poking the bat way outside the off stump. Yeah, just a lazy shot. Yeah, he deserved it. Usually we see bowlers do that after getting 5 wickets, but he's done it after getting his first wicket. It was that difficult to come. Nevertheless, a superb inning by the debutant, carrying on the form he had in the inter-district. He's got 117 runs he scored on his debut. That is a great debut to have.
Well done, young man. Way to go. Yeah, deserved that applaud from the teammates. Everyone is around you. It's a special moment when you get 100, but it's extra special when you get 100 on your debut. I wonder what the feeling must be. Would be over the moon. Was not expecting against a quality opponent, Lahore Blues, at Gaddafi Stadium. On your first game, you score 100. Nobody's going to ask you what the conditions were, what the situation was of the game. The books will say he got 100 on his debut, and that's what matters. Superb effort. As we see Zahid Mahmood, it would be interesting if he can get 100. 680 runs. Good time to increase that average. 10 at the moment. Highest of 60. Good time to improve on that also, because the game is going nowhere. Suddenly we see a change in the field, bit of pressure. 2 slips now for Hunain Shah. Solid start. You can smile about it. Yeah, that was Saim Ayaz. Just got dismissed. Very careful. Careless, casual shot. Santala this time making no mistake. Yeah, it wasn't a very good ball. That's why Sam feels that he should have just let it go. Not even try scoring over every ball. Yeah, interestingly, I remember in the last game, it was Sajid Khan, after getting the wicket off Ahmed Shahzad. He did the same celebration. Shows that how difficult it is to get your first wicket even. Even 1 wicket matters. And Hunain Shah, a couple of chances dropped on his bowling. His comeback ball, he's kept his patience, he's kept his skill. He's into his 24th over, 82 runs, just got his first wicket. Six overs to go after this one for Multan region. But all eyes from Multan side would be on Ali Usman from here on. 81 at the moment of just 129 deliveries. Should be eyeing on that 100. Tells you a story the way Zahid Mahmood is handling pace of Hunain Shah. Front foot, no problems whatsoever. 172 overs gone, 693 for 7.
After they won the toss, Lahore Blues, they've been out in the field for 2 days now. Don't know if Imran Butt would be now thinking if he could re-one and go back to that call, knowing how runs have flown freely on this ground throughout the Quaid-e-Azam trophy. There's a bit of a kick on that sharp rise, and where is he going? The keeper didn't collect the ball. Yeah, creating some excitement. That kicked on from Bakas, a touch too late, but nevertheless, for his own self, look at that. Just kicked on, right length. Imagine if there was an edge, not a clean take by Junaid. Probably this is what he's asking. What if there was an edge? He's not going to leave him. No wicket for him. I think the ball hit the seam and he got that exaggerated bounce. That's why he got excited. So we have come to that point in this game or in this inning that we start talking about what is the highest score that has been scored in Pakistan at this level. And it was 951 for 7 declared. Sindh scored it against Balochistan at National Stadium, Karachi, 1973-74 season. So we're coming down to that point that we start discussing about this milestone now. We've been talking about the centuries, just 19 runs away. That will be the 6th century of the inning. That will be definitely our record. That will be broken if Ali Usman gets to that 18 runs. Yes. Farhan Nisar just told me that it was in 1945 that 6 centuries were scored, Farhan. Thank you. It's a great start to have. It's a good, safe way of giving anything to the public. You give the name and then give the stat. Or you could just tell us, you know, Abdul Quddus told me yesterday at dinner that this is what happened 19 years ago. Just name the person so that tomorrow nobody can ask you. Of course. Second step would be announce his number also with his name. No, I definitely trust Farhan Nisar with his stats because he's been a keen follower of Pakistan domestic cricket. I'm not really sure if he trusts you. He doesn't have to. My thing is on stake. My work is on stake, not his. So, but nevertheless, I still trust him with his stats. He's a good person to have right next to you. And he tells me in 1945, 46, 6 centuries were scored in one inning. In India, Indore. Long time ago that was. Yeah, that can be a lie. He says he was there. That kept low. 173 overs gone. 694 for 7.
694 पे 7 मुल्तान रीजन गिव अप करने को बिल्कुल तैयार नहीं। अली उस्मान मेरा ख्याल है अपनी सेंचुरी तो बनाएंगे। मुल्तान इस रिकॉर्ड के पीछे भी है जो एक इनिंग्स में अच्छी ड्राइव लेकिन गैप हासिल करने में नाकाम रहे। 5 सेंचुरियां बनी है एक इनिंग्स में, मोस्ट सेंचुरीज इन एन इनिंग्स की बात कर रहे हैं। और मुल्तान जो है वो इस ताक में है कि ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ले ताकि इस इनिंग्स में 6 सेंचुरीज बन जाएं और मुल्तान इस रिकॉर्ड को अपनाने में कामयाब हो। ये वो स्टार्ट है। एक बार फिर रश शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इस सीज़न में कराची वाइट्स और मुल्तान वो वाहिद टीम्स हैं जिन्होंने 5-5 सेंचुरियाँ बनाई। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी जारहाना बैटिंग देखने को मिली है। अली उस्मान तेज़ी में है कि अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। 3 रन बन सकते थे लेकिन 2 पे ही इत्तेफाक करेंगे। विथ दी फ़ायदा ज़रूर उठाया लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए 4 रन हासिल करने में नाकाम हुए। हुनैन शाह की पेस अच्छी है, बहुत लेट खेला था इसलिए कवर्स की जानब खेल नहीं पाए। पहली विकेट ज़रूर हासिल की हुनैन शाह ने। कल 2 कैचेस छूटे थे इनकी बॉलिंग पे। इमरान भट्ट और हुसैन तलत वो फील्डर्स थे जिन्होंने ड्रॉप किए कैचेस। लेकिन एक्सप्रेस पेस की बात करें तो यही स्टैंड आउट बॉलर हैं लाहौर ब्लूज़ के पास। स्पिनर्स ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। काशिफ भट्टी और कासिम अकरम ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। तोसले पे गली के साथ बॉलिंग कर रहे हैं जायद महमूद को, लेकिन बिल्कुल भी किसी मुश्किल का शिकार नहीं लगते। बआसानी हैंडल कर रहे हैं हुनैन शाह की पेस को। कुछ गुफ्तगू ज़रूर चल रही है हुसैन तलत और जायद महमूद के दरमियान। अपील क्रॉस चले गए थे जायद महमूद इस मरतबा। फुलर लेंथ थी जिसका फायदा नहीं उठा सके, बैलेंस आउट हुआ और हुनैन शाह आखिरकार 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। बगैर किसी रन बनाए जायद महमूद को पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा। बिल्कुल क्रॉस खेल गए थे अगला पांव, उसके बाद बहुत फाइन खेलना चाह रहे थे, लेट हो गए और ट्रैप कर लिया। अच्छी बॉल पे हुनैन शाह ने। खुशी ज़रूर होगी 2 विकेट हासिल करने में कामयाब जायद महमूद बगैर कोई स्कोर किए पवेलियन वापस। 697 पे 8 मुल्तान रीजन। मुकाबला जारी है, बॉलिंग और बैटिंग का आपस में नहीं, मुल्तान रीजन और कराची वाइट्स का।
कि एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज कौन बटोरता है। सेंचुरीज की बारिश हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है मुल्तान रीजन का डिक्लेयर करने के लिए। ताहिर हुसैन नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, हुनैन शाह का सामना करेंगे। अच्छी बॉलिंग करते आए हुनैन शाह कल भी, लेकिन आज सिला मिल रहा है उनको। जी कुछ सुख का सांस लिया होगा हुनैन ने, और 2 विकेट्स लिए हैं, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। अब चाहेंगे कि ये तीसरी विकेट भी हासिल करें और मज़ीद अपने जो बॉलिंग फिगर्स हैं उनको बेहतर कर सकें। 2 स्लिप्स, 1 गली, राउंड द स्टंप्स आएंगे। अच्छी लेंथ पे तेज गेंद किया अब फ्रंट नए बल्लेबाज को। हुनैन शाह थोड़ा सा रीअसेस कर रहे हैं लाइन और लेंथ। शायद महमूद बगैर कोई स्कोर किए आउट हुए। फुल लेंथ थी, बहुत क्रॉस चले गए थे, प्रोबेबली क्लिप कर रहा था लेग स्टंप को। ये रिकॉर्ड जरूर होगा शायद, 0 पे आउट होना इतनी ज़्यादा सेंचुरीज के बाद। जी हाँ, जब आप देखते हैं कि इतने रन्स बन रहे हैं और हर बल्लेबाज आकर 50 और 100 और फिर 200 कर रहा है, यकीनी तौर पर जब आप 0 पर आउट होंगे तो फिर ऐसे सवालात तो उठेंगे। क्रिकेट तो नहीं हो रही, जानदार क्रिकेट कही है, लेकिन यहाँ पर कैमरामैन खूब एंजॉय कर रहे हैं। चिड़िया का लाहौर ब्लूज से कुछ मिलता जुलता हाल है। ये विकेट ढूंढ रहे हो, वो शायद कुछ खाने को। अच्छी बॉल थी, 2 रन की ताक में बासानी बनाने में कामयाब हो जाएंगे अली उस्मान और ताहिर हुसैन। गेंद थोड़ी सी अंदर आई, लग रहा है कि शायद रिवर्स स्विंग की कोशिश करना चाह रहे हैं बकास। कल जब चाय के वक्फे के बाद मैं और आप यहाँ पर कमेंट्री में थे तो हम इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि मुल्तान की प्लानिंग क्या होगी, क्या कल वो लंच तक 550 रन या 600 रन करने के बाद इनिंग्स डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आज फिर वही वक्त, हमारी जो डिस्कशन है वो फिर भी बहुत अच्छी गेंद थी इस दफ़ा, स्लो डिलीवरी। हमारी डिस्कशन अभी भी वही है कि मुल्तान के प्लान्स क्या हैं। मेरे पास कमेंट्री में प्लान्स खत्म हो गए हैं ये बात डिस्कस करने के लिए। इस दफ़ा स्लो डिलीवरी की बिल्कुल। अब दूसरा, ये बॉल स्टंप्स को लगा है क्या? यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टंप्स को लगा और वो अनलकी रहे कि बेल्स नीचे नहीं गिरी। स्टंप्स भी नहीं हिलना चाह रही। $700 रन मुकम्मल मुल्तान रीजन के और 701 कर लें, लेकिन बैटिंग अभी जारी है, कहीं मत जाएं। स्क्रीन के सामने आपके पास मास्टर क्लास हमें बल्लेबाजों से नजर आ रही है करते हुए। इस सीजन में दूसरी बार 700 रन बनाए गए हैं गजाफी स्टेडियम में, और ओवरऑल अगर बात करें तो 4 दफ़ा ये हिंसा पार किया है टीम्स ने। नवासी पे अली उस्मान मौजूद, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन लेंथ वो बना नहीं पाए जिसकी ताक में थे। प्रोटेक्शन है लेग साइड पे, पुल करना चाह रहे थे लेकिन फील्डर मौजूद हैं, शायद बाउंड्री ना हासिल कर पाए। तेज़ी में लग रहे हैं और मेरा ख्याल है इरादा भी मुल्तान का यही है कि जैसी इनकी सेंचुरी मुकम्मल हो हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिक्लेयर कर देंगे।
इतनी भी क्या जल्दी है मरीना? बिल्कुल जल्दी नहीं है, 2 दिन गुजार दिए। लाहौर ब्लूज को भी मौका देना चाहिए बैटिंग का। फुल टॉसेस अक्सर नजर आए हैं, यॉर्कर की तलाश में होते हैं लेकिन उसको अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते वकास अहमद, या फिर ये एक डिपिंग फुल टॉस करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है इन्हें कि कल भी अगर बात करें 3 से 4 फुल टॉसेस इन्होंने करवाई, इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। जी, कल भी आखिरी सेशन में जब इनको गेंद थमाई गई थी, तो ये क्योंकि विकेट हासिल करने के लिए डेस्परेट हैं, तो फिर उसके लिए यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी हरबे हैं उनसे विकेट नहीं मिल पा रही। लेकिन मसला ये है कि इनका जो यॉर्कर है उसकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं है, और वो फुल टॉस बन जाती है, बल्लेबाज किसी न किसी तरीके से उसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। और खिंचा हुआ गेंद गाइड कर दिया है, थर्ड के एरिया में, बाउंड्री पे नहीं पहुंच पाएगा और रन लेना भी नहीं चाह रहे। अली उस्मान को स्ट्राइक देना चाह रहे हैं जो कि 90 पे मौजूद हैं। 702 पे 8 मुल्तान रीजन। अक्टूबर 2023 की एक और शाम जो है उसकी आमद है, और एक और सूरज गुरूब होने वाला है, लेकिन कदाफी स्टेडियम में बल्लेबाजों की हुक्मरानी का राज है। अक्टूबर की एक और शाम रन्स के नाम। अमूमन ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में ये मनाजिर देखे जाते हैं जब वहाँ पर मैचेस होते हैं। सिडनी के ये कबूतर वहाँ पर आपको मिलते हैं। शुक्र है आपने जल्दी कबूतर। ऑस्ट्रेलिया में तो विकेट्स की तादाद के ऊपर भी बात होती है, सिर्फ रन्स की बात नहीं होती मरीना। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हुनैन शाह 2 विकेटें हासिल की हैं, थोड़ा एतमाद ज़रूर आया होगा। कल भी अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन बदकिस्मत रहे। ज़ैन अब्बास ने उन 2 मौक़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाया। रन्स की बात कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया। 2 बार ऐसा हुआ है कि 1000 से ऊपर रन्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इंटरनेशनल में नहीं। यही अर्ज कर रहा था कि वहाँ पर रन्स भी बनते हैं, विकेट्स भी मिलती हैं, बॉलर्स भी इंजॉय करते हैं, बल्लेबाज भी इंजॉय करते हैं। और जिस तरह आपने बताया मरीना कि ये फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री, जब से क्रिकेट की अगर आप बात करें, तारीख के औराक पलटें, तो ये जो दो इनिंग्स हैं हजार रन से, ये फर्स्ट क्लास में, ये ऑस्ट्रेलिया में ही खेली गई हैं। बहुत बाहर गेंद था। ये एक और रिकॉर्ड हो सकता है जो मुल्तान रीजन जा सकता है तोड़ने के लिए। जी हाँ, अगर अली उस्मान भी 150 की ताक में रहे हैं और नए आने वाले बल्लेबाज ताहिर भी। लेकिन ये खुशाइन नहीं है कि यहाँ पर जितने भी मैचेस खेले गए उसका रिजल्ट ना आना, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और यकीनी तौर पर जो बाकी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर प्लेयर्स खेल कर आते हैं, जिस तरह मुल्तान की टीम ने यहाँ पर ट्रैवल किया है और लाहौर वाइट्स की टीम यहाँ से दूसरे ग्राउंड्स में गई है, तो फिर आपका अंदाज भी बदल जाता है। और जब सपोर्टिंग पिचेस मिलती हैं तो फिर आपकी सोच भी मस्बत हो जाती है, आप मनफी सोच से बाहर निकलते हैं।
लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हालात जैसे भी हों, आप अपना 100% दीजिए, मस्बत अप्रोच के साथ आइए, अटैकिंग अप्रोच के साथ आइए। और बॉलर्स को ये पैगाम दें कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं। थोड़ा पिच जरूर गया और ये 4 रन के लिए चला जाएगा गैप में। बहुत विड्थ दे दी थी उन्हें अंशा ने और जितनी उनकी पेस है उस पर सिर्फ बल्ला कनेक्ट करने की जरूरत थी, जो कि अली उस्मान ने किया 6 रन की दूरी पे अपनी सेंचुरी से। हुनैन आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और इसको बड़ा स्वीटली टाइम किया और ये 4 रन हासिल कर लिए। तो कि फील्डर मौजूद थे डीप पॉइंट पर, लेकिन उनके पास भी कोई मौका नहीं। तमाम तर जो यहाँ पर हरबे आजमाए गए बॉलर्स की जानिब से, बल्लेबाजों ने उनका खूब जवाब दिया। 94 पे अली उस्मान मौजूद हैं। प्रोटेक्शन ली हुई है इन्होंने, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद जरूर कर रहे हैं। स्लिप है, गली है, डीप पॉइंट है और डीप कवर मौजूद है, लेकिन फिर भी गैप हासिल करने में कामयाब हो गए थे। एक बार फिर काफी बाहर गेंद था और एक बार फिर वही नतीजा मिलेगा। इस बार फील्डर के बाएं जानिब खेला था 4 रन के लिए, सिर्फ 2 रन की दूरी पे अली उस्मान 710 पे 8। ये मिलती जुलती लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत ही आसानी से एक दफा फिर इसको स्टीयर किया थर्ड मैन की जानिब और ये 4 रन मजीद मिल गए। 710 8 विकेट के नुकसान पर। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या अली उस्मान की सेंचुरी के बाद मुल्तान डिक्लेयर करेगा या नहीं, या फिर ये लाहौर ब्लू को दावत देंगे कि ऑल आउट करें और मौका हासिल करें बैटिंग का। अच्छा सिंगल, स्ट्राइक लेना चाह रहे थे अली उस्मान और अच्छा बैक किया ताहिर ने। अच्छी लेंथ जरूर थी वकास की, लेकिन उसको टैकल करने में कामयाब रहे। अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि फील्डर्स की सुस्ती या थकावट आप कह लीजिए, आज दूसरा दिन है, आखिरी सेशन है, बल्कि आखिरी घंटे का खेल जारी है, तो इसका फ़ायदा उठाया है थ्रू आउट द डे। आज पूरा दिन हमने देखा फील्डर्स जहाँ भी थोड़ा सा फंबल किया, थोड़ा सा सुस्त आए। इससे पहले बासित और शरून की जब पार्टनरशिप थी उसमें भी ये चीज़ काबिल ज़िक्र थी। और एक फील्डर शॉर्ट कवर पर प्लेस किया, कैचिंग पोजीशन। अच्छी ड्राइव, लेकिन सीधा उसी फील्डर के पास। बॉडी लैंग्वेज पे लाहौर ब्लूज के तकरीबन सुबह से ही सवालिया निशान रहा है, ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र नहीं आए और इसमें कप्तान भी शामिल है। ज़्यादा कोई टेक्टिकल डिसीजंस हमें देखने को नहीं मिले। वेटिंग गेम चलती रही मुल्तान रीजन के बल्लेबाजों के साथ। क्या मुल्तान इस अप्रोच के साथ आएगा कि इमरान भट्ट और उनकी टीम को वो 2 दफ़ा आउट कर लें अगले 2 दिनों में? क्या उनके ये अप्रोच है? इंतज़ार करना पड़ेगा अली उस्मान को इन 2 कीमती रन्स के लिए। जिस तरह की बैटिंग यहाँ हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान रीजन भी किसी नतीजे की ताक में है। कुछ ऐसे बॉलर्स की भी कमी है जो पेनिट्रेट कर सकते हैं लाहौर ब्लूज के बल्लेबाजों को, और उनको जल्दी बिल्कुल नहीं होगी, वो अपना टाइम लेके खेलेंगे। सिंगल चोरी किया,
99 पे पहुंच गए हैं, इंतजार अभी बाकी है। सिराजुद्दीन बायर हैं, आमिर यामीन बायर हैं, वो दो ऐसे बॉलर्स हैं जो अप फ्रंट ब्रेक थ्रूज दे सकते थे मुल्तान को। और हमने पिछले मैच में भी देखा जब मुल्तान यहाँ खेला है, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आमिर यामीन ने अच्छा साथ दिया था, स्विंग मिल रहा था उन्हें। और वो दोनों बाहर हैं, अब किस तरह इस अटैक को लेके चलेंगे जैन अब्बास, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जैन थोड़े से प्रोएक्टिव ज़रूर हैं जब टैक्टिकल डिसीजंस की बात आती है, स्पेशली फील्ड प्लेसमेंट्स की और बॉलिंग प्लान्स की। एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश ज़रूर थी। ये एक डिसीविंग बॉल भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, बल्लेबाज फुल टॉस देख के शॉट और बड़ी शॉट मारने जाते हैं और अक्सर अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। तो ये एक डिसीविंग बॉल हो सकती है वकास अहमद की। ज़रूर डिसीविंग हो सकती है अगर यही यॉर्कर अब वो स्लो कर दें, क्योंकि जितने भी हमने उनके देखे वो फुल टॉस बन गए। स्लो करने की कोशिश करें, थोड़ी सी वेरिएशन ले आएं, सोच में तब्दीली लाएं, शायद ये उनके लिए कारगर साबित हो जाए। लासित मिलिंगा को हमने काफ़ी देखा, उनका एक तो स्लिंगी एक्शन था, पेस अच्छी थी, लेकिन जिस तरह का वो स्लोअर वन कराते थे और टिपिंग यॉर्कर कराते थे, स्लो फुल टॉस भी कराते थे, वो बहुत ज़्यादा डिसीविंग था, बिल्कुल भी नहीं पिक कर पाते थे बल्लेबाज अक्सर, स्पेशली राउंड द स्टंप्स आके। स्ट्राइक रहेगी अली उस्मान के पास, जो कि 99 पे मौजूद हैं, 712 पे 8 मुल्तान रीजन। दूसरे दिन के खेल के आखिरी ओवर की तरफ हम अब गामजन हैं। एक रन की दूरी पे हैं अली उस्मान, जिनकी मेडन सेंचुरी होगी। 3 ऑलरेडी मुल्तान रीजन से, बल्कि ये तीसरी होगी, 2 ऑलरेडी बना चुके हैं। शेरून सिराज की मेडन थी, साइम अयाज 117 करके आउट हुए, उनकी भी पहली सेंचुरी थी फर्स्ट क्लास की। और अब इस लिस्ट में शामिल होंगे अली उस्मान। डग आउट बहुत पुरसकून है। अली उस्मान ने फैसला किया है कि वो अब हेलमेट उतार कर अपनी सेंचुरी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इमरान भट्ट ने एक बार फिर रुख किया काशिफ भट्टी का, शायद आखिरी ओवर में वो कुछ कर पाए, कोई मौजा। कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इंतजार अभी बाकी है। कासिम अकरम काफ़ी एथलेटिक हैं, अच्छे फील्डर हैं, और ये नोटिसेबल एफर्ट नज़र आती रही है बार बार इनकी जानिब से। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, उठा के खेल दिया है, फील्डर ने मिस जज किया और ये 4 रन के लिए चला जाएगा। और इसी के साथ अली उस्मान ने अपनी फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल की, पहली सेंचुरी, और ये इस हक बिल्कुल इस दाद के हकदार हैं। बहुत ही शानदार इनिंग्स, मौका मिला था जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया इन्होंने। बिल्कुल भी बॉलर्स को किसी भी परेशानी का सामना नहीं हुआ इन्हें किसी भी बॉलर के खिलाफ। जी, अली उस्मान भी पीछे नहीं रहे, तमाम पिछले बल्लेबाजों की तरह
इन्होंने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 9 चौके 1 छक्का लगाया, 151 गेंदों का सामना किया है। दाद तो बनती है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि आसिफ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि एक इनिंग्स में 3 मेडन सेंचुरीज हुई हैं। और ये कदाफी स्टेडियम में कदमों का इस्तेमाल किया था, तो कदाफी स्टेडियम में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जहां पर हमने अली उस्मान और इससे पहले शरून सिराज और साइम अयाज ने यहां पर सेंचुरी स्कोर की। करेक्शन इसमें करेंगे, 6 सेंचुरीज एक इनिंग्स में बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेड इन सेंचुरीज का नहीं। मुल्तान रीजन ने अपने नाम की है, इससे पहले 5। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल और शानदार कनेक्शन था इस बार, लेकिन चौका नहीं हो पाएगा। कदमों का इस्तेमाल यहाँ भी नजर आया हुनैन शाह की जानिब से। और आज यहाँ से आज के दिन का खेल ख़त्म हुआ। आज भी बल्लेबाज जो है वो हावी रहे, छाए रहे, और इमरान बट और उनकी कंपनी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। अली उस्मान जो कि नॉट आउट हैं 105 पर, अपनी पहली सेंचुरी फर्स्ट क्लास करियर की बनाई। यकीनी तौर पर उनके लिए भी एक बड़ा दिन। 718 रन मुल्तान रीजन के 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे ख़त्म करेंगे आज का दिन। ये दूसरा दिन का खेल था। अली उस्मान पहली मेडन सेंचुरी के साथ एक बार फिर ये चीज़ तय हुई है कि जिस भी बल्लेबाज को मौका मिला है उन्होंने बड़ा स्कोर पोस्ट किया है। दाद वसूल कर रहे हैं। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इमरान बट को और लाहौर ब्लूज़ के थिंक टैंक्स को कि किस तरह करेंगे। मुल्तान रीजन अभी भी डिक्लेयर नहीं किया, तो आगे कल के दिन भी इनकी कोशिश होगी कि बैटिंग जारी रखें। इमरान बट काफ़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग नज़र आई। मॉर्निंग में 2 विकेटें हासिल की, इवनिंग में भी 2 और 1 आफ्टरनून में, और इवनिंग के सेशन में 4.8 3 की औसत से स्कोर हुआ। ये अक्सी करता है कि यहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान है। हुनैन शाह आज 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं कल भी और आज भी, लेकिन अभी भी लाहौर के लिए बहुत तवील सफ़र है। ये बैटिंग कार्ड हरा भरा है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सिर्फ और सिर्फ सेंचुरीज नजर आएंगी, चाहे वो जैन अब्बास हों या फिर अली उस्मान। सिर्फ 2 बल्लेबाज इमरान रफीक और इमरान रंधावा कुछ ना कर पाए, बाकी तमाम बल्लेबाजों ने सिर्फ सेंचुरीज की। इमरान बट ने हर हरबा इस्तेमाल किया, काफ़ी बॉलर्स को बॉलिंग कराई, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। कासिम अकरम 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, उन्होंने अच्छी नफी तुली बॉलिंग की। हुनैन शाह ने 2 काशिफ भट्टी की और 1 अली शफीक ने हासिल की। लेकिन अगर इकॉनमी चेक की जाए तो बल्लेबाज जो हैं वो डोमिनेट करते हुए नजर आए। जी, और आखिरी सेशन में कुछ इस तरह खेल हुआ। आगाज किया अच्छा, पुरएतमाद आगाज बल्लेबाजों की जानिब से, एक्स्ट्रा कवर की जानिब चौका हासिल किया। कवर्स में अच्छे खेलते हुए नजर आए बल्लेबाज, और कुछ शॉट्स, ये जो पुल शॉट था ये शॉट ऑफ द डे मेरे लिए। साइम का ये शॉट था जिससे उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और इनकी भी मेडन सेंचुरी थी। भरपूर फ़ायदा उठाया, बॉलर्स को आड़े हाथों लिया और रन्स बटोरने का खेल जारी रहा मुल्तान रीजन की जानिब से। ये वो विकेट है, बहुत ज़्यादा चेस करने चले गए थे। हुनैन शाह की अपनी विकेट गंवा बैठे, और ये जायद महमूद वाहिद बल्लेबाज जो 0 पे आउट हुए, LBW हुए, और ये अक्सी करता है कि कितना मुश्किल है यहाँ विकेट हासिल करना।
अली उस्मान अपनी सेंचुरी के ताक में रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप काफ़ी विड्थ मिली, इसका फ़ायदा उठाया और इस शॉट के साथ इन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। मेड इन सेंचुरी इनके लिए भी बड़ा मौका, बड़ा स्टेज, और ये स्टंप्स इसके साथ ही मोस्ट सेंचुरीज एक इनिंग्स में, ये रिकॉर्ड मुल्तान के नाम हुआ। 6 सेंचुरियां बनी एक इनिंग्स में लाहौर ब्लूज के खिलाफ इस सीजन में, दूसरी मरतबा कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और आज काफ़ी सेंचुरीज हमें नज़र आई और एक शानदार सेंचुरी जो मेडन सेंचुरी रही शरून सिराज की, वो बात करेंगे अली यूनिस से। दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हुआ और आज इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब के लिए शबा खैर।